What's up, guys? Sorry, I'm late, brothers. I'm very sorry, I'm late. माफ कर दीजिए. माफ कर दीजिए, babies. I'm late. I'm very sorry. Hello. क्या हुआ ऑडियो? आ तो रही है ऑडियो. ऑडियो आ रही है, सब सही है. बेबीज कम है. हेलो. कम आ रही है क्या? जैसे पहले WWE में पुकारते थे ना, ऐसा लग रहा है. वैसा पुकार रहा है. 399 pounds. Again. Undertaker. ओ स्मोक भी धुआं भी ऐसा है यार. बट ये मस्कुलर नहीं है, दिमाग से मस्कुलर है. Goldberg. Gold. बहुत मस्त. पता नहीं यार, मजा आएगा ये मैच देखने में, ऐसा लग रहा है मेरे को. क्रेजी मैच होने वाला है. क्रेजी. यार ये फाइनल होना चाहिए था बे. तुम लोग को नहीं लगता ये फाइनल होना चाहिए था यार? गेम अभी ज्यादा लाउड है क्या? कम कर रहा है. ओ भाई क्या बात है बे. गूज़बम्प्स भाई, गूज़बम्प्स. गूज़बम्प्स. फाइनल से इससे भी तगड़ा होगा. पता नहीं, मैं ये मैच फाइनल होना चाहिए था यार. गूज़बम्प्स बे, गूज़बम्प्स. ओ फक. Did you watch the teaser, bro? I went out for Diwali shopping. I just came back and I couldn't watch it, yaar. Goosebumps, boy. टीजर देख लेगा जब तक मैच चालू नहीं होता. टीजर देख लूं क्या? टीजर यार, टीजर कैसे मिस करे? रुको टीजर देख लेते हैं. ओ ये वाला ट्रैक यूज किया है. Et tout comme il le dit, nous sommes nombreux aujourd'hui à travailler sur le marbre. Sacrifier tout sur son chemin pour réaliser son rêve. Le voyage n'est pas pour les gars. Is anyone going to join? They are on Discord, but I just want to take some time to just enjoy this. Oh my, crazy वे. क्या hype है आज के मैच का. En 2019, Chovy affronte Faker en BO5 pour la toute première fois. Oh, for the first time. 페이커 선수에 대한 첫인상은 일단 기본기도 되게 좋았는데 계속 끊임없이 심리전을 거는 게 인상적이었어요. Mais ne parvient pas à le vaincre. 계속 뭐가 문제였을까 생각하게 되더라고요. 내가 못해서 졌다기보단 상대가 잘하는 게 많았고, 그래서 이기려면 그 잘하는 상대보다 더 잘해야 한다고 생각을 했던 것 같아요. यार कितना अच्छा एटीट्यूड है ये. 페이커 선수를 이겨야만 कितना 최고가 अच्छा 더 एटीट्यूड है 잘해서 ये. 주어진다고 생각을 합니다. मैं आ रहा क्योंकि मैं खराब नहीं खेला, सामने वाला 이 선수가 बेटर था. 굉장히 뛰어난 मेरे को 선수이기 बेटर 때문에 मस्त एटीट्यूड है. 붙는 게 굉장히 저에게 있어서 재밌고 스스로도 많이 배우고 성장할 수 있는 것 같습니다. En 2022,
cheville a enfin pris le dessus. 제가 처음 우승했을 때가 2년 전이었는데요. 했던 말이 말도 안 돼라고 하고 우승을 했던 걸로 기억하는데 그만큼 마음의 짐이 많이 덜어진 것 같아요. Gen.G continua de gagner à domicile. Ils étaient imparables. 처음 우승했을 때 그때 당시 목표가 리그 우승을 해보는 거였는데 데뷔 첫 시즌 만에 이룰 수 있게 돼서 너무 좋았던 것 같아요. 2022 मैं बस फेकर की एंट्री के लिए रुका हूँ भाई। et 2023. कुछ तो भयानक सेक्सी एंट्री होगी ना फेकर की शायद। फेकर अभी तक बोला नहीं ना कुछ, Quand cela comptait. या बोल दिया? नहीं बोला नहीं है ना शायद अभी तक कुछ। फेकर की अलग से होगी शायद। 이제 첫 우승을 이제 T1 상대로 우승을 해가지고 감정이 북받쳤던 것 같습니다. 결승에서 많이 진 후에는 저희가 많이 부족한가라는 बोल दिया हो? 생각도 कब बोला? 들게 फेकर 되었던 कब बोला? 것 같아요. 실망도 많이 हट 했어요. गांडू, फेकर कब बोला? चालू ही 24 में हुआ। 여기는 LCK가 아니고 월즈. नहीं बोला भाई फेकर अभी तक। 월즈는 T1에게 적합한 무대라고 생각합니다. 챔피언으로 참가했고 भाई बट फेकर को दिखाएंगे ना अलग से, ऐसे कैसे छोड़ देंगे यार? कुछ होगा ना उसका, एक सेक्सी अभी शॉट होगा ना, पता नहीं आया देखो। Victoire pour Faker. 52 victoires. ओ 53 to 52। Mais malgré toutes ces victoires, un sentiment d'inachevé persiste au fond de son cœur. Le rêve d'être champion du monde. Imposant. Et le fardeau. Pour l'un, le fardeau de हाँ, rester. ऑब्वियसली ऐसे कैसे भाई अपने गॉड ऑफ द गॉडेस को कैसे अलग छोड़ेंगे? Pour l'autre, आया ना, एंड में आया भाई। इसको बोलने अभी गरज नहीं है वैसे तो कुछ। le fardeau खड़ा हो जा d'atteindre बस। le sommet. Gen.G was pushed to the limit. They were pushed to the edge, but they were built for these situations. They were built for victory. They were built to win, and they will do just that. 페이커 선수 इसके आंखों में ही लिखा है घर जा लौड़े। वो बोल रहे चोवी को, आंखों में ही लिखा है चल 초비 선수 घर जे चल। 미래를 원한다면 अरे वो क्यूट वाले का नाम क्या है? जस्ट आस्किंग। फेकर। 증명하세요. क्या बात है, कपड़े उतार दिए दोनों ने। 무거운 왕관의 목에 함께 짊어지겠습니다. दिखेगा नहीं तुम लोगों को DSLR फिर भी मेरे बाल खड़े हो गए हाथ के। 새로운 세대입니다. T1은 과거, 현재, 그리고 미래입니다. Crazy baby! God, This is an incredible Let's go. अरे Gragas, picks भी हो गए। player just in general, so it's not likely to go to fake. Gragas? Yeah, there was that random 3 weeks where everyone in the LCK was yeah. pranked into thinking Gragas Hey. mid was good Because Faker was played it just once. winning on Faker? it. It wasn't. Faker unit? It was all a psych out. This used to be a really good matchup for specifically tank Gragas. Bro, With everyone Ross, only back one when way his to play. sustain was a lot Yeah. better, you could just completely Wait, stonewall Faker? the connect, and हाँ, you never Faker really unit was able lost to get goal. shoved. I do imagine though, looking at the damage profile for T1, this is going to be the full AP variety, so maybe a little bit more carry or shutdown fuck. potential early on मजा आएगा भाई। for Gen.G, but सुनो, they are कैमरा really ना heavy on the AP. मिड लेन That's पे something रखो, that I मिड do लेन से think हटाओ we मत have seen कैमरा। B
बाकी चार लोग क्या करते अपने को क्या करने गए मतलब क्या करने गए पॉइंट है साइलस वर्सेस योने दिखा दो मिड पे साइलस और योने दिखा दो मिड पे बाकी लोग को बाद में देखेंगे ग्रुप गेम में हो आप पता नहीं देखते यार ये 5 गेम चल गया तो नहीं होगा ना ग्रुप गेम्स When you have this strong skirmish heavy top side in Renekton, Skarner, Silas, you're going to be looking to fight around Herald, fight for those early dragons. You want to draw T1 into those early skirmishes before they have that opportunity to scale. Let's and I think fucking that it's going to be go. crucial for Gen.G to kind of force T1 into their game. Let's fucking go. Yone is going to Faker. Faker, not one of our top भाई players. फेकर का योने देखा नहीं मैंने कभी तुम लोग ने देखा है क्या मैं कभी देखा नहीं अच्छा है क्या कभी देखा नहीं है मैंने 3-0 T1 I don't think 3-0 होगा यार 3-0 तो मुश्किल लग रहा है And Faker has found success and had Bhai, you will hate me for this, but I'm supporting Gen.G. I don't hate you. You can support Gen.G. It's okay. मेरा भी एक सेकंड मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं भाई कि मैं मेरे को चाहिए SKT जीते ऐसा कुछ मतलब मेरे को बस चाहिए कि मजा है देखने को यार मैच मेरे को वो चाहिए बस पता नहीं मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरे दिमाग में कि इसको सपोर्ट मुझे मजा है बस गेम में हाय क्रेजी बेबी Oh man, already just a little bit of a defensive start. Not going to have I those think it'll be 3-2 SKT. yesterday. Atmosphere is absolutely I think it'll be 3-2 मेरे को नहीं लगता कोई भी स्टॉम्प होने वाला है ये गेम में मेरे को लगता है बहुत बैक एंड फोर्थ होएगा पूरा गेम सारे गेम्स ऐसा अगर इंडिया में कब हो पाएगा बीजेएमआई से लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते यार चलो बीजेएमआई ने उतना काम भी तो किया है इंडिया में अभी राइट गेम्स भी कर रहा है लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए अभी चालू किया 2-3 महीने ही हुए धीरे-धीरे बनेगा क्रेज ओवरनाइट नहीं आता क्रेज All right, so I was saying that there might not be a swap, but there is. It is immediately आएगा बट टेंशन ना लो आएगा to his blue side quadrant, so should be गाइस और मेरे पास आज एक बहुत खुशखबरी की खबर है मतलब ब्रो जब मैंने देखा ना मजाक नहीं कर अभी बोलते बोलते मेरे आंखों से आंसू मतलब फॉर्म हो रहे मेरे आंखों में बहुत खुशखबरी की खबर है हुआ नहीं है होने वाला है मेरे को दिखा आज होने वाला है फाइनली दोस्तों After 33 years of my existence, I am so happy today. क्योंकि मेरे घर से हमारे बूट कैंप से 20 मिनट्स दूर एक सेकंड मैं इमोशनल हो रहा हूँ बोलते बोलते भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ पता है 20 मिनट्स दूर नाइन डोज खुल रहा है इतनी खुशी हुई आज मेरे को कसम मुंबई में वो भी मेरे बूट कैंप से 20 मिनट दूर 9 डोज खुल रहा है छी पागल भाई तुम लोग फिर 9 डोज में खाए ही नहीं हो यार तुमको तुम साले दिल्ली वालों तुम क्या समझो हम मुंबई वालों का और 9 डोज का प्यार सीवुड्स में मोक्षित भाई यस सीवुड्स में 9 डोज खुल रहा है भाई मेरे को इतनी खुशी हुई है ना मैं क्या बताऊं फ्लैश अरे डाइव कर रहे फिर भी क्रैश भी मजा आ गया कोई भी नहीं मरा मजा आ गया बट देख के एनीवे जो मैं बोल रहा था ग्रुप 20 मिनट दूर 9 डोज कैन यू इमेजिन and Gen.G are forced to retreat. Like I'm so happy today. And Gen.G 20 मिनट्स अब ऐसा भी नहीं कि मुंबई में खुल रहा है कि कभी ऐसा वीकेंड पे प्लान करके हमको जाना पड़ेगा नैंडोस खाने नहीं 20 मिनट दूर में 20 मिनट दूर भाई दिल्ली में वही तो तुम नहीं समझोगे ना दिल्ली वाले सालो हम मुंबई वाले क्या तड़पे हैं नैंडोस के लिए हमारा दुख हमको पता है सिर्फ हमको पता है नैंडोस का दुख NTP from multiple summoners from Gen.G. There were so many instances there where it was very awkward for Zeus because he was one minion on leveling up, but the cannon minion had aggro.
Hang on a minute of play. Yeah, Lahan's Hex flashing in. Not going to find that Zenith blade either. Good handshake from Carrier and Keen taking so तो इसमें much मेरा क्या फायदा है? damage. कुछ फायदा नहीं है यार, मेरा फायदा है, मेरे लिए खुश खबरी थी. Gen.G is going to find some tempo back in this game. I can't imagine if that would have been the final. Bro, मतलब this is kind of a finals only. I'm just glad कि semis में at least एक ऐसा one side match अपने को देखने मिल रहा है. मतलब Bilibili versus Vivo was very one sided, even though not one sided actually. Vivo played well, but like ये ऐसा सेमीज वाले लेवल का मैच लग रहा है ना, इससे ये बोल रहा हूँ. साइलस ई बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि अगर वो ई किसी में मारेगा तो वो उसके पास जाएगा, तो वो पास नहीं जाना तो उसको सिर्फ पैसिव मान, राइट? ऐसा कुछ. एक बात तो है सिर्फ भाई, सिंस ऑर्डर वाचिंग, इसमें मैंने कोई बचता नहीं स्टेज पे, लाइक वालो भी जान देंगे तो बिना जस्ट स्लीप साइलेंट. यार देखो, बजना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बजना चाहिए. ट्रैश टॉकिंग मेरे हिसाब से बहुत इंटीग्रल पार्ट है गेम का. एनए और ईयू सीन में आप लोगों को दिखेगा कि लोग बचते वगैरह है. फर्क ये है कि वर्क कल्चर चाइना और कोरिया में इन जनरल बहुत अलग है. मतलब इनका बूट कैंपिंग स्टाइल, इनका प्रैक्टिस रेजिम इज नो लेस देन बेसिकली लाइक आर्मी लाइफस्टाइल. अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, एंड इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. आई थिंक मतलब बोथ वेज जाता है ये कि थोड़ा ज्यादा ही सीरियस होते हैं लोग उसके बारे में. तो बट मेरे हिसाब से बजना तो चाहिए, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाता है यार सीन को. विच नॉन-वेज फूड आर यू ऑब्सेस्ड विद? आई कैन suggest some good restaurant मुंबई चल. मुंबई में तो प्रीत भाई, I have, you name it, I've been there. You name it, I've been there. Everywhere. I'm a big foodie yaar. You name it, I've been there. What is your favorite thing is Nando's? Just the normal quarter chicken, और जितनी ज़्यादा भूख होगी तो half chicken. और मैं normal mild spicy खाता हूँ, मैं medium spicy बस. तो trash talking मेरे हिसाब से होना तो चाहिए यार, एकदम boring बन जाता है नहीं. चाइना और कोरिया का अलग है क्योंकि वो लोग वर्क कल्चर बहुत अलग है, बहुत अलग है. वो लोग के लिए पता नहीं, मतलब वो लोग का प्रैक्टिस वगैरह रेजिम देखो तुम लोग एक बार, मतलब गांड पड़ते. कोफू को ऑफ कोर्स गया, पूरा को कोफू की बात करो, पूरा को जाओ. कोफू को आपको अपग्रेड करना है, पूरा को जाओ. सिर्फ भाई गेम समझो इसमें करना क्या होता है यार. ऐसा नहीं, अभी तो वर्ल्ड चल रहा है यार, अभी कैसे समझो यार. अब देखो ना इसका ट्यूटोरियल, जब मोबा है, हर मोबा में सेम ही चीज करनी होती है, सिर्फ बीच में अलग होती है थोड़ी सी चीजें. Yes, even in South Asia league scene, I trash talk a lot. If not, it's going to be boring. Exactly, you have to banter यार. मतलब you have banter से, देखो trash talk banter से story lines create होती है. आप लोग एक बात समझो, story lines बहुत important है बाबा, बहुत important है story lines. I'm saying story lines and banter, not toxicity obviously. Toxicity is not necessary, but एक rivalry, एक story line होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे जो Gen.G वर्सेस चोवी की जो स्टोरी लाइन है, उसके वजह से अभी तो बहुत लोग देख रहे हैं, एक हाइप क्रिएट करती है भाई वो स्टोरी लाइन. समझ रहे हो? बाहुबली 1 जब तुमको बहुत ज्यादा पसंद आती है, तब तुम सेकंड पार्ट देखने जाते हो ना, कि फर्स्ट ही इतना अच्छा था, सेकंड तो क्या ही होगा. तो एक स्टोरी लाइन क्रिएट होती है, तुम कनेक्ट करते हो फिर उस चीज से कि यार मेरे को मिस नहीं करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट देख लिया तो मेरे को सेकंड भी देखना है. तो मेरे हिसाब से बैंटर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. अपने सीन थोड़ा ओवर कर देते हैं लोग कभी कभी, और ऑडियंस भी थोड़ा सा इमेच्योर है उस टर्म्स में. तो देयर इज अ थिन लाइन मेरे हिसाब से जो फॉलो करनी चाहिए. Which could become a problem if Keen gets accelerated, and I think that is what's so incredibly important about what you say, playing through that top side. कुछ रूल्स होते हैं, पता नहीं कैसे समझाऊं. मतलब हारने के बाद मैं नॉर्मली लोगों को ज्यादा ट्रैश टॉक वगैरह नहीं करता. हारने के बाद नहीं, सॉरी, वो हारने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग गिरे, मतलब don't kick somebody when they're down जो बोलते हैं इंग्लिश में कहावत है, वो सब थोड़ा एक फाइन लाइन होता है मेरे हिसाब से. टॉक्सिसिटी और ट्रैश टॉक फर्क है थोड़ा. We're talking about Soul Point, we're talking about 6 grubs, possible Herald, and the 6 grubs I think is attainable for T1. That alone is not going to be enough. There's a possible trap being set up here. Owner has that ultimate available, but instead, even if you don't actually get anything out of the play, like you're crashing this wave, you're getting the plates, and you're still putting Gen.G further behind. The key difference I think we're seeing
in terms of impact in this early game is Carrier. Carrier is really making his presence felt in the mid lane, and remember, Chovy had a CS advantage because of Faker's TP towards the bot side of the map. So Carrier has spent like at least 2 to maybe even 3 minutes of this game just hovering around mid, making it awkward for Chovy to base at the right time, keeping him to stay for that extra minion wave, helping Faker chip away at his HP. And you look at that CS, look at that gold slowly shifting back in Faker's way. You can see 3 plates secured in the mid lane. Meanwhile, Lahens has just been shadowing his AD carry, shadowing Pays, just making sure that, yes, he can get that experience, but he's even behind Carrier when it comes to XP. So with the Grub spawning in a minute's time, desperately he needs to get the level 6 to have that ultimate available. And I wonder if Gen.G is actually eager to try and force a fight as the Grub's now spawning soon. And it's the opportunity cost for the 2 plays that they tried to go for. The dive was a failure, and then the topside play we tried to set up for Keen, trying to punish this pushing power of the Ashe and Renata, also not really working out. And that not only set Lahens behind, but also started Keen being in a bit of a tough position when it comes to catching these waves. And I do agree, I think Gen.G, Hi Baba, hello. they are denied जब इनमें से फाइनल जाएगा BLG को वन साइडेड देगा very tough. बोल नहीं सकते BLG भी अच्छी टीम has, है again, I think been in this position before, but I do really want to highlight. अच्छी टीम है BLG भी We say that often, but if you look at their gold stats in the LCK, they weren't getting a lot of kills, but the amount of gold they generated early was actually insane. Like, they were sitting on, I think it was on average like a 1.5k gold lead, and obviously there was a meta that was textbook perfection for them, but it isn't like they were getting into fights without anything to grasp onto. And this game feels like that might be the case as the Grubs are going to get started up. You see Gen.G is looking to contest. Level 6 has been hit on Lahens. Yeah. Is that enough? 4 Grubs are definitely going to go the way of T1 here. Yeah, it's at least 4. No, BLG को जीतना है वरना चाइना में लॉल का सीन डेड है हाँ नहीं चाइना में लॉल का सीन डेड है पागल हो गया पॉसिबल नहीं है भाई चाइना बहुत बड़ा रीजन है लीग के लिए are just going to cut their losses. 5 Grubs is pretty good. Canyon going to be able to grab this 6th, potentially. Owner a little bit far away as now could just be a team fight in. Pays doesn't actually get over the wall with that satchel. Could be an important start. Highly recommend Mahesh Lancham been there for Seafood. Surmai Coastal in Malad में नहीं गया होगा. Barrel is so good. Still, it's going to be Chovy picking up first blood against Owner, and T1 just not enough damage. T1, they could have just taken the 5 Grubs and left it at that, especially with the teleport coming in from Chovy, but instead they look for the 5v5 and Gen.G punch back. Yeah, I'm surprised that T1 chose to take that, because the thing we've been talking about, right? Renekton in this early game is just, he's just so strong. Ultimate alone is enough to be so durable. A lot of damage. And you can see how the engage was a little disconnected here from T1. हाँ शालीमार भी गया वो. Owner diving onto the back line, attempting अरे to हम steal the telling you grab. मुंबई का मेरे को एडवाइस दो ही मत. मुंबई Perfectly safe, nice अगर है angle. तो मैं गया Ash arrow वैसा gets सीन. stolen. Gumayushi really can't do much. While the barrel looks good, the front line dissipates, and T1 is immediately forced to disengage. Yeah, it was a dominant. Me and my brother we big foodies यार हम लोग just slicing and try dicing his करते way रहते हैं हर around. जगह पे. Even though it looked amazing, didn't quite work out there. So T1, they lose first blood, but they still have a lot of tempo around this map. Unless Chovy has something to say about it after he does crash this wave towards the top side. 5 Grubs certainly going to be valuable as the game goes on though, and T1 are looking to also even out the dragon count. And the kill going to Chovy is a big deal. This Silas, we've seen how hard this champion can snowball, and he does get a lead. Able to very consistently force plays with his catch potential. And it's also something that the Chovy that we saw domestically, I think we've only seen in one game this season. Was the game 5 the game. Because his laning stats haven't really been comparable to what we have seen domestically as a trader for turrets. Well, it's going to be 5 Grubs, so T1 do have a fair bit, but Gen.G, I think they're going to be able to cut this one down. Gumayushi also in trouble there as a solo player does get cleansed. नहीं वो पता है अभी लेकिन वो ड्रेक को मार रही थी तो उसका वो हाथ से भी फटका फेंक रही थी और पुछड़ी से भी फेंक रही थी. How does crocodile taste it, भाई? Disgusting. So a bit of extra gold going over to Gen.G, and that's going to be very close to even things out here between the 2 squads. I mean, what we could I don't know. It was मैं try किया. It was disgusting. Game 13 minutes. Maybe a few more kills. Still just as even. They're coming. Remember, it's game 1 of a best of 5. You don't. We have the entree. You know, we're just starting I'm sorry, off. just a little bit of. If you could eat only one type of cuisine for the rest of your life, what would it be? I agree with you, buddy. One dish or one cuisine? I think what was smart there you're from asking me Gen.G is, cuisine? I mean, they had to reset after the Grubs. The problem is the Dragon was Yaar, spawned relatively soon, so T1 already honestly, back out onto the map in a position to for the secure rest that. of your Gen.G life, leveraged देखो, the fact that they had that time I advantage love to Indian secure that food. first tower. So ultimately an even trade. The only problem for Gen.G is T1 can kind of sack the next Dragon if they want to without much of a problem.
and they can continue to scale up. Blade of the Ruin King is मैं रोज very नहीं खा close to सकता being वो। completed for Faker, and that is रोज such क्या a खा massive सकता हूँ मैं? item spike पिज्जा for इज्जा भी रोज T1 नहीं खा that they're सकता। definitely going to be waiting to try and secure. Now Zayas Man, pushing shall we another trust wave the process towards back his to top my lane, team and back on does track? have quite a Appreciate few well. friends around. Looks Thank like you Gen.G very did have a much. bit of information as to who was coming. बट मैं तो सुना था क्रोको बहुत अरे बहुत चूई था बे, ऐसा लग रहा था कच्चा खा रहा हूँ मैं, ग्रिल था फिर भी ऐसा लग रहा था कच्चा खा रहा हूँ, चबाए जा रहा हूँ चबाए जा रहा हूँ, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था मतलब। And I know I've tried a lot of things, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था. It's weird. Crucially, look at Faker going back to base. He should have enough money for Blade of the Ruin King. Cuisine, This let's means see, that T1 are saying, let me Indian. we don't want to fight I yet. It's won't not be able worth to it. for the rest They're of not my going to life. overstay their There it welcome. is. I The think- TP Kraken as well. The question is this TP going to be up in time to contest? The pings are coming down from T1. They have the I Ash think I Arrow would go available to with try and stall. like T1 are in saying, general "Do you थोड़ा wanna fight this?" Southeast Asian cuisine. It's like they're going for a great vision here with this ward, as you can see. So Owner मेरे को completely पसंद on है. vision मैं right now I as think Chovy वो with the fate seal अगर now rest of stolen my life away खाना है or तो मैं वो खा hijacked here. सकता हूँ. That's a solar flare. It's going to connect. Great impale as well. And I think Gary was there for a second, but now he is just gone. So the Herald goes to Gen.G. They'll take a kill as well. Now Chovy looking for more as Faker just going to pop back to यार his फेकर soul's अच्छा ace. खेलता है क्या He's ये? going to body slam his way out. And Gen.G, अरे यार शाशु, they really are taking these skirmishes. शाशु, Gen.G's target selection in these skirmishes has been so clean every single time. One member is getting blown up in a barrage of CC as Lahens is driving. Always scary, but this time it works out for the mid lane turret. Gonna get taken low. T1 is able to defend. Yeah, ever since Lahen's got his license earlier in this tournament, he has definitely been driving a whole lot better than he was throughout the rest of this year. We've An seen LCK some fan, things. you know, exactly. Very proud of him, though. What we saw there as well for Gen.G, and it's again, I think T1. This one a little bit more understandable, but when Gen.G have the setup, this comp is so hard to engage on. There's so much disengage, and the Don't Skarner be in particular, I disturbed think, or is really been a irritated big if I problem for captain. many नहीं teams नहीं this बिंदास world. पूछो And यार, even कोई with टेंशन Pace, नहीं है, I देखते think हैं, his मजा flash कर was रहे हैं forced साथ in one of में, the early बिंदास plays we पूछो. saw. Didn't I actually think happen on screen. I think maybe when they were looking Southeast for the catch Asian up Guma, के but he साथ was जाऊँ positioning मैं so जाऊँगा. safely. There was no way to get on top of the मतलब मैं six. रोज खा सकता Now it's हूँ. just I Canyon and think. Chovy up here towards the top और side of इंडियन the भी map. खा All सकता members हूँ of यार, T1 रोज अगर in the रेस्ट ऑफ area माय looking लाइफ to try and खाना है push तो down मैं this turret. इंडियन They really want to take their या second तो इंडियन है तो to साउथ ईस्ट even out एशियन. the अगर map इंडियन state. के अलावा Stars, these बोलना है तो structures and a साउथ teleport to come in बट from इंडियन भी Pace अच्छा just ही to है make मतलब sure क्योंकि that they इंडिया don't में lose. यार See, Gen.G पॉइंट है कि are playing बहुत their वैरायटी advantage है. very Oh, man, yeah. strategically. बहुत Because वैरायटी T1, है इंडियन में. like, the और problem with साउथ the ईस्ट एशियन Herald में was मेरे को the वैरायटी timing. चाहिए बहुत TP ज्यादा. wasn't quite up for वेज भी Faker. उतना ही He needed अच्छा to है, get that नॉन face वेज off, भी yet उतना ही they अच्छा still है. wanted to नॉन try वेज and में contest साउथ ईस्ट एशियन rather में than go for पोर्क भी cross काफी map यूज because होता the है. मेरे को bot tower had पोर्क भी already पसंद है. fallen. So rather than play for तो something like mid, they got over वैरायटी ambitious बहुत है and they मेरे weren't able to हिसाब make it work. Then what they did was they kept the pressure up in mid. If you could So one Gen.G choose could instantly secure per every that time mid you're hungry, tower. what They would kept pick? Burji Pace there. Pao. He had the TP available. He then goes back to base and then TP's top. So while this Burji Renekton is free Pao. hitting onto the bot tower, uncontested to secure that tower, they had the Ziggs TP top to then catch the wave and prevent the siege. So goat T1 Burji is just Pao. losing on the map, while Gen.G is continuing to gain advantages. Yeah, and I know a lot of people have trouble liking Zeke's compositions. And I understand it's not exactly the most interactive when it comes to early game skirmishes and things like that, but what it does to a team that is very good at playing around tempo and macro that they are already good at is it's just basically a cheat code. Well, it's as you were saying, Vadi, because even if you do try to play for mid turret, they're like, Pace can just ult the wave. Correct, yeah. And Gen.G have had so many of these Ziggs पूरा compositions, and it plays परफॉर्मेंस really well रिपोर्ट into भेजा their है बे style, मायावी which ने. is क्या बात always है? trying to outtrade you. And now, शाशु what 1.5k goal deficit 5 minutes ago. Stool T1's कौन going to गया get this उनके topside लाइफ turret, so they're going to equalize it a little bit, but is still दूसरा का नहीं है 1.5k इकडे gold तुला for साठी. Gen.G and a second dragon on the way as well. घेऊन ये. And look at the map setup as well. Like, Gen.G conceding that top side to get full vision coverage. Tried around Cafe this bot Gulshan side of the Burji map, Pao. pushing Zeus ये क्या है? deep towards his tier Don't 2 tell me tower, मुंबई में famous making this Burji Pao very वाला है bro. difficult क्या for बात कर रहे T1 हो? to contest. There it is. And the Ziggs ultimate to slow down the siege. It's Chovy comes on over, he's going to be able to clear it out as well. it's annoying. If Yeah, you're T1. it is annoying. It's so annoying That's because stupid Yordle. you're trying to cross map the best that you can, and it constantly gets interrupted. Well, Canyon looking for an opportunity here, but Zeus Got it. just going to be able to take the red buff just fine. So ये there is a win for T1, but they're going to have to do something थ्री to try and grab माटुंगा some ईस्ट में control क्या back in बात this कर game. रहे हो because ब्रो? बुर्जी earlier पाव on, का फेमस T1 जगह है were, मुंबई in the में. laning phase, able to get a lot of decent advantages. Yes, it wasn't translating into kills, but क्या they were able to get some बात extra money. कर Of रहे course, हो? Kumigishu was very far ahead, still has माटुंगा तक जाना I guess a पड़ेगा couple अभी of यार. minions in the lead, but he was 20 CS
DPS up earlier on. That has been evened out.
And yeah, this game state is all going to come down to, I think, जाएंगे, just ठीक where है, team bookmark करके fights रख will दिया मैंने, finally appreciate it, erupt. thank you. When these teams stop just trading भाई एक और objectives चीज मेरे को आज पता everywhere, चली। as Arrow is looking to connect handshake straight into it here. तुम बाहर जाते हो और तुम Zomato या Swiggy के through pay करते हो bill। That is going to be T1's first kill. They're holding on to it as best they can. Faker delivered that one. Kumiushi says, you can have it, mate. बड़े-बड़े डिस्काउंट मिलते हैं भाई, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, इतने पैसे बचाता मैं। ये सब चीजें मेरे को पता क्यों नहीं होती? आज 1500 का बिल हुआ खाने का, मैंने कोड यूज किया, 1100 दिए अभी मैंने। Baron spawning him at 45. I don't think that's going to be a major point of contention this क्रेजी early लगा on, मेरे को, मतलब but मेरे it को adds पता that नहीं था। extra मेरे sense of बिल pressure. नॉर्मली We know शाशु T1's वाशु के barons साथ जाता are हो तो famous for both वैसे positive 12 and 13 negative हजार होते हैं। There's been a उसमें fluctuation तो throughout क्या the years, पैसे yeah. बचाता But I है think at मैं? this World Championship, their गाड़ी barons आ have been जाती very शायद good overall. नहीं And I पता think it's something that नहीं Gen.G मेरे will को have नहीं to पता keep था। track of, especially after their experience against FlyQuest. Well, Canyon, तो बाहर जाके डायरिंग में Zomato से बिल पे कर सकते able to हैं। dash back whenever he would 10% 1500 का 1100 भर के आया हूँ Another solar flare's going to lock down Faker, and he is likely to die. The वो bailout सड़ी not के gonna work 400 in रुपए कम है, Chovy. तेरे Yeah, तेरे he's बाप stopwatches, कमा के but दिया now तेरे को he's looking 400 for रुपए even लोड़े। more. Zeus not going to get इधर stunned up मेरे here. इसमें He's से keeping लेता that रहते on रहो cooldown तो just yet. लेना हो And 400 Chovy रुपए is से तू अपना still खुद का। smelling blood in the air. Carrier able to walk his way out, but it's another जाओ skirmish बंद win कर for दे रहे Gen.G. बाहर जाओ। What is Gen.G going to do with this? Faker does have TP available. It is very early. I नहीं मेरे do को नहीं agree. पता I था। don't think they can actually do this. सेक्सी था। Their damage to रात को Baron कोई और not टीम होगी nearly क्या? to what Unlikely, T1 but would देखते have. But it's a win when it comes to the immediate play. That's सी still भाई लॉल TP 3 लाख invested वाचिंग though, में and मेन much चैनल like the एसएफएल kill on आ the जाता hands, it's तो nice. नीड टू लर्न दिस But गेम टू ट्राई if they get टू like 2 एंजॉय more इट्स kills, स्पोर्ट्स। you can probably look towards more. Instead, it's going to be TP for a kill. एसएफएल Gold going over to आ Canyon, सकता who है। finally I was going to mention is gets किसी his पे first अल्टा हो card कैसे पता stacks. चलता है? 20 ये minutes देखो। into the game. मतलब इन गेम पूछ रहे हो या अभी पूछ रहे हो? इन गेम उनके एक आइकॉन के ऊपर ग्रीन कलर का गोला आता है। यहाँ का अगर पूछ रहे हो तो ये देखो दिख रहा है माउस, ये देखो ये कूल डाउन अभी कंप्लीट हो रहा है इसका, देखो 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 ब्लैक है, ये भी कूल डाउन पे देखो धीरे धीरे ब्लैक कम हो रहा है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, समझा फर्क? ये देखो ये अब अवेलेबल, ये देखो 7 6 5 Really nice collapse from them. They did lose the mid tower, but ultimately Gen.G playing with a lot of control and confidence on the map. Their sideline setups are nice, their vision control is good, and now again around the Baron they're suffocating it. The good news for T1 is that, as you already said, Chronicler, they don't have a fast Baron. So T1, even if this Baron does start, will have plenty of time to react, even if there's not that much vision, thanks to the Ashy as well. I think it's actually so interesting talking about lopsided crowds in this matchup especially, because Gen.G are exceptionally used to it, and not just Gen.G. You look at all of these players just in general. Keen, has he ever had a matchup where he's favored over the last 7 years? That's fair. I don't quite remember when. He won his first LCK title only very, very recently. Chovy going to be fighting against Faker here, but I don't think there's going to be any big result, although good trade there for Faker. Chovy and Lehens got smashed by T1 in their very first final that they made it to. So they're used to it over quite a few years, and Canyon was the first one to figure out how to actually do it, you know, and then became a world champion. So getting over that hurdle has been very important for all of these players. Yeah, T1 always has the home crowd advantage. It feels like one of the things that they are going to really struggle with, though, भाई ये जगह से मेरे को लग रहा है कि अच्छी रही है अंडी बुद्धि, क्योंकि इस पे है BMG early egg food कामोटे पनवेल, You do have the ability to इसमें contest the vision सिर्फ just अंडों because की you have चीज है। Yash, but face checking is But actually यार really hard. 45 Many minutes of the दूर plays है, that we've seen 45 thus minutes में far तो have just been Gen.G finding whoever मुर्गी is बन जाएगी यहाँ closest पे and आते blowing them आते। up with the बाजू में नहीं है CC कोई as मुर्गी वाला। this rivalry goes a while back. It certainly does. It's the dawn of League of Legends as we know it. Because you got to remember that Gen.G even acquiring all of the accomplishments of the former Samsung roster, right? Like this goes way back. Yeah, 45 and there were minutes multiple teams. Exactly, that's what I'm saying. There were multiple SKTs in the league, multiple Samsung Galaxies in the league as well. Although not necessarily Samsung Galaxy, because it was blue way back then as well. But I think, you know, we understand the reference. I just wanted to make sure I understood the semantics. लो लाइनअप 5 मैन और 6 मैन Ultimately, what we're building up सबs to, होते the होंगे, reason हर why टीम we're के साथ focusing on all सबs these होते हैं। things is because that main course dish is arriving soon. The third We know what fourth Soul trying to track find with is you gonna be play, let starting them up. doing I it and ordered prepare. a banger team fight. Appreciate it, And I'm waiting for it to be delivered. about a T1 The T1 T1 को बोलो start, 10 like, मिनट so दूर। smart. They see that अबे हाँ बे, the Dragon is अबे being but started off. The Ziggs ultimate is बोलो always क्या there. They बोल know रहे this हो? is started. Let's see how Gen.G handle this cross-map pressure. Yep, it's Chovy that's going to अबे make his way पाव नहीं over there होगा first. Spotted by a T1 ward, as we can see.
And there's the Mega Inferno Bomb just to guarantee that they know exactly what's going on. Teleport comes in, and yeah, there is no Smite anywhere near this pit. Chovy, can you actually stop something from happening here? Is it going to be Ona that locks this one down? Ulti from Faker finds two. He's out of there immediately. Keen's able to try and chop them off. And there goes Ona, but they'll trade that any day of the week. They have the Baron buff as Carrier, able to get the handshake beautifully. His position is amazing. As Lehens is in so much trouble, Zay's going to pick it up with a body slam and pace. They're being separated and destroyed as T1 just dance on Gen.G. The main course has delivered as T1 smartly start off the Baron. As Gen.G tried to start the Dragon, they forced Gen.G into this very difficult situation that they just couldn't answer. As we look here, Chovy, I imagine his job is to stall for the rest of his team to arrive, but he steps too far forward. Whoa. He stays alive for a lot longer than we were expecting, but it doesn't matter. That's such a big source of damage gone. And then you see, with Zeus threatening the backline, Gen.G doesn't actually have any damage. Like, Keen is trying, Kenyon's trying, but it's a Skarner and a Renekton that's getting kited away. The resources are divided on two fronts with Zeus, putting that pressure on the mid lane. Meanwhile, Ashe is such an annoying champion for Renekton to deal with. We talked about the scaling elements, and you're starting to see them come to fruition. The first major lead of the game, while it's not represented in the gold, goes to T1. The soul point did go to Gen.G, and that's something that they are going to try and hold on to. What can T1 get with this Baron? Bot side push is going to come through, but do remember, as long as Pace is in the lane, the wave clear is still going to be very annoying to deal with. Yeah, especially when there's side lanes that are sort of pushing naturally towards Gen.G. You can tidy those up pretty comfortably. Right now, Gen.G doing a decent job being able to remove these minions. 5 grubs and Baron, though, it's going to be very, very difficult to stop T1 from taking these tier 2 turrets. It's going to be their option as now Chovy up here towards the top side of the map, fighting off against Faker, who's happy to go underneath this turret. So much damage. Player coming on through, and so Chovy is going to be okay, but this does not bode well. Party cast? Yeah, this is why I was a little surprised by the Sylas pick, because you kind of don't beat Yone Gen.G mere you don't really beat him in a side lane either. There's this sweet spot in the mid game where you can maybe get advantages just because your skirmish power is stronger, but right now Chovy's struggling to match that of Faker in the side, and T1 putting pressure everywhere. Tier 2 towers secured in top lane. They've transitioned over to mid. Now they have another wave in bot. Gen.G's been dragged over towards the mid lane. That tower's going to fall. Gen.G in game 1, slowly losing more and more control over the game. 3K gold lead now for T1, even though the first minute or so the Baron, they weren't able to find anything. It's the setup afterwards. This team is perfect. बस T1 जीत जाए और एक फेकर कुछ तोड़म तार मार के चूट कर दे टेढ़म समझ रहे हो फेकर एक बार बस गेम में एक बार बस Keen with the dominance just trying to distract them. In goes Lehens, trying to take them away from his inhibitor turret. क्लिप दे दे फेकर बहुत टाइम हो गया तेरी क्लिप देख के वो एक कुछ आउटप्ले दिखा दे फेकर बस वही चाहिए अभी And T1 watch बाकी लाइफ सही जा रही है बस into their deaths again and again and say thank you very much. The inhibitor stand, but the gold lead keeps growing. And Faker just toying with them here on this bottom side of the map. Man, it really just feels like a big swing back. So much it was give and take in this game, but now T1 are just saying that they can have it all. The peak potential of this roster was something we didn't get to talk a lot about, but you can see it clear as day. The Ashe arrow into the Gragas ultimate makes it so difficult to protect the target that gets locked down. Lehens doing what he can to try and catch Yushi out, but it's just not enough. And the game is quickly snowballing in favor of T1. Mumbai Indians versus you can see the GOAT as well, not celebrating yet. This is game 1. Not RCB. 5,000 gold is the approaching gold lead for T1. Mumbai Indians versus let's say Chennai. They have so much map control. They should be able to deny the rest of the Dragons. They can get their ducks in a row as far as these lanes are concerned. And Gen.G back out onto the map now, trying to steal away this blue buff. I don't like Gen.G's draft at all. They have no solid defense. Draft is amazing. Pushing out the top wave mid is kind of been sacrificed. No one is actually in a position to catch it. Carrier is the one there to try and hold the wave. Guma's going to have to go the long way round. They've gotten push in bot, which means that Chovy's going to go and answer, but ultimately the
the river has been conceded. Gen.G have purchase over that area of the map, while Faker's remaining top has the TP available. मुंबई कौन Let's see CSK how कौन this नहीं one ये नहीं plays बोल out. सकते Yeah, playing the side lanes ये very नहीं well बोल is सकते Faker, दोनों ही as we टीम can see, उतने ही gonna I immediately think teleport into the in mid lane terms as of that wave audience crashes का forward. प्यार Keen, he's got his मेरे teleport को up as लगता well, but है he's going to be behind the play just a 51 little bit. 49 होगा मतलब Now इतना Carrier क्लोज looking for होगा that अगर opportunity. Hostile वोटिंग takeover, किया 2 हम seconds. लोग ने Now it's पोल back करके up and देखो क्या available. T1 are ready to fight. क्योंकि बहुत Gen.G can choose to give this up. इक्वल अमाउंट T1 ऑफ प्यार only have a मिलता है single टीम dragon, को देखते but it पोल looks like करके they देखते don't want to give him the opportunity. Maybe feeling like in the late game they can't match. Gen.G gonna try and go for a Hail Mary here. Yep, Chobi's got a cask at the ready. It is going to be Owner denying देखते that soul. And now मेरे हिसाब T1 से starting क्लोज off होना the चाहिए fight. पता Can नहीं अभी Gen.G लोग actually कम find भी है angles? अपनी Hostile चैट में तो takeover बोल नहीं comes in. सकते Carrier, he's अरे trying to भाई bail चोट himself किधर out, तक and it's गया going to work for now. The Impale is good. They take down Carrier, but can they deal with the carries? That's the भाई question. गुमा को Chobi देखो starting to pop up, and so is gonna be गुमा को Yoshi. देखो Chobi's down. माँ Moore is की into his चूत back, and करो he knows गुमा what he's done. Flashing forward. It's a triple ओ for भाई Moore, and that साहब should be the game. He still hasn't died. भाई गुमा बहुत मार रहा है ब्रो In a row, I guess, gentlemen. T1 in the final team fight of game one गुमा will बहुत मार snuff रहा है out Gen.G. A full-on ace at the cost of their jungle and support. The nexus in their eyes. 30 minutes in. T1 remain the gatekeepers of the World Finals, and they'll say you'll have to try better than that What if you the want to fuck make it bro to 30 London. मिनट में खत्म Nexus कर turret दिया number गेम 1, Nexus turret number 2, and T1 will take the first game in this best of 5. And we'll see whether Gen.G can do better in game 2. अभी तो चालू हुआ था So one of the things that I feel was missed, and there was not a lot missed from our teaser today. It अभी was तो one मैं of Phil's चालू हुआ था best बे things ever. But one of the things that was missed is मुंह के that अंदर रखा है not देखो only do you कॉफी फेकर have ने to beat थूकेगा Faker अभी to वो be the जाके best, जेनजी पे शायद you always have to beat Faker to be the अरे best. मतलब And पता they're नहीं not मेरे को quite मैं doing it assume yet. कर रहा हूँ Faker still remains the GOAT, and he probably will forever. It's time for us to go to a break. When we get back, game number 2, we're going to break down that game number 1. भाई ये T1 का क्या वर्ल्ड्स बफ है भाई the fuck Do you like hot dogs? I love hot dogs, but I don't think मुंबई में कहीं अच्छा मिलता है hot dog. बहुत कम जगहों पे अच्छे मिलते हैं. मेरे को 7-Eleven का hot dog बहुत पसंद है यार जो दिल्ली में मिलता है. मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. मुंबई में मैंने decent hot dogs खाए हैं, but मैंने ऐसा कोई भी नहीं खाया जो मैं बोल सकता हूँ कि oh fuck खा के मजा आ गया. तुम लोग भी खाओ. समझ रहे हो? But this one comes very close. Browse the collection and choose a mod. नाम भूल गया हो Open GX Corner and scroll to the नाम नहीं Riot आता रहा, section पीछे with a छोड़ो. brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. भाई Only क्या on the फेकर browser जीतने for वाले वर्ल्ड games. फिर से Only on Opera फिर GX. से again again गेम समझ में नहीं आ रहा लेकिन अब आउटपुट करो देख क्या बात है यार नरेंद्र भाई अप्रिशिएट इट यार अप्रिशिएट इट ऐसे तो मेरा सुपर चैट का ऑप्शन भी ओपन है तो वो कर मतलब मजाक Shilpa, would you agree that misal pav is an acquired taste cause whoever I've talked to outside Mumbai hates it? Misal pav acquired taste? I don't think so. See, misal pav, I feel like Mumbai के फूड के हिसाब से मिसल पाव लोगों को यहाँ पे अच्छा लगता है और मिसल पाव तुम एक बात समझो यहाँ पे ना हम लोग ने बचपन से खाया है जो भी मुंबई में रहा है ना उनके लिए मिसल पाव वाज लाइक अ ब्रेकफास्ट या जब कॉलेज में स्कूल में पैसे नहीं होते तब तुम बाहर जाते हो यहाँ पे इडली विडली भी मिलती है ठीक है बट मिसल पाव एक स्टेपल फूड जैसा है बट आई वुडंट से इट्स एक्वायर्ड टेस्ट and not just Mumbai by the way misal pav is everywhere in Maharashtra everywhere ये क्या लिखा है प्रीत भाई who let the dogs out oh the ran अच्छा नाम बता hot dog harbor pool hand that city will love them bookmark the चेक करता हूँ सेव कर लेता हूँ आपका मैसेज outside Maharashtra yeah outside Maharashtra yes I think but क्योंकि महाराष्ट्र का in general टेस्ट ही वैसा है यार
मतलब इन उनका स्टेपल फूड का टेस्ट ही मतलब मिसल पाव और बाकी सब चीज़ों का टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट पैलेट क्लोज है ना, इसके लिए हम लोग खाते हैं, तुम लोग के लिए थोड़ा सा। बट आर यू श्योर कि लोग देयर आर पीपल हु हेट मिसल पाव? मैंने हेट वाले तो बहुत कम लोग देखे हैं लाइफ में। और मिसल पाव इज वेरी, ऐसा कुछ में हेट करने जैसा मेरे को कभी लगा नहीं, मतलब ऐसा बेसिक फूड लगता है मेरे को कि हेट करने से मेरे को कुछ पता नहीं है क्या ऐसा। डिड यू ईट मिसल पाव बिफोर स्ट्रीम? आई एट समथिंग, क्या था वो, नाम क्या था? Sandwich. I ate a sandwich. Hate would be a strong word, but I've seen a lot of people dislike. Yeah, it's थोड़ा सा अलग है वो। मतलब फरसान के वजह से आई थिंक लोगों को मे बी आउटसाइड महाराष्ट्र अच्छा नहीं लगता होगा। I get it, मतलब I wouldn't, मैं कुछ चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली का भी फूड जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे को दिल्ली का फूड, बट एट द सेम टाइम एज एन आउटसाइडर मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली का फूड अच्छा है फॉर द फर्स्ट 1 वीक, बहुत सब कुछ सेक्सी लगता है, बट वो 1 वीक के बाद इन माय ओपिनियन हर चीज का टेस्ट मेरे को सेम आता है, मेन्यू पे मैं कुछ भी मंगाऊं, बट फॉर द फर्स्ट 1 वीक आई थिंक दिल्ली फूड इज इनक्रेडिबल। I feel for the first 1 week Delhi food is incredible, like the taste is incredible, but एक हफ्ते बाद मेरे को ऐसा लगता है कि सब चीज का टेस्ट सेम आ रहा है। भाई हाउ कैन यू हेट मिसल? मैं नहीं हेट कर रहा, मैं तो महाराष्ट्र में, मैं नहीं, मेरे तो घर पे बनता था मिसल। और हाँ, महाराष्ट्र में ब्रो मिसल क्यों ज्यादा ये होता है, क्योंकि हमारे घर पे, मैं आपको बता दूं, सुनो, महाराष्ट्र में एक उसळ की सब्जी भी बनती है, रस्सा, मराठी, और वो सिर्फ मराठी लोग के घर पे नहीं बनती, वो यहाँ पे मैंने स्कूल में देखा है, गुजराती, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम फर्क नहीं पड़ता। उसळ, मैंने उसळ वाला सब्जी बहुत बाहर देखा नहीं एक्चुअली। विच फ्लेवर्ड सैंडविच? इट वाज अ लेबनीज सैंडविच। तो वो अक्षर भाई आपको पता है उसळ, वो जो, तो उसळ जो है ना वो हम, तो उसळ आपको पता है ना उसळ और मिसळ में क्या फर्क होता है? आप अगर मिसळ के शॉप पे जाओगे तो आपको उसळ भी मिलेगा, उसळ और मिसळ में इतना फर्क है कि मिसळ में फरसाण होता है, ये आपको पता है ना? What did you drink before this stream? तो मॉन्स्टर की थोड़ा एनर्जी अच्छी रहती है। Have you tried Ross omelette? Not sure about Ross. Anyway, हम लोग मिसळ डिस्कस कर रहे हैं। तो उसळ और मिसळ में ये फर्क होता है कि उसळ बेस होता है, मिसळ में फरसाण होता है। उसळ जो हम लोग ऐसा सब्जी भी खाते हैं, उसकी ड्राई सब्जी भी बनती है हमारे घर पे, उसकी वो रस्सा वाली सब्जी भी बहुत बनती है हमारे घर पे, तो वो एक टेस्ट बैठ जाता है हमारे मुंह में आई थिंक यार, मतलब एटलीस्ट इन महाराष्ट्र। तो मिसळ फॉर मी नेवर फील्स लाइक आई एम ईटिंग समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यू नो, मतलब ऐसा कुछ अलग फील नहीं होता जब मेरे को मिसळ मैं खाता हूँ। वैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे तुम दिल्ली वाले हर चीज में मेयोनीज डाल के खाते हो, कि कल उठ के अभी तुम लोग ने चॉकलेट शेक विद मेयोनीज पिया, तो तुमको ऐसा लगेगा कि सेम है, मतलब समझ रहे हो? वैसा ही उसळ और मिसळ हम लोग का सेम है एकदम, ऐसा लगता है कि रोज का खाना है हमारा। T1 Barons! When I think of this game, and when everyone thinks of this game and they're looking back, they're going to think of the big Baron. Yeah, why didn't Gen.G? Well, I mean, this was a really good call. You could see that they
Dragon was taken, Skarner was gone. You need to get the TP in, but Faker with this ultimate as well was चॉकलेट अरे clutch, क्या and that's पता why भाई ये Skarner लोग allowed सब us to में connect सबके with साथ तो Premise मेयोनीज It आता was है absolutely insane उस दिन मैं एक to see वीडियो देख रहा था वो just बंदा how स्टफ्ड clean इडली they बना रहा were था इडली on को this बीच fight. में से And then look at the re-engage छेदा from करके Gen.G here. पता They नहीं actually क्या split. So मतलब Baze उस is पे the big damage मेयोनीज still और alive. He नूडल्स goes डाल के down, इडली को कवर focusing on Zeus, भाई but मतलब Kenyon देखो flashed the other कुछ way चीजों को to मेरे get a हिसाब से double चेंज Skarner नहीं ult, करना but चाहिए there's no one there to follow बहन up जो on his इधर भी double मुंबई Skarner में ult. मिलता है And वो so then T1 पाव gets और so गुलाब much out जामुन of this. It's किया not just a T1 like sneak Baron. It अब was चलो ठीक over है a मैं जज नहीं करता 5,000 करो gold यार Baron तुम्हारी power play लाइफ है with तुम that जियो Baron. अपनी They got जिंदगी बट all three of the secondary towers and more kills because of Guma's Ash. Able to hit the arrow on Canyon as he's like standing by the tower सेंस for नहीं है even मतलब more कुछ gold, and it was just such a snowball. I just think Ash is a big भाई pick, थॉट्स and ऑन maybe साउथ you इंडियन should क्यूजीन consider it instead of Renekton. and the Gragas One other, yeah, that's what I really love wanted it to bring but up in listen that fight. listen Gragas so is look such idli a dosa good everybody pick likes obviously it's against very what mainstream Gen.G want to do. It's able to I split have up never had fights. the Zeus had opportunity an or insane a lot of performance on chances that to pick. It's try something a we lot saw of South Indian earlier, in मेन Swiss, कोर्स and फूड I'm मेरे को so वो happy to खाना है see मैं him लास्ट bring टाइम it जब out बैंगलोर again. गया था ब्रो आई हैड दिस in comparison was फक उसका नाम क्या था I mean, because you remember back to the early game too, आंध्रा the Gragas already showed चिली that Zeus चिकन outplay ओ under भाई tower साहब during the lane अक्षज swap. Got also Owner a बैंगलोर bit में ahead because he was देखो able to get extra camping. ग्रीन King was कलर down की there ग्रेवी taking और damage, चिली so, में बन के वो आया yeah, था really big props to झूठ Zeus नहीं बोलूंगा again मेरे on को the Gragas. I have surprise मेरे video को for you तीखा नहीं because someone's जमता in the crowd who बिल्कुल wasn't नहीं जमता entertained apparently. वो चीज हर I बाइट think पे maybe they should be scared. मेरी They're not. Oh, did I just tease it and suck मार it? रहा था मतलब मेरे आंखों से भी आंसू निकल रहा था और मेरे सब जगह से मतलब बहुत तीखा था वो बट ब्रो उसका टेस्ट उसका टेस्ट मम्मी कसम बता रहा हूँ मुंबई में मैंने इतना ढूंढा ना आंध्रा चिली चिकन वो नहीं मिलता मुंबई में उसका टेस्ट इनक्रेडिबल बैंगलोर में मैंने खाया था अब मेरे को पता नहीं वो साउथ का डिश है कि वो किसी और का डिश है मेरे को नहीं पता बट मैंने बैंगलोर में फर्स्ट टाइम वो खाया इनक्रेडिबल ग्रीन कलर के ग्रेवी में बन के आया था डू यू नो फ्रॉम वेयर यू हैड इट नो ब्रो इट वाज अ लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट 10 years ago so I don't remember but anyway that's what I was saying about South Indian cuisine like मेन कोर्स मैंने बहुत कम खाए हैं और जब आप साउथ इंडियन का पूछ रहे हो आई डोंट वांट टू इंसल्ट साउथ इंडियन cuisine by saying आई लव इडली एंड डोसा नहीं आई नो साउथ इंडियन cuisine इज अ लॉट मोर देन दैट तो मैंने मेन कोर्स बहुत कम चीजें खाई है मैंने वो खाया था केरला परोटा और एक कॉम्बो में खाता था एक रेस्टोरेंट से वो रेस्टोरेंट का मैं नाम भूल गया जब मैं एंटिटी में था मैं रोज मंगाता था नाम भूल गया वो डिश का मैं बट वो मेरे को बहुत पसंद था मेरे को कोकोनट बेस्ड चीजें भी पसंद आती है मतलब आई डोंट माइंड कोकोनट बेस्ड ग्रेवीज कोकोनट बेस्ड चिकन मेरे को पसंद आता है बट मेन कोर्स यार मुंबई में थोड़ा कम मिलता है साउथ इंडियन मतलब आपको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा वो साउथ इंडियन जगह पे मेन कोर्स नहीं मिलता आपको साउथ इंडियन मेरे को वो अच्छे से खाना है मतलब ओपिनियन ऑन बंगाली फूड नेवर ट्राइड सो मच मैंने एक बार ट्राई किया था आई ट्राइड इट फ्रॉम वेरी बैड प्लेस आई डिडंट लाइक इट शैल बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक इट मेरे को याद नहीं मैंने क्या खाया था बट अभी रिसेंटली मैं एक रोल ऑर्डर किया था चिकन कोशा मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को चिकन कोशा आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बंगाली फूड क्योंकि आई स्पोक टू ज़ेरब अबाउट इट एंड ही सेड कि अरे हाँ ये तो आई थिंक चिकन कोशा मेरे को बहुत अच्छा लगा उसके अलावा मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया मेरे को टेस्ट ऑफ कोलकाता में जाना है एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बट मेरे को अभी तक मौका नहीं मिला और सीन ऐसा है कि मेरे को ज्यादा होप नहीं है बंगाली फूड के लिए और क्यों लेट मी एक्सप्लेन ऑफेंड मत होना आर्बर्ट ब्रूइंग कंपनी आंध्रा चिली चिकन हाँ यही नाम था उसका अच्छा तो सुनो वाई मेरे को ज्यादा होप्स नहीं क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट बंगाली क्यूजीन इज वेरी मच सी फूड ओरिएंटेड राइट मतलब चिकन विकन डिशेस चलो होते हैं बट सी फूड एक
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बंगाल के क्यूजीन का। और प्रॉब्लम ये है कि मेरी मॉम गोवन है, मेरी नानी गोवन थी, तो मेरे घर पे मेरी नानी जो फिश बनाती थी, मेरी नानी जो सी फूड बनाती थी, जो मेरे घर पे सी फूड बनता है वो एक बहुत पर्टिकुलर स्टाइल से बनता है। उसके अलावा मेरे को नई सी फूड पसंद आता, उसके अलावा मेरे को सी फूड पसंद नहीं आता। सिर्फ कोंकणी, आई एम नॉट कोंकणी, मैं मदर बिफोर मैरिज कोंकणी, नानी कोंकणी, इरे रे इतना आता है मेरे को। मैं ग्रैंडमा वाज गोवन रूट्स, नॉट मदर गोवन रूट्स, ग्रैंडमा वाज गोवन। तो अच्छा आर यू आर कोंकणी? आई एम नॉट कोंकणी, बट मेरे घर में जो सी फूड बनता है वेरी कोंकणी स्टाइल, मतलब फिश। तो कोंकणी लोग का ऐसा है ना कि मेरे घर में जो फिश बनेगा वही सेम फिश अक्षत के घर में बनेगा, वही सेम फिश दुनिया के कोई और कोंकणी, मतलब एकदम पर्टिकुलर प्रिपरेशन होता है और बहुत सिंपल प्रिपरेशन होता है कोंकणी लोग का। मेरे को उसके अलावा सी फूड मेरे को जमता नहीं है। वो कोकम का कड़ी, सोल कड़ी जो बोलते हैं हम लोग, वो, और वो जो नॉर्मल फ्राइड जो फिश होता है हमारा, जो हमारा करी का टेस्ट होता है, मैं हमारा बोलता हूँ क्योंकि मेरे को, मैं क्लेम कर सकता हूँ कोंकणी खून है मेरे में थोड़ा सा। तो इसके लिए मेरे को बंगाली फूड से ज्यादा होप्स मेरे को है नहीं कि मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि फिश में एक दो तरीके में ही खाता हूँ, मेरे को जमता नहीं। Have you eaten Rajasthani food? Not the very local Rajasthani food. मेरे को पता नहीं है राजस्थान में। अरे भाई अपने एक तो इंडिया में इतनी चीजें हैं भाई, इतने, अभी तुम कुजीन लिस्ट करने जाओ इंडिया में गांडी फट जाएगी। कश्मीरी कुजीन होगा, राजस्थानी होगा, गुजराती होगा, हाँ, केरला का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा भाई। Well, I mean, of course, he's going to pick a lane-dominant AD carry, and the lane swap meta, I debate how effective it is, but the biggest surprise to me is the Kindred coming out from Owner as an answer into the Skarner. That's some shades of 2022. राजस्थानी थाली, राजस्थानी थाली वगैरह तो खाया है मैं। Kindred, and do know, Nidalee this time Caitlyn is around very was not scary. banned. And that is something that Canyon, we saw even in the series against FlyQuest, has very heavily relied upon. But अगर आप लोग फूडीज हो ना गाइस चैट में, सच्ची बता रहा हूँ यार, साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करो कभी, साउथ ईस्ट एशिया, ट्राई ट्रैवलिंग टू साउथ ईस्ट एशिया कोई भी कंट्री में ब्रो, मतलब अमेजिंग फूड है बे एशिया में। मेरे को लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड, इन माय ओपिनियन, रुक आई माइट बी रॉन्ग एंड आई डोंट केयर इफ यू डिसएग्री, बट आई थिंक द वेस्टर्न वर्ल्ड विल नेवर बी एबल टू compete with the kind of food diversity that is in Asia. Never, impossible, there is no contest मेरे हिसाब से। दुनिया में किधर भी चले जाओ, वो पास्ता पुस्ता पिज्जा विज्जा, द फूड डाइवर्सिटी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इंडिया में इतना वास्ट डाइवर्सिटी है, आई एम जस्ट सेइंग इन द एंटायरिटी ऑफ एशिया इन जनरल, जो फूड का डाइवर्सिटी है ना ब्रो, वो वेस्टर्न दुनिया कभी कोप नहीं कर पाएगा, कोप नहीं कर पाएगा कभी। और 9 आउट ऑफ 10 वेस्टर्न लोगों को अपना फूड अच्छा लगता ही है। मैंने बहुत कम लोग देखे जो बोलते नहीं मेरे को इंडियन वो करी नहीं अच्छा नहीं लगा, तंदूरी होता ही नहीं कभी। अपनी फूड डाइवर्सिटी बहुत इनक्रेडिबल है। इसके लिए मेरे को ना, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ नॉट मुंबई, अगर मेरे को कहीं शिफ्ट होना पड़े तो लंदन से ज्यादा मैं फिलीपींस जाकर रहना पसंद करूंगा। फिलीपींस तो और भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा, उधर बहुत कल्चर्स एक साथ रहते हैं वो कंट्री अलग अलग। The Gragas, I do agree with you, Atlas, seems like a no-brainer, but that is not going to get taken away. +1 I know, मतलब पार्थ भाई, you know, like if you have lived in the Western world, अगर Western countries में आप रहे हो, तो इतना limited as food menu होता है ना, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं मिलता वहाँ, इतना limited खाना है वहाँ का, वही 5 dishes, वही हर जगह पे वही 5 चीजें। और वहाँ पे भी तुम लोग अगर देखोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी टेक ओवर, उनका खाना छोड़ के बाकी सब ने टेक ओवर कर लिया। तुम लंदन जाओगे तुमको हर जगह पे डोनर कबाब दिखेगा,
I don't love Maokai as हर जगह an पे तुमको engage, इंडियन just 'cause टेकअवे it's दिखेगा, so हर slow and it's जगह very, पे like, slow कोई नहीं and खाता slow मतलब वहाँ setup-wise. खाना। While it has a big AOE, डाइवर्सिटी it अपनी slows बहुत down. सेक्सी है, कुछ भी Yes. बोलो भाई खाने की। और मेरे को I'm fascinated as to how I'm they're lucky gonna कि round मैं this एशिया grab out. में You're expecting some sort of AP पैदा mage हुआ। to मैं come एशिया through. एशिया इसके लिए कर रहा हूँ, Gen.G ऑब्वियसली kinda इंडिया sticking to मोर, this बट idea of इन diving जनरल मैं बोल with रहा हूँ Ari, एशिया का फूड Kai'Sa. डाइवर्सिटी बहुत Yeah. ज़्यादा है, Give me the Blitzcrank. बहुत ज़्यादा है। मैं फिलीपींस गया था, इतना खाना अलग अलग खाना, मतलब मैं रोज एक नया डिश खा सकता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, इतना खाना है। full dive into Bron, Kindred and Maokai. मैं इंडिया में अगर मैंने रोज डिसाइड किया कि एक अलग डिश खाऊंगा एवरी सिंगल डे, आई थिंक आई कैन ईट समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। have been very predictable in how they have drafted and the यूके में फिश एंड priorities चिप्स that खाए थे, they've, इट वाज सो बैड। ओके फिश एंड चिप्स, सी इन द डिफेंस आई हैव ईटन फिश एंड चिप्स आल्सो, अच्छा है, अच्छे जगह से खाओगे तो विनेगर और सॉल्ट डाल के तो देते हैं, अच्छा है, अच्छा बनाते हो, अच्छा डिश है, बट क्या है मतलब बोरिंग एज फक बे, क्या है वो खाने में, क्या है वो, मतलब यूके का खाना है वो, फिश एंड चिप्स क्या है, बैटर फ्राइड फिश और फ्रेंच फ्राइज, इतना बोरिंग मैन, Yesterday match between Madrid and Barcelona was pure example of what a good manager can do to the team. Same for Team Soul. Guys, look, I'll be very honest today. If the team is playing well, give the credit to the players and the coach and the analyst. Okay? My job is to make sure कि वो लोग गिरते नहीं है। मेरे को मेरा काम है उनको एक जगह पे पकड़ के रखना। बात समझो, उठाने का काम मेरा नहीं है क्योंकि मैं उठा नहीं सकता, मेरे को नहीं आता उठाना, उनको गेम ज्यादा समझ में आता है, उठाते वो है मेरा कोच और मेरा एनालिस्ट और मेरा आईजी। मेरा काम है कि बस मैं उनको एक सर्टेन लेवल से गिरने ना दूं। अगर मेरे को लगे कि उसके नीचे गिर रहे तो मैं चीजें चेंज करता हूँ। उठाने का काम उनका है। तो जब अच्छी परफॉर्मेंस आती है जाके उनको प्यार दिया करो, उनके इंस्टा पे, उनके यूट्यूब पे, बहुत सिंपल चीज है वो। मैं उठाने का काम नहीं करता, उठाने का काम वो करते हैं, मैं बस गिरने नहीं देता। I don't know मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, but I hope you understand. Are you vegetarian, non-veg? I'm non-vegetarian. I think that once again, T1 are coming out of a draft looking really, really good. And this To be time precise, it's on about the red 31 dishes side. defined the Gen.G Indian cuisine. and According to Gen.G scientists, fans they might need to start have getting examined more than nervous. 2,000 Indian dishes in a common thread, But it is now being the most diverse style of food. Bro, Asian see whether food they can is put their money where their mouth is. So we jump into और game 2. इंडियन फूड तो मतलब ग्लोबली लोग पसंद करते हैं। इट इज अ फकिंग शेम, सॉरी मैच चालू हो गया, थोड़ा मैच का भी बातें करेंगे, बट इट इज अ फकिंग शेम कि जो इंडिया को हेट मिलता है ना आजकल सोशल मीडिया पे क्लेनलीनेस और ये और वो के ऊपर, it is a shame क्योंकि thank you that is a horrifying thing to have to face check into, and the problem क्योंकि is that even if Gen.G is first दुनिया में किधर भी जाओ जाओ बाबा सिर्फ इंडियन फूड चलता है, सिर्फ। तुमको पता है यूके में मैं जब रहता था ना, वहाँ पे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन लोग रेस्टोरेंट्स खोलते थे, उसको नाम देते थे इंडियन फूड। और फिर मैंने एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों, तो लोग बोलते कि हम लोग अगर लिखेंगे ना ऊपर पाकिस्तानी फूड या श्रीलंकन फूड, कोई आता नहीं है रेस्टोरेंट। Really good laning phase for starters. Did go, by the way, Gen.G loves the resolve tree, as we can see. I mean, Chovy just loves grass. और ये सेम चीज कनाडा में भी है, यूएस में भी है। इंडियन फूड इज इनक्रेडिबल, बट जो हेट अपने को मिलता है ना, मेरे को पता नहीं क्यों मिलता है भाई, पता नहीं क्यों मिलता है अपने को हेट इतना भाई। ये भाई तुम गरीब एरियाज में जाओगे, गरीब एरियाज में कौन सा हाइजीन होता है बेंच। अगर मेरे को 10 रुपए का चिकन खाना है तो मेरे को मादर चोद ग्लव से तो बना के नहीं देगा ना बंदा भाई। मतलब यार गुस्सा आता है मेरे को इस चीज का। और गंदी गंदी जगह पे मैं खाया हूँ। हम लोग है ना, क्या है वो वीक खून वाले नहीं है हम, कि थोड़ा सा कुछ खा लेते तो हमको ये हो जाता है लूज मोशन और ये और वो, पानी पीते तो बीमार पड़ जाते हैं हम, थोड़ा सा खून हमारा स्ट्रांग है। तो पता नहीं यार गुस्सा आता है मेरे को ना कभी कभी रिप्लाई करने का, बट क्या कर सकते हो, बॉट अकाउंट्स होते हैं एक तो, और आजकल एल्गोरिथम ही ऐसा चल रहा है कि इंडिया को हेट तो तुमको रीच मिलेगा। यही है रेसिज्म, हेट जो भी है, मतलब एल्गोरिथम में वैसे चल रहा है आजकल। आपकी इज्जत कभी नहीं गिर सकती। थैंक यू। अबे यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, to Canyon, and they'll take some plates to boot because Zeus now finds himself in a whole मेरे को एक genuine question मिला, आंसर करो। Twisted advance to try and outplay some stuff. That arcane smash was pretty good, or the bramble smash as it's known now. As Canyon underneath this turret has to flash, he's able to dodge the turret shot. भाई क्या dodge कर रहे हैं लोग, crazy, oh fuck! Somehow they navigate
Crazy. Game number 1, the dive मेरे को बताओ, disaster. Game number 2 puts Gen.G back on the right ये track. गांड को हाथ साफ करने वाले लोग हमको क्यों जज करते हैं जब हम हाथ से खाना खाते हैं? मेरे को बड़ा जेन्युइन सवाल है. देखो, no offense. Execution from Gen.G. They No punish the rotation from Carrier. They get him before he gets level 2, and then they manage the tower aggro phenomenally. This is the Gen.G we were expecting. भाई मैं लंदन में गया था जब मैं स्टार्टिंग में था. Wiping your ass with a tissue paper is one of the most disgusting things you can do. The script is written for how fights are going to go later on in the game, and it's not very fun. Disgusting things अगर आप इंडिया के बाहर गए हो and you have had to use a tissue paper to wipe your ass. Canyon It is disgusting. in terms of camps is the biggest downside for Gen.G. वो लोग You'll notice हमको that he's on कैसे managing to hit get दे through सकते his भाई? box. Oh, flash once again from Carrier. I say again. तुमने I ट्राई mean, he किया didn't कभी get a कोई chance to नया नया flash गया earlier. इंडिया के बाहर? But Canyon putting pressure down, I should say, onto Carrier once again. As Faker going to be zoned away from what 7 farm से he can. 8 He's पेपर doing pretty लगते हैं good साफ job so करने far को in और the उसके mid-lane बाद भी ठीक matchup. से साफ But at नहीं the होता. bottom of your screen, it's a मम्मी को suave कसम बता shade रहा हूँ. of blue. It is indeed. Gen.G finding a bunch of advantages. Excellent use और of the उसमें word पता है वो suave टिश्यू as पेपर को well. फ्लश नहीं Speaking of करते. which, so was that बाजू में just escape from Canyon. गार्बेज के अंदर डालते हैं. Canyon, one of the most often heard pieces of criticism for this player, वो कैसे जज which करते also हैं बे? ties into his strength, which is mid to late game impact and carry performances, is that he's not doing enough. Anyway, I think match this game देखते. he's overcompensating a little bit. Before- Still sitting at 16 CS, but because the This because is a the good early draft, kill, Akshat. once Is he picks up your his camps that team are going to be going with a better his level, draft, should Akshat? be able to very quickly catch back up in experience. And when it comes to the gold, he is still doing fine. Now this early gold lead for Gen.G, a मजा आ गया भाई. necessity, but good to see nonetheless. बुर्जी पाव is my With how comfort game food. number Comfort food. 1 played out, it Wow. felt like Gen.G was on track for what we've seen them do so many times, and T1 really threw them off. And I will draw attention to our viewers who aren't as familiar with our format. Overlay, I should say. You can keep track of the kindred stacks on the right-hand side of your screen. You can see that underneath the flash. And same for any of the stacking champions, which we don't have in this game. But, yeah, Smolder was banned. Yeah. Owner actually doing a decent job if we're going to compare kindred performances. ये that we've भाई seen सच है this इतना world. एडवांस I think कंटेंट he टिश्यू is भाई मेरे को 13 समझ ही नहीं minutes आता. earlier सबसे on his, डिस्गस्टिंग first चीज है. mark, which is pretty और cool. भाई देखो. Yeah, not bad. And Not bad Shu at didn't all. even need that to win the game. So Hygiene वाइजीन की बात मत overrated. करो. Yeah, we are really ठीक है, एक और snowballed point मैं आप लोग को on बोलता हूँ. Fox. If he keeps जब मैं this one छोटा up, था. it could be Relatively completely speaking. ridiculous. Yeah, exactly. Now, और Pace मैं has घर वालों से transitioned छुप के to वीडियोस top देखता side था. of the Rift. Guma's actually been moved over तब to मैंने mid. देखा हुआ है आप Zeus लोग does क्या not क्या have चीजें the चाटते TP हो available. जो. Faker has CP to top. I wonder if T1 is going to try and contest these grubs, but Faker setting up a trap. Yeah. मत करो ना मतलब Got Owner जज. moving on over as well. Does get seen on that control. और टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद तुम लोग करते हो. Has to use the ulti. Chainstone land because मत the करो ना flash मतलब मैं has to समझ come ना out, मतलब and क्या Pace is मतलब gonna help समझ ना. now with these grubs, but that is not a lot of extra power here for Gen.G. Losing that flash really important. Pace staying alive is crucial there. Otherwise, if they get that kill, T1 can then immediately collapse. You saw the rest of the members actually making their way over, but instead it's a हमारे big hygiene win की for बातें कर रहे Gen.G. हो. They get the grubs, and as mentioned, the Maokai is always going to have a lot of impact as Faker. Yeah, could be in some trouble here as Lahan's moving on over, finds a shattering strike. कोई बात नहीं फेकर, कोई बात नहीं. You're still my god, baby. You're still my god, baby. There to meet him. Faker now trying to change Still my positions, god. but the plasma is stacked, and Paze is going to get some revenge. And Lahan's to reposition there to deny the ability for Faker to ult out with that Kaisa ult. And on top of that, Canyon using his E not onto Faker, but in Please his लेने flash टॉपिक और path, खाने में दाल meaning that मखनी he had nowhere बनाए to खाने go. डाला था. Nice collapse from Gen.G. And they मैं तो funneled खाते that खाते बात कर kill रहा हूँ, मेरे को onto नहीं फर्क Paze, पड़ता है सब. crucially to get him further and further ahead. 2-0-0 now for the Kaiser, an 800 gold lead for him. अबे गुस्सा आता है भाई जब डिलीट इंडिया वगैरह के कमेंट्स दिखते हैं ना इंस्टा पे. मजाक से हट के खून तो खोलता है भाई. भाई मैं भी गया हूँ बाहर, मैंने भी गरीबी देखी है, मेरे को भी पता है. Very clearly been Lahenza's खून तो impact खोलता in है. game 1 versus game 2, and then the inverse, Carrier on the Braum. It's just not really the same type of champion. Lahan's possibly looking for a little bit more here, but Will it go 3-2? I think it will go the AD carries that now 3-2. actually have I'm some allowed- levels in them, as we can see here. I don't think Gen.G will die without a fight. Towards the bottom side of the map, Zayas could be in trouble. Canyon, once again, just lawn mowing his way over. Owner going to get caught by the brambles. Actually not.
because of course there's aces. I'm getting confused. Should be a jungler that has that ability. Kane jumping 3-1, back. you think I don't know 3-1? about that one, but he has I the don't know. mana strike. Zeus now looking for an opportunity here, but Kane looks like he's out. Canyon now the one moving forward, but Owner is continuing these orders. The dance of arrows can get him in range as they get the bramble smash to slow Canyon down. Impale's going to be dodged beautifully. Counter-strike for the stun. Canyon on about 1 health, and Owner cannot dive the turret. Not even close. Canyon holds on to his flash and make sure that he keeps that summoner available, but what an almost turn from T1. There seemed to be a bit of indecision on the side of Gen.G about whether or No, I not think it's they racist, wanted but we to also commit as to the Indians need play. to understand the But concept then of when they hygiene. If finally you have 2 good decided points to, about us, there Owner are was 100 like, negative. "Alright, We refuse to fine, keep our let's society take clean. this 2 versus 2, and you I saw agree. the power of the Kindred I'm not saying early on in the skirmishes. जैसे मैं No kill रास्ते ends पे up चल रहा हूँ, मैंने dropping कैडबरी for खाई ना either तो रैपर side, निकाल के मेरे को and हमेशा King's आते थे able मैं to अपने catch जेब this में रखता massive हूँ. top wave as well. In the picture मैं in उसको नहीं picture, फेंकता जब तक also, मेरे को है you were मेरे दिमाग distracted में. by what was I happening, agree. But Chovy actually forced But Faker's flash. ये वाली चीज I imagine went for हर defensive ult play, got that summoner बंदे के लिए out, and that एप्लीकेबल does होती है mean मेरे that हिसाब से. T1 मेरा पॉइंट ये है for कि जो possible सोशल मीडिया पे contest on दिखाते हैं these ना grubs, trying to रास्ते deny का the खाना Jack 6 हाथ grub से बना definitely रहे something that you want to do, मैं but बड़ा हुआ two वो खा के crucial summoners now no मेरे को लर्न longer फर्क gonna नहीं be पड़ा available. Keen also had और to मेरा invest अगर his कल उठ के flash, बच्चा हुआ और वो बोला कि but मेरे को Canyon पानी पूरी still खाना has है his. तो मेरे को लर्न फर्क नहीं पड़ेगा मैं उसको एसएससी के मैं नहीं लेके जाऊंगा जहाँ पे क्लब से पानी पूरी बनती है मेरे को चलेगा अगर उसको कोई हाथ डुबा के पानी पूरी खिला रहा है ये मैं बता रहा हूँ बस ये मेरा ओपिनियन है मैं बड़ा वैसा हुआ हूँ यार मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उसके वजह से मैं ट्रैवल करता तो मेरे चोचले नहीं होते कि मेरे को यही खाना है और यही पानी पीना है नहीं मैं कुछ भी खा सकता हूँ मैं कुछ भी पी सकता हूँ First Dragon certainly going to help out with that. Next one going to be an Infernal. And Gen.G just have to keep their foot on the gas. I mean, I think it's important to realize that kind of on paper, Gen.G's comp is easier to execute because it's just go forward. Yeah. Right? Press Go in R, and चलेगा engage. मैं मर तो नहीं गया ना T1 in the fights. We talked about all these अनहाइजीनिक tools स्ट्रीट that फूड they खा के have, इंडिया का but मर तो नहीं गया ना execution is key. जिंदा हूँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ Backwards, leveraging your range, being able to चाइना गया फिलीपीन क्या हर जगह मैंने all of दुनिया the में ट्रैवल engagements किया he's है gonna मम्मी have. कसम बता रहा So हूँ if they get a मैं lead, इतने it स्पोर्ट्स becomes प्लेयर even का गया हूँ harder to do that. इनफैक्ट हमारा And it पुराना becomes रोस्टर even भी more जब गया था dominating when साउदी Gen.G is just forcing ये all नहीं of खा these सकता मैं plays. वो नहीं खा Yeah, the सकता fact मेरे that को 2 लर्न out of फर्क 3 नहीं पड़ता kills भाई जो are अवेलेबल है on मैं phase खाता as हूँ well is something that could be फर्क ही नहीं worrying पड़ा because कभी लाइफ में yes, there's a range advantage for T1, but that reposition from the Killer Instinct can really allow Gen.G, if Pays is really strong in this game, to just clean up any situation where they can get a foothold. So things could go from bad to Did you worse know very, Mumbai very some quickly. curriculum That's getting ahead of includes no ourselves, sleeping though. on the Let's job, have a look no at how this spitting. mid-game is Man, going to we unfold on as Tuesday. already Canyon getting to work, Finishing trying to and lock knocking down up at 6 10 of PM. these grubs. On vision right now, but we can see there's Kindred in the bottom lane. So it's not likely that a contest is going to work out. And this all comes from Chovy's prio in mid. This time Anyway. around actually is able to have that very Even aggressive Umayashi laning को देखे. phase. And Faker just has to catch the wave, so I think T1 make the right call. Don't try to fight that. Instead, try to look for the cross map. Gen.G with Pays and Lands arriving will be fine. Also want to highlight Owner now on 2 marks, found one on the grump in top sides. But Owner, who I think was by far the most consistent member of T1 in summer, had a little bit of a dip in playoffs, but then has been exceptional once again. When you think of his best champions, they're champions with really high impact, but not necessarily the carries, right? It's the Vi moments, it's the Rel from last year. You have to cast your mind back a very long way, right? It was when he was making his names on picks like Graves that you really remember him being able to carry from the jungle role. It's not something he's a stranger to. Maybe something he's a bit rusty on. It's just तुम ऐसे ऐसे जगहों पे जाओगे जहाँ पे इंडिया का रिक्शा वाला खाता है या बस ड्राइवर खाता है कंडक्टर खाता है या डेली वेज लेबरर खाता है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई वहाँ पे क्या बिस्लरी से वो ग्लास में तुमको वाटर करेगा नहीं ना मतलब मेरा पॉइंट वो है तुम ताज में जाके तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे ना कि हाइजीन नहीं है उधर तो मिलेगी हाइजीन बट तुम वहाँ पे जाओगे जहाँ पे इंडिया का मतलब थोड़ा सा लोअर क्लास या वर्किंग क्लास जाके अगर खा रहे हैं difference from what we normally see from them, and while we didn't see the best उधर version तो of थोड़ा Gen.G in होगा game ना यार one, you मतलब have to wonder if T1 also trying something different out on the red उनको भी side क्या to फर्क see if पड़ता है they मेरे can को नहीं catch फर्क Gen.G पड़ा off उनको guard. क्या फर्क So far पड़ता in है the यार early game, Gen.G have been outperforming them in terms of the lane swap and punishing them on the side lanes. We'll see how things transition as we get into the mid game and these objectives become more important. Yep, I think Gumiyushi's positioning going to be extremely important, and the way Owner plays around the rest of his team to try कोई and कैरेक्टर वन maximize शॉट किल these करता है marks. इसमें Should हाँ up to 4 हाँ stacks केटलिन कर of सकती the है वन Kindred शॉट mark in 28 minutes थोड़े and टाइम में 42 seconds. आइटम्स See के whether साथ Owner can बहुत लोग हैं जो get a वन bit शॉट higher कर than that, सकते because it's the हैं next अगर few that उतना are gonna be बिल्ड the होगा most तो अगर important. Of course, परफेक्टली अपने remember, स्किल guys, यूज 4 किए तो stacks on your Kindred marks, that's when you get the big old range boost and you're feeling really good about it. But Gen.G right now utilizing 6 grubs भाई आप तो to इतना कंट्री smash down स्टार्ट this हुआ turret. It's not a race this time. आप ही बोलो कि सिर्फ इंडिया में T1 एनर्जी just खाना है didn't बाकी even कंट्रीज में really भी तो start.
है, It's मैं also ट्रैवल the वॉकर के biggest वीडियो में boost, देखता and हूँ. it's the only one that is actually essential. भाई मैं वही तो मैं बता रहा हूँ. Nice, but yeah. मैं फिलीपींस गया हूँ. फिलीपींस के गरीब एरियाज अगर मैंने आपको दिखा दिए ना, कि आप जाके देख के आओ, आप बोलोगे व्हाट द फक. एक सेकंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. आपको पता है फिलीपींस में एक बहुत पॉपुलर डिश है, पता है बनती कैसे है? I like the aggression there from Gen.G. रोज सुबह को उनके Thanks to Ona's ultimate is able to get him away to safety. उनके स्पेसिफिक लोग होते हैं जो जाते हैं, जो गार्बेज में से बचा हुआ चिकन विकन निकालते हैं. उनके गार्बेज में हड्डी खाया हुआ जो पूरा जमा करके फिर उसका वापस चिकन बनता है, उसका करी बनता है और बिकता है गरीब एरियाज में, बहुत गरीब एरियाज में. And then they converted it into an easy objective setup. सर्च करो इस चीज को, इस चीज को गूगल पे सर्च करो, फिलीपींस में बहुत फेमस है. इस चीज को तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो. उसको जमा करके वापस पका के उसको बेचते हैं वो लोग एकदम गरीब एरिया में. तो भाई बहन तो जज थोड़ी करोगे उस चीज को भाई. नहीं अफोर्ड कर सकते ना वो लोग KFC का चिकन खाना रोज. A large proponent of where the damage is going to come उसका from तो वीडियो in नहीं this देखे game मैंने. from T1. हाइजीन किधर है क्या As है? that range increases, his What? lethality उज्ज्वल will भाई increase गूगल as well. करके Not देखो. the stat, just in general. गूगल करो इस It's चीज an को. awkward word to use in League of Legends. I apologize, but that's going to be Rift Herald going on over to Gen.G as Legit well. A monopoly on these objectives garbage so far. को वो In लोग this game, his छाटते carry हैं. is flashing on over. Lehens could be in trouble. Shattering strike going to hold him in place. As Faker wants to be able to get a piece of this. He's not going to get the kill. और उसमें That's से going to go to Ona. जो चिकन हड्डियाँ As जो भी मिलता है उसमें से T1 खाना managed to बनता है. get their first kill of the game. Really nicely done Why there don't by you try some T1. food So please, like RL Gen.G restaurant started food up the Herald. teams. There's a hold that fought. I could, yeah, I really want to. I'm really passionate about food Yeah, items. throwing down the I am, nation's I grasp, honestly looking am. to try and catch them in place. Me and But my Gen.G, brother they both, just but I don't know. They just Like food the blogger to वगैरह the इतने हैं. I like the approach. I don't know if it will work or not, but I am genuinely very but T1 there passionate identified they about can't really food. fight for the Very Herald. passionate. And Chovy मेरे was को alone cook in करना bot नहीं lane, आता. so they बस read the play. Lahen's actually trying to cover for Chovy, but gets caught मैं ये मानता हूँ mid-rotation. कि It's going to क्या be चाहिए? the Grubs and the Herald going over the Gen.G, Knock- but the knock second किया dragon था of the game. Oh, okay. He just wanders on in Knock there. किया, He'll दरवाजा flash स्टीम away, करना ना. so they at least get that. Faker also का क्या taking the करूँ? outer turret on the bottom नाम side, बाहर but that is किसका so big. And now it's खाना क्यों नहीं खा Hextech सकता? Soul मेरा stream चल this रहा है. game. Ona didn't क्या have दिए? smite, and the only way that Canyon knew was because he saw the W from Hayes go over the wall. He saw the HP. It didn't get smited, and so he's like, wait. I think there's an angle Something's here. fishy. Yeah, and so he just went for it. Beautiful play from Canyon. Great read from him. The Herald gets dropped in mid. And the player that we haven't talked about, but is getting monstrously scary, Connect होगा. is Keen in the top lane. He secured a full tower on the top side, uncontested. He's almost got a 1k gold lead. That Trinity Force is on the horizon. And we talked about it in the draft, right? Into double AD carry, even into a Silas. तुम मैच This देखो Jax स्टील is हुआ. not अरे really going to यार be afraid of anyone on the side lane. The Maokai is just going to do his best Shit. to hold him off. क्या स्टील हुआ? It's going to be about how well T1 just अरे यार. holds Keen at bay and tries to... Is and the player beautiful smited. He saw. Oh, so taking the... He just won. And the Herald going over the Gen.G, but the second dragon of the game. Oh my god! In game number 1, T1 found the one Let's way of the go! barrel, and it was a weird moment because it felt like Gen.G was aware of it, yet still underestimated it. It brought them back in the game, and I think they're going to need a लेकिन similar क्या moment feedback here. क्यों इंडिया Because, टारगेट है? as mentioned, Algorithm this composition बना is हुआ है really वैसा going भी. to Honestly struggle as बता long रहा as हूँ. Gen.G has that map control. Gen.G is now the one तुमको that keeps try shoving करना है out the ना? waves, keep Twitter पे having नया trial account on बनाओ the कल. vision, and और इंडिया को it गाली is डालो और quite देखो hard उसको for क्या T1 reach to मिलेगा. find a good snap engage. They have a ton of CC once you actually get on top of them. पक पक but बोलते you हैं उसको. don't Yes, have पक something पक. like Yes. the Rel, like पक the पक Leona, Google like करो. the Vi to पक really पक. start of a team fight when Gen.G isn't ready. Well, we talked about how इतना Gen.G, खाई if रहे they हो start तो off an मेरे weak. objective, T1 actually have a lot of ways to gain access हाँ onto वो भी the होगा objective, फिर even if मुंबई they don't have the में best वो तो engage, probably. simply due to the fact that they have a Caitlyn I could, plus yeah, the I could. I don't know if ultimate. it'll work or But not, but I ideally, think they're I on should. the objective first. They have position with the Caitlyn trap. Like me and my They're brother forcing are the enemy genuine to face fucking check into foodies their here. roam, We into their love saplings. food. But T1 are never being given that opportunity thanks to how well Gen.G is snowballing this early game. They have a 3k Idea तो gold बुरा lead. मतलब They're कर तो playing around सकते their हैं यार. sidelines incredibly well. They've got a 4-1 setup right now. But Vegas आलसी in का top बात नहीं है. lane मैं catching सोचता another हूँ wave. And Gen.G are इतने just खाना खाने वाले very ब्लॉगर्स हैं. मैं क्या ही ऐसा methodically अलग करूँगा suffocating ऐसा T1 out of the सोचता हूँ मैं. Yep, pulling them around as you can see, But moving मेरे up को towards the genuinely Skinner खाना turret बहुत in the पसंद mid है. lane. Ace in the hole does go down, fair bit of damage onto तो Lehens. fight Decent हो रहा. knock up there, but Carrier had to invest the सब लोग ultimate इतना just to get them away from this turret. It's just Gen.G trading up at this point in the game. Gen.G ये गेम जीत रहा है मेरे को लग रहा है. Gen.G अच्छा खेल रहा है. Stands though. Main Group game thing में इन्हों for बोल नहीं T1 सकते.
is to not lose too much मेरे को लगता है of that Gen.G game map जीत control. जाएगा. You see them still moving around as a 5-man unit, maybe looking for some stragglers. Looking at the item मेरे को लगता है ये finishes गेम though, Gen.G जीत रहा है. because of the gold leads afforded to Gen.G. I will Pace support you every already time, on every 2 video, items, everything. and let's Monitoring not not forget yes, this but yes, Kaisa. every time possible. It's only going to get worse from free items onwards. Bro, When you get your revolves, when look, you're able money- to be a threat money both as वाली a बात poke ही मत करो champion यार. as well as ऐसा when कुछ you नहीं है dive कि कोई into मेरे the को back पैसा line. दे रहा है As तो I you remember him more. mentioned, Like that he every actually one of you figures out there's counts. a small So window where the Mao money guys वाला like बात tanky नहीं है. Yes, enough money to kind of helps. deal with the jacks. Sure. But Money once helps for Triforce sure, is done, but ऐसा कुछ it नहीं gets a है. whole lot harder. Just to being on my And in a stream team also fight, he'll helps. be able to, You but in the talking to side me lane, also helps. getting to match is going to be very, very hard. ऐसा And कुछ we कभी need to talk सोचो about our मत. Money Mercedes-Benz is featured okay matchup. यार. You mentioned it already on the Pays side, but It's Gumyushi just is a about different to type hit of that love. trough. This is where he's But going to it's have to still dig love. deep and make sure he continues on that streak Love of is his, love. because Infinity Edge is necessary. That 2-item spike, it feels better than it used ऐसा to, कुछ नहीं है but कि definitely मतलब wants 3 items, 4 items, नहीं needs है. armor penetration, Infinity Edge. तुमको क्या and लगता है then कि he feels 5 a बाई whole कल lot मेरे को better. $400 It doesn't दिए get तो मैं better उससे all ज़्यादा that प्यार soon करता हूँ. here for T1 in this game. What you see हाँ. that T1 Yes, have been in this but position before. They're trying to look for these small catches inside. As will I Zayas give him could be in big trouble priority here. over his Does have a super sapling in position. Actually, but chat that over was reading enough your damage. comment? Yeah, not going to actually spot him. So yeah, Canyon Yes, versus also Zayas will yes, take a while, but to say the least. also yes, but Now, T1, I wonder if they even feel strong enough to contest the next dragon. They're setting up on the top side of the map. Vision is spotting them out completely. His owner is walking over wards right now. Going to clear those out. Chovy respects the fact that he is on the weak side of the map as Lahens makes his way up towards the top side. Keen continues to push in the bot Wow, lane. Gen.G is It playing looks like amazing. he's heading towards a Starak second, which to me, that's kind of the break point for Jax when he's got the Trinity Force and the Staraks. He just becomes this really मजाक कर difficult रहा to हूँ यार, kill मजाक bruiser. कर रहा हूँ यार. And I was actually going to say, if this was the Infinity Edge back for Gumyushi, then यार maybe मनी there's an हेल्प मतलब देखो opportunity झूठ नहीं somewhere. बोलूंगा मनी It's हेल्प not बट quite ऐसा there, कुछ नहीं sitting होता on the हमारे pickaxe and the BF हमारे swords. The Baron क्रिएटर्स के is दिमाग about में to spawn. एटलीस्ट 10 seconds मैं until जितने that लोगों को dragon जानता हूँ is उनके good दिमाग में तो sidestep नहीं there है. from Lahens. But it does help. I'm not gonna lie. This is Gen.G dealing with the fallout. But अगर regularly मैं आपसे बात कर रहा तो मेरे को आप याद रहोगे. Control set up as they are Not heading treat every towards Nicholas this is front nice. dragon. This time Good around, man. no opportunity. And T1's Baron damage is so much worse. Last time they had an incredibly quick Baron. This time that's not really going to be the case. Yep. T1 not going to be able to get on over there. I think as soon as everyone saw that those timers were matched up, they were like, oh, T1's going to try for it. Gen.G, of course, saw as well, and so they're able to stop that one from happening, only investing the limited resources to lock down Soul Point for भाई themselves. Kindred Winter देख के मजा आता है यार, monopoly मतलब on the नए नए neutral टर्म्स देख के objectives, ना, and मतलब this is नया तो नहीं बट really looking good for Gen.G कुछ here नहीं. in game number 2. तुम सीरीज चालू करो, I will find good places for you daily and every week and rock that content. This is small. अरे places तो हमको ही पता है, मतलब मेरे को इतने places पे तुम नाम लो. Both of these teams showcase through game 1 and game 2. I will take anything बोल how दो. important the मतलब early game can क्या बोल be, रहे हो? I will and take how anything बोल दो. I effectively will you take can anything. snowball from that point, समझा नहीं depending मैं. on the strengths of your champions. Because both अभी आप ही की teams बात कर रहा था पांच have बार में, throughout this just अभी series 2 मिनट पहले. demonstrated an effective way of how to play Just through 2 that minutes strength and snowball effectively. It's been a beauty to watch. It is a low-kill game, but the map control, the decisions that Gen.G have made, the tactical decisions and the execution has been near flawless, and it's resulted in a 3k gold lead 20 minutes in. Many have credited फूड का तो कर सकता हूँ यार, मैं genuinely कर सकता हूँ. मेरे को दिल से खाना one of पसंद है. the original reasons why Vision in League of Legends got changed. और मैं आपको For हर exactly these cuisine type के of लिए games, एक-एक if you ऐसा think the restaurant map is lit up now, बता सकता हूँ, आप पागल हो जाओगे. watch them all हर go. I mean, रेस्टोरेंट, Europe, हर it's cuisine very के लिए जो fond चाहिए of when they पूछो nerf that. मुंबई में. Okay, एक-एक अच्छा रेस्टोरेंट बताऊंगा Yeah, तुम्हें. let's have a conversation about control wards and how much मेरा they bought and personal stuff like suggestion. that. I think that's a good idea. And knowing T1, what ये they're वाला gonna मैच look तो for Gen.G जीत गई है, now is a 100%. quote-unquote, oh no, someone's caught in the side lane, followed by an immediate fight and an immediate collapse. They have dispatched of many teams when they were feeling like they were in a position of power. The problem is that generally Gen.G doesn't really bite. They just let you play it out, keep Best their biryani in patience. Mumbai. It's the way they Biryani love to is not a play, cuisine. particularly when they are looking Biryani great is on not their a cuisine, carries, the like fuck? in this game. Crucially, T1's waiting for those spikes. Cuisine बोलो. I believe Guma's about 200 मुंबई का बेस्ट खाना क्या gold बोलोगे? off. मुंबई का So बेस्ट खाना he ऐसे needs कैसे another बोलूँगा? wave. He's waiting for that wave to be pushed My in. personal The question favorite is, can he- place well, he's going to get it in time. overall because the in next Mumbai dragon's in is 3 a place minutes, called and I Yauta. feel like If you are in Gen.G's not Mumbai, the time please to go. just sporadically force this Baron Southeast out. I Asian mean, they cuisine, could. It's a great win for them incredible. to do it, but Very Malignance simple, is almost done for Chovy. fine I dine, imagine but he wants not to get very that finished expensive. before
before anything comes through. The Sun and Sky actually going to be the Incredible animation food. from Keen, also something we've been seeing from him. And then it goes into the Zonya's third, which is also a very effective tool. So a lot of damage for this Jax in the side Kolhapuri. lane. Does Kolhapuri, Kolhapur में जाओ.
So मुंबई का कुछ Just like नहीं a बोला 1v1 build. कोल्हापुरी वगैरह क्वेश्चन पूछ रहे हो For that Sterek. So स्पेनिश also पूछो big mode मैक्सिकन easy पूछो carry builds. कोल्हापुरी Yes. कोल्हापुर जाके खाओ And there is a couple of those. So Yes. it's got some options. It's also the अरे आप मनी the वाली role बात kinda कर रहे थे changes, उस पे 'cause बोला in कि मेरे को longer भी fights, गाली if दे you विल can टेक get अरे the नहीं नहीं proc ऐसे of नहीं the है multiple Thunder times. Sky on multiple people, it actually वो adds to your tension stim. नहीं। As you're saying that if he does get focused with Sterix, you can get away from some जापान में दिल्ली really, दरबार जा really चुका हूँ लकी rough रेस्टोरेंट जा चुका हूँ situations. पर्शियन दरबार तो हर Really जगह gonna पे have जा the चुका हूँ same बोरेली बिरयानी सेंटर level मेरे घर of के बाजू में playmaking as the Brandwin's now जा done चुका हूँ for Canyon. Gonna get Good so purchase, much value out of that steel caps on him as well. And I can guarantee you, Faker is not really interested in trying to kill a Skarner. But for the 80 carries, it's going to be quite tough. I think Pays might be mega close to his देखो Nashes. Does he have it? इनको थाई कुजीन खाना है Pretty close is now Carrier gonna have to flash. Get out of the way of ठीक है नाम Canyon. भूल गया मैं All right, He's driving with a purpose, and that could be important moving forward because we know that Carrier loves to play engage Braum. We don't like Yeah, looking Naru, at it Naru. necessarily, not but great. now without Flash, he's Mumbai. definitely not going to be able to utilize it. So Gen.G, they Japanese have so खाना है much control पूरा को of the tempo Nothing of this better. game. As Lahan's gonna have to बट crash उधर away टेबल from नहीं this मिलता one. लास्ट T1 मिनट just पे तो attempting टेबल to नहीं bully मिलेगा them तुम out of कॉल the करोगे river. उसके बाद तुमको Canyon जाना है moves on over कोफू and says no. Item-wise, we're about as Spanish good as we're खाना gonna get, right? Both these teams should sit there and say, नाम all भूल right, गया उसका Kuma would love आशु को another याद item. होगा He's not getting it. The Soul is अमेरिकन spawning in क्यूजीन about a क्या है minute's time. अमेरिकन There will be क्यूजीन nothing that he क्या can buy है in that window to be able to कुछ नहीं है really be much stronger. T1's not buying अमेरिकन it. क्यूजीन What कुछ is नहीं है Zeus They're like, up to? you're not going for this. Well, we'll see what they can Sushi actually get अच्छा done होता है here क्या? as it's going to be Carrier blowing Yeah. up like a balloon. They were not. Yeah. They were not doing it. No. Sushi they मेरे did not हिसाब से want to. like And you now either Gen.G love it or might you be hate able to it. just head over towards this Baron and मेरे try को and बहुत take that अच्छा one down. लगता है Chovy still with that Spirit Rush running. But it's Faker like- able to dodge out of the way. या तो तुमको प्यार है उससे या Oh तो God, हेट this है flank angle is वैसा। absolutely terrifying. Of course, all of the things about T1's team T1 fight need to still win one. kinda I think stand, no, but without Gen.G has the taken this Braum, game. That's a big This piece game of is that over. puzzle missing. We'll see what they're able to do here as the nature is Chinese grasping. Yautja. What do Does Yautja? manage to stun up Canyon. He can get over that wall pretty comfortably as now they've just singled out Zeus. So much By the way, damage, just so you know, the kill. And T1 they had the Chainese trap set cuisine up, जो but तुम लोग Gen.G इंडिया में got खाते हो through there. कहीं पे भी तुम As लोग को now एक्चुअल Ono चाइनीज trying नहीं to मिलता dash back. Keen says no, I'm going to buy time Chinese for my cuisine मैं teammates चाइना as में खा Carrier चुका हूँ comes over the Winter's Bite, does nothing in Keen. He just wants चलो to fight again. They'll take the चलो Baron. T1 And गरी गरी Keen gets back into position. गरी गरी T1 And now गरी Canyon is just crashing into them. भाई The 5 two गेम men देखने fail as मिलेंगे well. And Gen.G will destroy Yeah! the Baron, destroy the team fight, and I think they're looking for the game. Gumayushi आउटसाइड is भाई not 5 going गेम to देखने stay मिलेंगे लेट्स undying गो this world. It is a systematic dissection of T1. One by one they fall. भाई One by साहब one the objectives follow. Gen.G, calm, calculated, just eviscerate T1. Oh, that's straight into Soul as well. The Nexus might not fall, but this game really should be over. Baron here for Gen.G. Hextech Soul on top of it. And let's be fair, this is what we all wanted. Oh yeah. कुछ मसालेदार विदेशी खाने में मैं बता रहा था चाइनीज चाइनीज इंडिया में जो मिलता है ना वो एक्चुअल चाइनीज खाना नहीं है जस्ट बता रहा हूँ चाइना में तो चाइनीज हम लोग मैंने खाया है बहुत अलग टेस्ट करता है वो अगर इंडिया में आया तो इंडियन को पसंद ही नहीं आएगा जो चाइनीज इंडिया में मिलता है वो चाइनीज फूड है ही नहीं वो कुछ अलग इंडिया का वर्जन है बाय द वे अपना फ्राइड राइस बोलो या अपना ग्रेवीज बोलो वैसा खाना चाइनीज चाइना में मिलता ही नहीं है जस्ट एफवाई Into these 80 carries, they just can't deal with him. I think that Keen is the biggest factor here. Oh, him just Mumbai's best standing biryani. there, Yeah, I think- it's kind of like his aura is I saying, think it's "Try it." not- you know. But Correct. and the problem is when you to- lose that brawn, you lose a crucial part of your front line. So से बेस्ट बिरयानी क्योंकि मेरे को लगता है आई बिलीव बिरयानी में हर बंदा कुछ अलग प्रेफर करता है Like you say, once तो again, back in मुझे नहीं position, लगता कि Keen with the counter और strike बिरयानी now on बनती भी cooldown अलग to अलग finish. टाइप Oh my से God. जैसे That was insane मेरे को damage. We've also now got to see his arm ड्राई guard on बिरयानी Hayes. पसंद है They really मेरे को wanna नहीं finish this पसंद game वो right गीली here, right गीली now. Look at that, another lightning समझ रहे हो connect. एनीवे एक सेकंड And मैच तो Zap खत्म हो onto गया that, Caitlyn. They can't walk up. Like, how are they supposed to stop this freight train from crashing into their base? Gen.G have taken 2 inhibitors in a matter of seconds. It's a 10,000 gold lead plus here with this Hextech Soul, and T1 once again throwing out some grasping nature. They try to line up behind their tank, and it is absolutely working. Pace is indeed unstoppable. Carrier goes down. The killer instinct is named well as this is his second one. Extra spike to keep them alive for now, but who's it healing? It's only healing Gen.G as they move to 1-1 in this series.
Let's fucking I like go. the idea of T1's composition, but in practice, क्या बोल रहे थे हम लोग? the way in which Gen.G executed बिरयानी, the lane हाँ. swap, the way that they बिरयानी यार punished मेरे को T1 in the मिलता है early कि game, मेरे को लगता है and कि then they just डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू dismantled लाइक them यार from मेरे को start ड्राई to बिरयानी finish, बहुत पसंद है objective control, मेरे को नहीं the अच्छा team लगता जब वो एकदम गीली गीली मसालेदार होती है कुछ लोगों को मसालेदार पसंद होती है कुछ लोगों को अपने बिरयानी में आलू पसंद होता है मेरे को पसंद नहीं होता तो बिरयानी ऐसे बोलना कि दिस इज द बेस्ट बिरयानी आई थिंक इज नॉट फेयर What this series has so far been about I is think. execution of your game plan from the draft, and so far it's been beautiful for both winners. Time for us to go to a break. When we get back, we'll बस see what they गुजराती have food in cooked for us Mumbai. in Game 3. याओचे कोको फैटी पाव बहुत फेमस है मुंबई में फॉर चाइनीज या बट इट्स मुंबई में इंडिया में जो चाइनीज मिलता है इज नॉट रियली चाइनीज वो इंडियन वर्जन ऑफ चाइनीज है इंडो चाइनीज बोल रहे थे ना लोग हाँ इंडो चाइनीज बोलो इज नॉट चाइनीज फूड चाइनीज फूड बहुत अलग है टेस्ट में ये क्या फोटो है क्या दिखा रहे हैं हमको हाँ? भाई ये फोटो फोटोग्राफर को समझ रहा है ना कि ये फोटो अच्छा नहीं है मतलब या ये फोटो निकाल के फोटोग्राफर को क्या लगा कि ओ फक मैंने क्या फोटो निकाला है सेक्सी वैन शो बट द फक But is there anything wrong between Scout and Goldie Boy? Never say yes. They are my favorite. I refuse to answer this question. जब मैंने तुझे ग्रेट तोहफा कबूल का नंदू भाई क्या बोल रहे हैं वर्ल्ड्स क्यों की जीत पाती अदर रीजन की टीम ऑफ चाइनीज और कोरियन टीम छोड़ के लॉन्गर आंसर ये है इनका है देखो उन्होंने जो लिखा है कौशल भाई ने भाई नंदू भाई एशियन टीम्स का मैक्रो गेम बहुत एडवांस है दैट्स व्हाई शॉर्टर आंसर इसकी औकात नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग बट आई फील लाइक दिस ईयर फ्लाईक्वेस्ट डिड वेरी वेल अगेंस्ट जेनजी था ना शायद जेनजी था यस मतलब यस इट लुक लाइक मतलब 3-2 ही था ना वहाँ 3-2 था मेरे को लगता है फ्लाईक्वेस्ट वाज सुपर सरप्राइजिंग सुपर फकिंग सरप्राइजिंग बट इन जनरल देखो एनए तो एकदम ही यूजलेस रीजन है एनए में लोग रिटायर होने के लिए जाते हैं ईयू फिर भी थोड़ा सा ठीक है बट फ्लाईक्वेस्ट पता नहीं क्या खेल गया अबे बहन जो क्या खेल गया इग्नोर हो रहे हो क्या हुआ ट्रिपल राइस मेरे को नहीं पसंद ट्रिपल राइस मेरे को अमेरिकन चॉप से पसंद है ट्रिपल राइस नहीं पसंद मेरे को शेजवान राइस नहीं पसंद वो कुछ अजीब टेस्ट आता है मेरे को शेजवान में जो पसंद नहीं मेरे को स्वाति स्नैक्स तारदेव स्वाति स्नैक्स प्रीत भाई वाज मी एंड माय मम्मी का ओरिजिनल हैंगआउट स्पॉट बचपन में लाइक इट वाज लाइक अ ट्रेडिशन जब हम लोग नानी को मिलने जाते थे हम लोग स्वाति स्नैक्स में बैठते थे मैं और मेरी मम्मी अब तभी स्वाति स्नैक्स बहुत अलग था उधर का थाली पीठ वो सब जो था कोथिंबीर बड़ी बहुत अलग था अब वो बहुत कमर्शियलाइज हो गया जब उनको समझ में आया ना कि हाइप है उनके अराउंड वो इतना कमर्शियलाइज हो गया इतना एक्सपेंसिव हो गया कि इट बिकेम शिट इट शिट नाउ ऑनेस्टली सी नो ऑफेंस बट आई डोंट लाइक स्वाति स्नैक्स एनीमोर आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वेंट देयर आल्सो इट्स बीन इयर्स बाकी अगर तुमको वो साइड पे कुछ अच्छा ट्राई करना है तो गो टू क्रिस्टल चौपाटी के सामने गो टू क्रिस्टल्स इट्स बहुत पुराना वो भी एक आइकॉनिक जगह है मुंबई की वहाँ पे जाओ कभी गए तो फ्लाईक्वेस्ट पैकेट पिक्स की वजह से मस्त खेली जो भी है यार जो भी पिक्स कुछ भी हो बट रिस्पेक्ट है भाई फ्लाईक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट बनाओ रिस्पेक्ट है फ्लाईक्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा खेली जेन.जी के सामने इंटरनेशनल में लीग का ई स्पोर्ट्स सीन बढ़ाई की वैल्यू का लीग ऑफ लेजेंड्स का ई स्पोर्ट्स सीन दुनिया में सबसे बड़ा है जिसको डिसएग्री करना है आर्ग्यू करना है जो सच है वो सच है भाई मतलब कुछ इसका क्या बोलते हैं ये ऐसा ओपिनियन नहीं है मेरा ये फैक्ट है नॉट एन ओपिनियन इट्स अ फैक्ट The league is the biggest esports in the world.
टाइटल में SKT वर्सेस Gen.G की उफ फक इनका नाम अभी SKT नहीं है ना सॉरी मैन T1 मेरी गलती है No idea about this game. Was the strongest region in this game? I think Korea. And China comes very close, but in my opinion, it's Korea. Guys, मैं एक सवाल पूछूं, genuinely आंसर करना, ठीक है? और देखो, इसमें कोई जज करने की गरज नहीं है. जज करने एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ. अगर करते हो तो मेरे को भी बोलना. पाव या ब्रेड से खाने के बाद ये सिर्फ आदत मेरे को या तुमको भी है कि खाना खाने के बाद तुम लोग वो ब्रेड से ऐसा एक थोड़ा सा ऐसा उसका बीच वाला सॉफ्ट पार्ट लेके उसका ऐसा गोला बना पूछ रहा हूँ भाई मतलब जज मत करना देखो पता नहीं मैंने पूछा कि क्या मेरे को सिर्फ अकेले को ये आदत है या मतलब पता नहीं है तुम है कोई और करते हो तुम लोग भी करते हो क्या माँ चोद रहे हो यार तुम लोग भी करते हो Don't fucking tell me यार क्या बात करते हो यार कि मतलब समझ रहे हो कि मतलब उसका जो अभी खा के हो गया मेरा तो उसका ऐसे देखो मैंने ऐसा सॉफ्ट पार्ट लिया ये वाला और फिर उसको ऐसा वो मस्त लगता है यार मतलब भाई करके देखो सुनो बहुत रिलैक्सिंग है अंगूठों के बीच में ना ऐसा एकदम ऐसा वो सॉफ्ट पिचकू मस्त लगता है भाई बहुत रिलैक्सिंग है सच्ची बता रहा हूँ एक बार करके देखो दोस्तों जिसने भी नहीं किया है ब्रेड या तो पाव आई थिंक बेटर क्योंकि सेंटर पाव को और नरम होता है बट मतलब तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या ट्राई करना है बट ब्रो आई एम अमेज्ड कि काफी लोग हैं भाई चैट में जो ये चीज करते हैं मुझे लगा मैं वियर्ड इनट सोल भाई मम्मी कसम मेरे को पूछते टाइम वियर्ड लग रहा था मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को लग रहा था मैं अकेला बंदा हूँ जो ये करता है सिर्फ आपको कन्फेशन वाले वीडियो कब आ सकते हैं आपको पता है कन्फेशन वाले वीडियो का क्या हुआ माम्बा के साथ शूट हो गया था रेखा के साथ पायल के साथ जोकर और स्नैक्स के साथ करना था तो दिवाली के दिन वो लोग नीचे आ रहे थे मतलब आ रहे थे बूट कैंप पे भी क्या बताओ मतलब ठीक है मेरा भी गलती है उसमें मैंने इतना डिले नहीं करना चाहिए था मैं नीचे गया वो डब्बा लेके मैं सोचा पायल भी आ रही है स्नैक्स आ रहा है जोकर आ रहा है तो बन जाएगी वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ इधर स्टाफ ने वो मेरा डब्बा उनको मिला उन्होंने खोला उनको लगा पेपर के पर्चियां उनको समझ में नहीं आया क्या है तो पर्चियां ही सारे फेंक दिए उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात ही नहीं मैं क्या करूँ ब्रो मतलब मैंने इसके बारे में बताया नहीं स्ट्रीम पे मेरी भी गलती है मैंने बहुत टाइम लगा दिया बट टाइम का बात नहीं था यार मेरे को लोग चाहिए थे यहाँ पे जो मिल नहीं रहे थे मेरे को और क्या मतलब मेरा माइंड फक हो गया था सी आई एम नॉट गोइंग टू लाई मेरा माइंड फक हो गया था निंजा टेक्निक बचने की मम्मी की कसम खा के बता रहा हूँ मृत्युंजय भाई मम्मी की कसम खा के बता रहा हूँ मम्मी की कसम खा के बता रहा हूँ बहुत गुस्सा आया था बट मेरे को स्टाफ वाफ चिल्लाना मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी मैं नहीं करता मतलब मेरे को जमता भी नहीं मेरे को अच्छा भी नहीं लगता और मैं क्या ही चिल्लाऊं और क्या फायदा है चिल्ला के जो चीज अभी हक दी है किसी ने वो हक दी है क्या चिल्ला के पॉइंट नहीं है मतलब मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरा मतलब मैं इतना गुस्से में था ना उस दिन मैं इतना गुस्से में था ना ब्रो मैं तुमको क्या बताऊं बहुत गुस्से में था मैं बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं नया बना लो अबे अभी वो फनी वो वीडियो का अलग था यार वो फनी फक हो गया बेंच अब क्या नया बनाओ anyway some other time मतलब क्या कर सकते हैं unfortunate but it was a lot of that indecisiveness that came back to bite T1 in this play and I think it was great from Gen.G to try and set up that confusion in the early stages. Yeah, I thought this was in particular really good for Gen.G. They've
classically been really, really good in these lane swap situations. We were talking about them as the best lane swap team in the world, which is why it was really interesting to see them so dizzy on the map at times in game 1. This is a very अक्षर आ गया क्या Discord पे? restabilization for them. It's true, and it's like you got everything किधर you है? wanted. All you have to do is play it out, and you are the most adept team in the world to do that. It does make me think, and we कहाँ है have अक्षर? backstage also, Rob. You're like, oh, अभी देखा all मैंने of us are message. a little like carry out on the Braum, a bit disappointed. But I feel like this is one of those things that T1 would do in a draft too, after winning the game 1, right? भाई मेरे को मैसेज किया गया अक्षर आ गया Discord पे. There's 4 or 5 games, and Carrier hasn't यार मैं pulled out 1 सेकंड में है तो उससे एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आना about है. the general ability of T1. रुको कहीं जाना मत. Their strat is one of the reasons why they won Worlds 2023. Yeah, I think this to me was T1 trying to test the waters and say, hey, look, if we just say we are going to absorb the dive and try and play within that space, maybe we can find something different. And as Kobe was already alluding to, like a carry pick for Owner was not what I expected when he's been incredible on picks like the Vi thus far at the tournament. So it definitely felt like teasing the waters in the same way that we saw Gen.G do so game 1 with the Yone. But now coming back into it, I think I'd want to see T1 go back to early game control, having Carrier open up on the map, because it was actually Lehens who dictated a lot of that support matchup for me in this early stage of the game. He looked significantly better, and it was catching Carrier or catching Faker out at 7 minutes in top lane that really broke this game open for Gen.G. You had called it out before. Lehens listened to you. Yeah. I had to just disappoint him that, you know? heard you directly. I also think it'll be interesting now as we saw T1 going back to the blue side. I don't expect to see Gen.G leaving the Yone up again going into game 3. So I'm curious to see if a changed ban strategy affects what T1 want to get on that blue side of the map. Yeah. And if they're going to continue to put a lot of effort into these level 1s and these lane swaps, because again, I really feel like the information gathering at the beginning and getting the wards down, you know, allow for this kind of domino effect that we see in the game here for game number 2. If Gen.G are able to come out with a really good level 1 here, this is where you could kind of like take control of the series, because, you know, 1-1, blue sides, but now we get into the real meat of a best of 5. Yeah, first it's like the entrée, the course, right? And we're gonna get to the main dish indeed. I just think the demarcation lines that have been drawn. If you look across games 1 and 2, because we can't forget, after that kind of Zeus repel, Gen.G was also firmly in control before T1 brought it back. They were completely in control. So for me, the momentum feels a little bit shifted towards a T1 that has to make something happen. Yeah, and I think a lot of that is going to be trying to get access to the map early and trying to play for some of the early Void Grubs and getting your control that way, because it was a big risk in this game as well, where they gave across all 6 of those Void Grubs, trying to cross map to a Jax that's going to be able to match up to the Maokai. Like, there was a lot of risk taken by T1, and if you actually think back to the start of game 1, it was T1 off to an early lead. I think it was mistakes at those Void Grubs that came back to bite them. So there is definitely ways T1 can control this game coming into number 3. Yeah, we're looking forward to it. Things are heating up here. I wonder if Atlas has taken off his jacket yet, or if he's still in his full 3-piece suit, even though it's boiling in here. Too committed to the 3-piece. I love this suit so much. I've worn it on 2 other occasions. One of them was a world final. The other one was my wedding. This is how you know that I guarantee this is going to be an incredible series. Those were the other 2 best days of my life. We thank you for your work, Atlas. It's greatly appreciated. As going into this game number 3 draft, no surprises, although that Yone ban coming out on the side of T1 here. Aurora still going to get taken out. The Ashe still up, Skarner still up as well, Jax available. Skarner, Jax would be the kind of no-brainer 1-2 here for Gen.G. The BLG approach, as we like to call it. Certainly a favorite for them in their semi-final that went pretty well, you could say, for BLG. We'll see whether that is exactly where Gen.G are going to go. Not deciding to switch up the picks here, as it will be the Jax to be locked in first. And I think that, you know, you don't talk about hovers is something that we sometimes talk about. This is a hover that you can probably talk about. Yeah, I think you'd be pretty confident with that one, Atlas. Yeah. Especially with Keen. Now the question is, will there be a 3rd game? Skarner, I'm going to hazard a guess and say yes. Canyon, of course, has showcased a wealth of different champions. His Maokai win rate this year is almost as good as his Nidalee win rate. I mean, the man is very versatile in terms of the jungle role, and they're actually, based on the hovers, holding off on that lock-in. Chovy's win rate with Ahri so far in the best of 5s hasn't been the strongest, but last game, he had the Veda over Faker. He was able to have a lot of mid control thanks to the Ahri pick and what was happening around the map. And
and we'll see what the response is here from T1. Also ties into Chovy's approach. Often as a player, if he thinks a champion is the best, we'll just keep picking that until the antithesis is proven. Renata coming through. Again, Keria having an incredible game, and we will call it for this, and I love it here as well. Always gonna feel strong. The only thing for Gen.G, you do have the opportunity to pick up like Ezreal here. Doesn't mean your jungle pool is gonna get pinched, but getting a non-stationary AD carry, I think, is gonna be a really big deal, because otherwise the team fights are gonna be really hard to play out. Depends what he has planned. Could be something else here as well, as that Ahri Nocturne combo that they swept through Swiss with is going to be locked away. Canyon, he is sick of playing this Skarner, and I could understand, no shade cap, but I don't know, it just doesn't do very much damage. You only build health, it's just less fun. The Nocturne, who does slashy slash. You are setting up very clearly for a Kai'Sa pick here for Gen.G. You imagine that's going to be banned away by T1. The backline threat onto the Ashe is very lethal. The Kindred, I think, is... it's a really good matchup into the Nocturne. Yeah. You just went out on the skirmishes, so they're going to remove that. Wouldn't be surprised to see the Vi removed, to be honest, with the amount of mobility on the side of Gen.G. Just take that away from Ona, one of his best champions. Basically have to ban Kai'Sa Ezreal. Oh shit, मैं भूल गया मैं unmuted था. Hello. अक्षय क्या है? अक्षय शायद चला गया हो क्योंकि उनके वहाँ पे दिवाली चल रही है ना, वो कुत्ता एक अच्छा दिवाली चलती है फिर ठीक है sorry. Ezreal's another, but I think the Ziggs makes a ton of sense given what we've seen so far. उनको बता देना. आपके चैट में बैठा हो शायद. हो सकता है. Noteworthy as well that the Silas did still get banned, even though Chovy did a really good job in that matchup, still got denied, and I think it's because of the Nocturne, right? So much of the value is because you're the one the Twitch Nocturne actually gonna be denied here, and I think it makes sense given how insane. Long message पर थोड़ा scroll करना. Oh. ये वाला when you're back. Nowhere here with Miles about thanks for great advice. Truly appreciate it. Thank you. Appreciate it, man. This Gen.G draft, I really do. I think it's very solid. It makes a lot of sense in the context. ये 5 गेम जाएगा. These two last picks are 5 गेम तो जाएगा. इसका मिस कॉल है अभी तो. Faker has had a phenomenal world so far. Pairing up alongside Ona, they've been doing a good job together. The question is, what appreciate it, man. got for Canyon Chovy? Let's just see. और डिस्कॉर्ड पर है बट कोई बात नहीं कर रहा. चलेगा. मेरे को अक्षय क्यों चाहिए? क्या लॉक इन हुआ? मजा आएगा. हर्ष नहीं है डिस्कॉर्ड पर. मैं अक्षय को क्यों बुला रहा हूँ? तो दैट अक्षय आपको थोड़ा सा गेम के बारे में बताएगा. इसके लिए मेरे को अक्षय चाहिए. मैं भी बता सकता हूँ बट प्रो प्लेयर से सुनना बेटर है ना. बीजेएमआई बोर. हाँ मतलब यार पता नहीं. आई होप फिक्स करे जो भी है. छोड़ो. हर्ष नहीं है. हर्ष का गाना आज मैंने देखा है. डिसेंट गाना है. Decent stuff. Go for something a lot more well-rounded, and he did have a really good game on it in game number 2. Yep, the pretty standard option in the rel. But like you say, I actually think playing for Lahenz's comfort is a really just good chatting idea and food after stream. what we saw in game 1 and Yeah, the मेरा rest of this tournament. speciality just chatting है. Here for Gen.G. Not in game 2 though. ये 5 गेम ये क्या अकाली कल भी पिक हुई थी ना. अकाली अच्छा खेली थी क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन पिक किया था. BLG किया था. याद नहीं आ रहा किसने किया था. जिसने भी किया था. Yesterday beautifully demonstrated what this champion can do to an Ezreal. हाँ BLG नहीं किया था ना शायद. नहीं किसने किया था याद नहीं आ रहा है. आयरन रेस्टोरेंट टीम ट्राई करो आज तक. बाय बाय ऑल द फूड वीडियो सजेशन है फिर तुमको. Incredibly high. IRL restaurant stream. Oh, that could work. But यार problem पता है प्रीत भाई. रेस्टोरेंट वाला ना यार फूड वाला पता है मैं क्यों अवॉइड करता हूँ यार. अबे नॉनवेज दिखाओगे तो बहुत लोग गालियाँ डालते हैं बे. ए उसने डियोर पे नहीं क्या? मेरे पास भी है. यस देखने दो उसके जूते. Gen.G have a lot of skirmishing threats themselves. The Jax was a huge नहीं कौन से जूते हैं वो?
नहीं कोई LV है वो शायद, नेवर माइंड, ज्यादा महंगे है वो। अबे गाली डालते हैं, नॉनवेज खाओगे तो बहुत वेजिटेरियन लोग हैं जो गाली डालते हैं, मतलब सीधा। तो इसके लिए अवॉइड, हाँ मतलब मेरे को याद है अभी फूड का क्यों अवॉइड किया था मैंने, और मैं खाता ही ज्यादा नॉनवेज हूँ। सीड रिएक्ट चैनल कंसिस्टेंट रखो, अच्छा ग्रो करेगा, है अभी कंसिस्टेंट, बहुत कंसिस्टेंट है। देखो हर रोज एक वीडियो आएगी एक हफ्ते तक। Keep Faker down, particularly those first 6 levels is where the Akali can really struggle. Akali grasp? Sorry, Ari grasp? You need to log into your Riot account on lolesports.com and earn watch live to earn exclusive emotes, icons, capsules. Interesting. Stuff. We've got a little bit of time here. You're not going to miss. अरे पूरा 2x करता हो तो वो अटक के चलता है। So you can hop on over and you can अरे get दो that बार one क्यों done. आवाज आ रही है? अच्छा यहाँ से भी आवाज आ रही है। Okay, Zeus is standing on a ward and there are a lot of bad guys in the brush. Oh, no, there's the charm that crashed down as well. It's a dead Gragas. It's going to take a little bit of time because he's relatively tanky, but still, that's first blood going over to Pays, and maybe that makes अबे things Zeus a little bit harder. क्यों प्रोनाउंस करते हैं इसको? मतलब Zeus नहीं है वो, ZEUS, Zeus क्यों बोलते हैं ये लोग? Heard so many things about Faker. Is he multiple time world champ or something? He's the greatest of all time. अगर bro GOAT का कुछ definition है ना bro, तो वो Faker है e-sports में। मतलब nobody can say कि नहीं आर्ग्यूएबल है ब्रो, फेकर है या नहीं है, गोट आर्ग्यू नहीं बोलेगा कोई। तुम पूछोगे इस फेकर द गोट, तो एवरीबडी हैज टू से यस, यस ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सिंपल फेल ऑफ ब्रो, सिंपल ने क्या किया है लास्ट 1 साल में? टेक्निकली वैसा देखने जाओ बस एक बार। सिंपल ऑल्सो फेल ऑफ थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्लेयर है वो नो डाउट, बट थोड़ा सा फॉल ऑफ हुआ है उसका भी। Faker है बे भाई, कहना कम नाउ आई कैन कम आओ फिर। There's a reason for that. His actual name is Woje. If you flip that you get Jewu, and otherwise you get Jewus. That's where the IGN come on. Why should? Oh, what the fuck? मेरे को पता ही नहीं था सब कहाँ से। What makes him the GOAT? Can you talk about it? He's been playing first of all for almost 12 or 13 years, ठीक है? And for all 12 or 13 years, he's been at top. One of the top, if not the best. He's considered one of the best for 12 to 13 years, which is incredible. ये बात है, इसके लिए उसको गोट बोलते हैं। I think वर्ल्ड्स तो वो 4 बार जीता है, 4 बार। तो वो सीन है। GENG पॉडकास्ट रिएक्शन कल करेंगे, कल अभी नहीं, कल। Faker is the world's most successful esport player. I agree. Not one of the. He is the. वही फर्क है फेकर और बाकी लोग में। One of the में गिनती नहीं होती फेकर की कभी, the में गिनती होती है, the. The problem is when you go for the electrocute over the fleet footwork, it's very easy for Chovy to kind of chip away at your HP bar when you're trying to farm, and it means the fake is Second best player is debatable for me is Uzi. Like yeah, you can debate, मतलब बहुत debatable है वो। कोई Uzi बोलेगा, कोई रूलर बोलेगा, कोई पुराना कोई प्लेयर बोल सकता है। But फेकर में कोई डाउट नहीं करता, मतलब फेकर के हेटर्स भी बोलेंगे कि हाँ इज द गुड। भाई ग्रास्प आरी पता नहीं था मेरे को। CID सीजन 2 आ रहा है, अच्छा। और इस पर प्लेयर रिटायर 3-4। हाँ मतलब तुम फेकर का देखो ना यार, एवरी मेटा एवरी चैम्प में वो अच्छा खेला है। एक पता है, याद है तुमको बीच में एक मेटा आया था जब वो सपोर्ट टाइप चैम्प्स खेलते थे मिड पे, फेकर तभी भी अच्छा खेला था। असैसिन खेलते थे तभी भी फेकर अच्छा खेला है, मेजिस खेलते थे तभी भी फेकर अच्छा खेला है।
when Owner is on the top side of the अलग ही है Faker यार. Information over to T1 as well as Canyon walks over that ward. They knew exactly. They had an idea of where he was, but then they get full confirmation. Lockdown protocol यार ये 5 गेम जाएगा तो नहीं हो पाएगा lockdown protocol टाइम पे ना. वैसे from being in party raised by a single parent and his grandma to being the face of esport and drama never trashing this marginal. अच्छा पावर्टी ऑर्टी का मेरे को पता नहीं था. अच्छा Faker की watching कहाँ आती है? He is not good. हाँ उसकी watching तो नहीं आती. Yeah, it's very awkward for him because good तो नहीं है बराबर है. holding onto a monstrous freeze. The idea is Faker, you try and get those early pushes in, then you get the bounce back. But Chovy's like, no, I'm good. Now the wave will finally bounce back, but he ticks over to level 6. Please खेल लो बहुत मन है आपको. अरे यार ये watch party छोड़ के नहीं जा रहा भाई मैं. Gen.G T1 semi-finals छोड़ के नहीं जा रहा मैं कहीं पे. It will be crucial if he does. Massive. He was on that ward. As we could see, I thought he was actually just a prophet, but no. They've actually brought the bot lane over towards mid to catch this wave. Faker can now actually TP bot and go lane against Pays, who can still... Oh, body slam going to miss. That could be a big deal here. Evening out the health trades that have been going pretty consistently in Zeus' favor. इसका Valor में इन किया है मैंने. What does 0-1 mean? Those are the kills. Gen.G got 1 kill. But in my opinion वो 0-1 वगैरह I think is one of the most useless stats in a MOBA game. Kills. A 0-10 banda can be more useful than the opponent's 10-0 banda. Genuinely बता रहा हूँ. Honestly बता रहा हूँ. Ask any MOBA player. It is one of the most useless stats. उसके नीचे जो stats है वो बहुत useful है. Dragon count, Grubs count, Baron कौन ले रहा है, वो क्या है उसका नाम क्यों है, कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ. Rift कौन ले रहा है, Herald कौन ले रहा है, ये सब बहुत मैटर करता है. बट ये ऊपर जो kills है ना, सबसे useless stats है. कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता. But it is not a win condition. I don't think it's that useless because kill gives like 3. I mean as statistics I'm saying. As statistics like why I'm saying this Akshaj is because FPS players के लिए they think कि kill लेना important होता है. उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ. तो वो लोग को लगता है कि जब वो लोग मोबा खेलते हैं कि किल के पीछे भागो, किल चाहिए मेरे को, किल चाहिए मेरे को, किल चाहिए. तो वो माइंडसेट मोबा खेलते टाइम नहीं होना चाहिए. ये मैं मतलब मेरा बताने का मतलब वो है. इट इज नॉट अ किल ओरिएंटेड गेम. जैसे BGMI हो गया या CS हो गया या Valorant हो गया. इट इज नॉट योर किल्स इज नॉट योर प्रायोरिटी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नॉट यूजलेस बट useless बोलना हमें भी गलत हो सकता है, but taking kills is not your priority. Oh, let's fucking go. भाई 5 गेम जाएगा ये. मजा आएगा. Can you explain Dota versus LoL difference? Map is bigger Dota में, बहुत बड़ा है. उसमें टर्न रेट वगैरह बहुत ज्यादा मैटर करता है. इसमें वो सब चीजें नहीं है. मैप को कैसे यूज करें ये डोटा में मेरे को लगता है ज्यादा डिफिकल्ट है. बट लीग में किसी चैंपियन को कैसे यूज करे ये ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे को लगता है. आई एम इन द वॉइस चैनल. आई डोंट गेट एडमिन. अरे यार मैं भी नहीं खींच पाऊंगा ना तेरे को. But they are always just trying to push these advantages. I think maybe I can't. Opportunities where their opponents don't have enough information to be able to do what they want. So really nicely done here from T1 to try and claw back a bit of control of this game. Right now, plate should be going over to Gen.G to Chovy here. मैंने किधर तो फेंक दिया तेरे को गलती से. ओ फक कहाँ चला गया अक्षज. मैंने कुछ तो मूव किया और चला ही गया यहाँ से. मैं ट्राई कर रहा था भाई किधर. आ गया. रुक जा. एडमिन को आने तो मैंने कहीं पता नहीं. शिट. तो या मतलब this is not a kill oriented game. It is not killing somebody is not your priority. अगर लिस्ट बनाओगे कि अगर मैंने ड्रैगन लेना चाहिए या मैं इसको मारूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम
आंसर तुमको ये मिलेगा कि जाओ ड्रैगन लो। मैं इससे 20 CS ज्यादा फार्म करूं या मैं इसको एक बार मारूं, तो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा कि ज्यादा CS फार्म कर। मैं मरू नहीं या इसको मारने को जाके रिस्क लूं और मैं मर जाऊं, तो आंसर आपको ये आएगा कि मर मत, चलेगा। तो वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि किल्स इज नॉट वेरी हाई प्रायोरिटी मोबाइल में। ओह क्लोज, प्रायोरिटी नहीं है इतना इसको इसमें। That could have been a follow-up. I'm actually very surprised. Keen had no flash and Ono with ulti was in range. I think he could have committed, but I guess because Keen hadn't used his E yet, they were hesitant to really... It's like BGMI term में basically ऐसा हो गया कि मैं जोन पकड़ता हूँ, किल्स मुझे अपने आप मिल जाएंगे और मैं गेम जीत जाऊंगा। इन BGMI term में तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, कुछ टीम्स खेलते हैं वैसा, राइट? कि मैच द फाइट्स, मेरे को सिर्फ जोन पकड़ना है, राइट? क्योंकि जोन उसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन BGMI terms I think this is the best I can answer. क्या बात है! अभी तुम लोगों ने नोटिस किया एक चीज, अब देखो, अब फाइट हुआ क्यों हुआ? वो ऑब्जेक्टिव के लिए फाइट हुआ, यहाँ पे कोई किल्स के लिए नहीं भाग रहा था। ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है ये गेम में कि ऑब्जेक्टिव के लिए फाइट हुआ वहाँ पे। जेनजी के 2 लोग या 1 लोग 2 लोग मर गए, और अब ये लोग फिर से क्या कर रहे हैं? अभी ये लोग फिर से आरी को मारने नहीं जा रहे, मे बी आरी और अंदर आएगी तो मारने जाएंगे, पर अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो, किल के पीछे नहीं जा रहे, अभी वो लोग ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, जो कि है टावर। ऑब्जेक्टिव्स little more important, not little, a lot more important in MOBAs. Carrier though has the passive to be able to reborn, and then of course also has the ultimate available too. So even though they're getting collapsed on by every single side, the TP comes in, a nice I think in laning and farming, Chovy is unbeatable. What do you think? I don't know. I'm too less informed or uninformed to comment on that. Most of that fighting each other. Because of that hostile takeover that came in, Faker gorgeous on the 5. लॉल कोरिया चैनल पे वाचिंग भाई। देखो T1 की क्या औकात है, मतलब ये बंदा सब है बे इनका, हाँ रेकलेस सब है बे इनका, मतलब सिर्फ भाई कहनी सर इसमें 2-3 गुड सस्पेंस मूवी जिसमें मर्डर मिस्ट्री और फाइंड करना और टाइप। बॉलीवुड मैंने ज्यादा देखे नहीं है लास्ट इसमें, बट व्हाट द फक टाइप के मूवीज अगर देखना है तो इल्यूजनिस्ट और एक इल्यूजनिस्ट देखो, एक द इल्यूजनिस्ट और एक वो उसकी मूवी का नाम क्या है, एक वो देखो परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। वो सस्पेंस नहीं है, वो जो थोड़ा सा वियर्ड मूवी है। इल्यूजनिस्ट के एक और नाम नहीं याद है मेरे को, नाम याद करने दो। द इल्यूजनिस्ट देखो। Chovy is a god of laning. Faker is an all-round like he's a leader, while also being good at laning. This war of attrition looks to just be going in T1's favor. Is Reckless a good player? Yeah. He was considered, I think, and उसने prove भी किया at a certain level, till a certain level. उसको वो prodigy था EU scene का। 16-17 साल की उम्र से उसको किसी ने स्काउट करके रखा था, प्रोडिजी था वो EU सीन का, और उखाड़ा है उसने भी काफी। He was one of the greatest EU सीन्स का, बहुत मैकेनिकली बहुत अच्छा खेलता था। प्रेस्टीज को ही तो नाम याद कर रहा था मैं जो नाम ही नहीं याद आ रहा था। प्रेस्टीज, यस। He catches the wave there, and they don't really lose anything. Shozea's lost like half a wave in the top side of the map, and crucially, Chovy does have an experience advantage over Faker, but he should be able to T1 का 6th है अभी, तो वही तो मैं बोल रहा था। T1 का औकात देखो, रेकलेस जैसा प्लेयर उनका सब है, खुशी सब होके बैठा है बे वो बंदा, मतलब सीखना है उसको बेसिकली। रेकलेस कैनन वाज ऑसम। When you look at these two compositions, it does really feel extremely volatile because they are both so short range.
You really, once you find yourself in a deficit, have to be extremely clean with your fight selection. और देखो ब्लू टीम ने रिफ्ट एरर मार दिया, समझ रहे हो? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये एक ऑब्जेक्टिव है ना, तुमको गेम जिताता है लीग में। लीग एक बहुत लेयर्ड गेम है। तुमको जीतने के लिए लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर लगा के जीतना पड़ता है। अब देखो, oh my god, let fucking go! अरे, ओए भिंचू, उई, उई, oh boy! 2-1 SKT! And Gen.G cannot do anything this game. I mean, it's इस गेम में रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है और एम और स्ट्रैटेजी तीनों। रिफ्लेक्स, एम, स्ट्रैटेजी तीनों। Oh boy! Gen.G not able to do anything. Faker just utilizing the second portion of his ultimate because he can, and it's all of a sudden a 6,000 gold lead. It's just a relentless barrage of punch after punch, and T1 are not letting up. They use the Herald mid, Lehens with a slight Sid getting an error message while super, क्या बात कर रहे हो? क्यों भाई? He drops first, and then look at this play. Canyon thinks that he can punish Carrier. क्यों भाई ऐसा? The way in which Ona turns this around, connects the Q, the ulti to follow the पैसे कमाने दो ना भाई, ओ YouTube. and they're able to get a double for पता Guma. नहीं। And what's crazy is they didn't even slow down there. बैंक बैलेंस नहीं होगा, अरे मत करो यार। होगा यार, दिखा दो यार तुम, दिखा दो 10,000 रुपया बेच के यार। प्रसाद भाई दिखा दो। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? That this bounce back was real, and coming into this series, they'd only played on blue side one time. Insufficient balance ऐसा मैसेज आ रहा है। Been on blue side this whole worlds, which is kind of crazy to me because they do love this side of the map, and they are demonstrating to us that in this series, it is not going to be any different. And hope, like what I'm trying to get to here is that we might have 5 games, and that'd be super. T1, when they are playing a comp that feels like it fits them versus the T1 that is on something like we saw last game, is night and day. I mean, there is like a perfect example for this. We have the stats for Keen on Jax in the last game. Can you come back from this situation in the game, Sid भाई? Of course you can, absolutely you can. अब ये गेम में अब देखो, अब सीन ऐसा है कि चिगान नहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा। अब ये सिचुएशन में ऐसा है कि T1 ऑब्जेक्टिव्स में एक्चुअली 2 ड्रैगन्स है Gen.G के पास, तो ऑब्जेक्टिव्स मेरे हिसाब से काफी इक्वल चल रहा है। गोल्ड उनके पास ज्यादा है तो उनके पास आइटम ज्यादा है, तो कमबैक करने के लिए Gen.G मेरे को लगता है उनको फाइट्स में अच्छा खेलना पड़ेगा। फाइट्स में Gen.G अगर अच्छा खेलेगा तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू कम बैक इन द गेम ब्रो, और मोबा में इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू कम बैक इन द गेम, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अब अगर Gen.G फाइट्स अच्छे से निकालेगा, जो कि वो लोग नहीं कर रहे अभी, देखो जैसे मर गया फिर से, राइट, तो अलग बात है after Canyon and Keen here. Faker bhai. It is just Faker at the moment, but now you can see they Faker make bhai, way in. The paranoia comes down. Faker bhai. Decent little utilization of the counter-strike, but Faker's going to get on the kill. Hostile takeover means Keen is dead at the same time, and Pay's almost hit by that handshake. It could have been worse, and it's still a disaster. What the? अब मुश्किल है थोड़ा वापस आना उनको, अब मुश्किल है। रेचल गुप्ता crowned as India's first Miss Grand International match with Lara Dutta's record. Slaughtering Gen.G. And Gen.G, the only reason why Baron isn't taken is because we're 18 minutes in. Yeah. It's 9-1. अबे हाँ बे 18 मिनट हुआ है गेम को। And Gen.G, they can't even get near the waves. अब देखो मुश्किल है अभी कमबैक होना ऑनेस्टली, क्योंकि भाई बहुत अहेड है, आइटम्स बहुत ज्यादा है उनके पास, बट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। And show a bit of anti-synergy there as this knocks Lehens out of the way of Faker's E. He flashes to try and cancel the back, doesn't quite get it in time, but he says, guys, I'm not letting my ulti be wasted. You better collapse here. Here comes Ona, and then the follow-up comes through. T1 from these winning positions are always going to be looking for more and more aggressive sideline punishes. And Gen.G, not respecting pace, just has to watch his team. First time watching LoL round का winner कैसे decide होता है score in the middle? No. मोबास में जनरली
एक बेस टावर होता है दोनों जगह पे, वो दोनों यार चेस पता है ना तुमको, चेस बेसिक रूल क्या है चेस का, राजा को मार दो, चेस खत्म, गेम खत्म, सेव सेव। भाई वो चलो खत्म, वैसा ही है दोनों का, किंग अगर एक दूसरे का मारेगा तो ये गेम खत्म हो गया। Doesn't even die, gets the full value from the bailout. The TP comes in, and they're not gonna relent. Chovy and Pace just again have to watch their teammates fall one after another, after another. T1 is just crushing Gen.G with their wallets right now. फेकर Gen.G अंधा फेकर admirably तो है tried to भाई, find a फेकर ही pick, है but, ना। you said it yourself, Atlas. Carrier Gen.G तो way स्टॉम्प हो रहा है ब्रो ये गेम में, अभी तो डर लग रहा है, 5 गेम वाला फीलिंग नहीं आ रहा। expected to one-shot Carrier. He bought enough फिर भाई time to allow अगर T1 to इंडिया के collapse हर and घर turn it गेमिंग around. पीसी हो तो पीसी का एक्सपीरियंस The कैसे होगा Baron is इंडिया में? on the Rift. Another bad fight for फर्क पड़ेगा, Gen.G. बट will इतना result भी in फर्क that नहीं पड़ेगा objective क्योंकि falling. यार And you can see the गेमिंग पीसी vision ना coming होने through के the वजह से language on मोबाइल 3 गेमिंग wards बेटर and a नहीं है nice इंडिया में, little आप एक बात समझो। triangle, I guess, to just try and make मोबाइल sure they गेमिंग have बहुत some बेटर है इंडिया में semblance of क्योंकि information. मेन रीजन उसका ये है कि अपना डेटा बहुत चीप है इंडिया में। डेटा प्राइसेस कंपेयर करो एक बार, यूएस के यूके के 1 GB डेटा का कितना पैसा लगता है, उसके वजह से मोबाइल गेमिंग बहुत ऊपर है इंडिया में, बहुत। रिलीज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। Oh, handshake going to connect there, not a lot of follow-up Diwali on plans? Hens as they didn't have a lot of Nothing. information. No Red Buff plans. is the prize that they're looking No for, but it's going to plans. get reset, and it looks like ownership इधर gonna गेम take खत्म हो control जाएगा of it. भाई, ये लोग Into the फाइट crowd चालू होने के goes पहले ही गांड Paranoia. फट रही है They इनकी think तो। they might have them where they want them as over the wall goes Chovy. He's got the flank angle, and they take down Guma to start off the fight, but it has to be paid for by Keen. इंचो दाश के Now 4 versus 4 as T1 look to rally back into position. Can they win the fight without Guma is the question. He's so much of their consistent damage. Is now Chovy dancing around, not able to find too much more, and T1 back away. You're completely right, Atlas. Losing Guma is a lot of the damage gone, so T1 have to be a lot more careful. India Faker in the had world. his ultimate available, Exactly. but they chose not to take Which is the why fight any mobile longer. gaming is A super. crucial It is fight not from because Chovy. He's been largely लोगों के घर में invisible पीसी in नहीं है तो this पीसी game, गेमिंग नहीं है, नहीं quietly ऐसा नहीं है। farming on the side, but you look at his itemization. कल उठ के He's on I mean, he's ahead of Faker in terms जैसे of तुमको itemization. 30,000 रुपए में So there is तुम still बीजेएमआई खेल avenues सकते for हो, Gen.G वैसे to अगर turn तुम this 30,000 around. रुपए They में need to find more picks like this. A very deep TP खेलने लग गए starts लॉल, this off, तुम्हें and भी हो it's hard सकता to है respond पीसी गेमिंग for बेटर, T1 और because they तुम्हारा don't have इंटरनेट the भी vision. सस्ता हो The जाए, doctrine denies them so much. खेल This लोगे। is where the wallets come through. क्योंकि घर पे इंटरनेट और पीसी होना इज नॉट अ नेसेसिटी, बट हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन होना इन दिस टाइम इज अ नेसेसिटी, समझ रहे हो? Maybe Faker, you turn it into a Baron. The game might be playable instead. It's a 1 moment of GB respite, but is T1 still $20 have a here, very Wi-Fi tight OP. clutch game. Yeah, Faker actually looking for Chovy here as he gets into the shroud. The rest of T1 now 1 moving GB is up. They're not $20, gonna connect. fuck $20 बहन Back शो। away now. It's Zeus' turn to start a bit of an इधर engagement. तो हर Body दिन slam. का 1 GB मिलता है भाई। Push and pull. Gen.G putting that phalanx back together. All about this Baron right now. इजराइल सबसे सस्ता, फिर इटली, फिर इंडिया। अच्छा Crucially, the dragon is completely exposed. The bot wave has been pushed शिवा by लुकिंग सो T1. comfy, हाँ यार Commits his ultimate to आराम से try बैठ and के force देख रहे, something मजा आ on रहा है मैच Chovy, देखने but में। he holds his nerve, doesn't get dissuaded, still has his ultimate T1 10 available. The kill problem lead. is all of Gen.G was shepherded to बाबा the top this side game of is the over map, Akshat leaving भाई, the mid lane exposed. T1 over, get the objective, and now they can turn to the dragon. over। Going to spot that that's exactly what T1 are intending. We're going to start that one up, but you यार can ये see ऐसी Gen.G प्राइसिंग so मैंने far away एक from this सुनी थी on that ऑस्ट्रेलिया bottom में, जो side of the map, and it's because डब्बों the का map is so सुट्टा के incredibly डब्बों wide and का dark प्राइसिंग that कुछ it's very 3,500 difficult का to कुछ get down डब्बा there as मिलता है उधर Lehens अपेरेंटली, ऐसा has कुछ set तो a सीन है। trap here for anyone who unwittingly moves माम्बा towards कॉलिंग this कहाँ top पे? side. The Drake will just be taken here, evening out that count 2 for 2, but next one going to be very, Any very plans of scary reviving because a drawing करो 4 drink, Tuesday? Hextech Soul sounds unbeatable. यार I don't want to tell you what my plans are because I have noticed every time I do it the plans don't materialize। एक सेकंड रुक जाओ, चलो अक्षत की टीम जा रही है घर पे, तो You got to remember that T1 just took a dragon. They need to get मैं the अभी कुछ resets बोल नहीं रहा। through. Crucially in all of this, while the trap was turned on its बस ये head, बोल रहा हूँ। notice that Chovy has a 2-level lead over Faker. He has been overgrouping and he has been denied डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा, डायरेक्ट मैं कुछ बोलूंगा नहीं अभी, मन करेगा वो करूंगा। एक माम्बा के साथ मैंने वीडियो शूट किया है, नॉर्मल सा गेमिंग टाइप का, चला चला नहीं चला नहीं चला, मैं ज्यादा सोचने नहीं वाला रिजल्ट के बारे में, प्रोक्रेस्टिनेशन मैच दे सीधा बनाऊंगा, रिलीज करूंगा।
स्ट्रीम करने का मन करता है आजकल, मैं सीधा लाइव आता हूँ, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, गो लाइव दबाओ क्या, सीधा लाइव आता हूँ. It's so hard to deny Nocturne Well, Gen.G access to the support pit. And we saw and top is T1 0-11. themselves show that a single Baron steal can be enough to turn a game on its head. And T1 No promises made, no promises. नहीं वैसा नहीं यार, मेरे को किसी ने बोला कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, और ये सच बात है, और ये मेरे को किसी ने बोला तब मैं रियलाइज किया कि फक कितना सच बोल रहे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू, कि मैं कुछ चीज बोलता हूँ, फिर आप लोग उस पर एक रिएक्शन देते हो कि वो वाह, फिर मैं उस चीज को अपने दिमाग में रखता हूँ कि फक ये लोग ने तो ऐसा रिएक्ट किया. फिर मेरे को अचानक बनाने के टाइम सेल्फ डाउट होता है कि भाई ये लोग ने इतना उस चीज को हाइप कर दिया, अगर अब मैं इसको रिलीज करूंगा और इनको पसंद नहीं आया तो क्या, तो मेरा मजाक बनेगा. तो वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है मेरा. तो मैंने डिसाइड किया बताऊंगा नहीं, मैच होता है भाई, जो 10 व्यूज आए तो 10 व्यूज आए, भाड़ में गया वैसा, देख लेंगे, जो मन कर रहा है कर रहा हूँ. फिर टुडे मोबाइल लेजेंड वाचिंग 5 मिलियन फाइनल वन बीजे में मोबाइल लेजेंड छोड़ी है क्या हो गया. Still by the BGMI highlight was more up in the Valorant was the secret. Is the same editor. This is a very good editor by the way. Very good editor. Tiger edit. कैसा कुछ, हाँ टाइगर एडिटर है, मॉड भी है. Anybody is looking for work, बाबा. Anybody looking to give work. Very good. Very good editor. मेरे को इनका काम बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत लोगों को इनका नाम सजेस्ट किया है, तो जिनको रहेगा वो काम करवाएंगे इनसे. To be fair, it also one of the slowest or 4G slower than it is slowest तो yes. Slowest है. Cheapest but slowest भी है, yes. Hey Sid, how are you doing? Any chance you watch IM Navi versus Heroic was one awesome game. I saw a little bit of the finals. I think finals किसका था? Navi Heroic ही था क्या? Finals? लास्ट बार क्यों नहीं खेलता, इतना बढ़िया गेम है. मैं खेल लिया, बिग्स खेल लिया, रोज खेलने वाला गेम नहीं है वो. रेगा खेल लिया, मांबा खेल लिया. एक स्लॉट है लॉकडाउन प्रोटोकॉल. नहीं 5 गेम बचे खत्म करके. जेनजी वर्सेस T1 नहीं छोड़ के जा रहा भाई, मैं पागल हो क्या. T1 have been known to take some liberties as far as advantages are concerned. Oh yeah. And this time around, not necessarily doing so as much. But what it's doing is giving Pays time to get farm, giving Chovy time to get more levels and farm himself. And so maybe when Pays has 3 items, Chovy has 3 items, that could be a time where a fight can be better here for Gen.G. But I still think that T1 have a lot of can you make your reactions in member only rather than private? That's a good idea. Okay, ठीक है. But ये कैसे करते हैं? Member only भी होता है क्या? Can really lose control. I mean, I think that this is a recipe for success मेरे for को पता T1 नहीं था, मैं unless find out कर रहा हूँ. Gen.G एक does something सेकंड. miraculous. Judge मत करो मेरे को. T1 on the Kali as opposed to Faker on a Kali, which actually it's synonymous, right? It's synonymous. It's perfect. And the level 60 now hit, as you pointed out, Vadicova is getting those free items hit. Oh. And it's really weird because होता I है. do feel like T1 was absolutely demolishing. होता है, ठीक है, करूँगा, ठीक है, next time से. ठीक है, ठीक है, ठीक है, okay. Has anything that they can do about that. कितने टाइम का एक मैच होता है? डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है. How many years of you doing YouTube? 3 years. 3 years. इसके पहले YouTube मतलब जब कुछ समझता नहीं था मेरे को. Choose to concede this objective as well. The top wave being pushed in, Gen.G playing the side lanes methodically. They're not over. शिल्पा एक्टिंग नहीं मेरे को. मेरे को पता है कि वीडियो अपलोड कर सकते हैं मेंबर्स ओनली. मेरे को ये नहीं पता था कि तुम स्ट्रीम को भी मेंबर्स ओनली कर सकते हो. शिल्पा, do you think responsible in India not financially responsible? मैं खुद फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. लौड़े लग गए, पैसा ही नहीं है जेब में. दिवाली के लिए मैंने एक कुर्ता लिया अपने लिए 400 रुपए का इंस्टामार्ट से. Especially now that third item does come through here. 4 प्लेयर्स को मैं क्या जज करूँ भाई, मैं खुद नहीं था. in this game right now. And on his Ezreal, we know that Ezreal can do some pretty ridiculous things as the game goes on, thanks to Elk for letting us know. Pays is no stranger to it. This was in fact one of his first mains. Same by us, Him in Challenger is something that Chronicle will not shut up about.
Well, I was going to talk about it actually, but thank you for being That's out on good. me. That helps. That goes with the vibe. Well, smart. I was amazed when you posted broadcast kurta. हाँ, Instamart says 470 rupees. Every now and then. He looks like an imposter. He looks like एक तो मेरे को सुपर चैट वाले भी मेरे पास एक ही है यार, पार्थ भाई है और श्रेय भाई कभी कभी आते हैं सुपर चैट करने। तो बाकी लोग की स्ट्रीम देखता हूँ, भींचो पूरा लाल of the next Drake setup is amazing because Gen.G has only 2 Drakes, so they can Bro, I'm very thankful. happily give that up. Whereas Thank Gen.G 100% is Member only Valo game any I plans? know that in theory you can अरे do मेरे that, को okay, normal you इस get पे so we get Baron, but watching it's है Hextech, member so you only. saw in the previous game how hard the game becomes to play Financially out, stable and हुआ क्या Guma's life आपका? volleys alone Not are yet. gonna be an It will absolute take nuisance 2 if you're months trying more to play, maybe. particularly if you're trying to play When I very will be far forward, very free aggressive, of just my slow. commitments. Makes it so hard. Gen.G Financial still commitments. setting up these traps, but it's so easy for T1 to check. Yeah, Hawkshot is a pretty powerful ability. True Shot Barrage not going to find any joy here as Faker on a flank angle taking control of the mid lane. Like And members you've get got the 5 है. split pushing Oh, Gragas, अच्छा. that nimble large man moving Your in mom the is a bottom sweetest lane. as I remember Trying she to had put gifted pressure all on the Gen.G. TSM I anti don't know if members you guys ever kurta. get this, but I have this Yeah. weird feeling that Chovy's gonna do something really crazy. Like in your waters? आप रूटर पे क्यों नहीं है? यार नहीं आ रही थी मेरे को वॉचिंग रूटर पे, इसलिए नहीं हूँ। तो उस पे इतना टाइम इन्वेस्ट करके ओए 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 इजराइल, ओह नो, बच गया। GENG झाले। GENG झाले। But I think they're just going to move through and win game 3. And all that tension deflates. Gen.G की पार्टी गंजी। T1 not going to GENG घर पे। Canyon tries to flash just to clear the wave. Uy. Yeah, King desperately trying to hold him, but he cannot. And now it's Chovy. Let's go. अरे पीछे जा रहे, अरे खत्म करो ना भाई, क्या पीछे जा रहे हो? हाँ। क्या बेबे? जी। You had last 7 days revenue 29,800 भाई, इतना सस्ता कुर्ता दे भाई। वो रेवेन्यू में से माइनस करो पहले तो 30%। नंबर 1। नंबर 2, ये वाला रेवेन्यू पता है ना अगले महीने 21 तारीख को आएगा। पहले 30,000 जो तुम बोल रहे हो उसमें से 30% हटाओ, हटाओ एक बार, देखो कितना गया। फिर ये समझो कि ये जो रेवेन्यू मैंने कमाया वो आएगा अगले महीने में। वो सीन है। और वो 29,000 में से 25,000 तो एक ही बंदे का है भाई, प्रीत भाई, जो अभी परसों आया है, कल आया शायद। 29 में से 25 तो एक बंदे का है, पार्थ भाई का है। फिर बस ये का एग्जाम दे दो, इजी फाइनेंस आ जाएगा पैसा। हाथ का मैल है बे पैसा। परसों नहीं था, कल बहुत था, आज फिर से नहीं है, कल बहुत से बहुत ज्यादा होगा, परसों फिर से शायद नहीं होगा, बट 150 फिर से होगा। एक टाइम पे बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है अभी मैं मेरे फाइनेंशियल हादसे के बाद मैं अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली अवेयर हो गया हूँ। अभी जो मिस्टेक्स नहीं बोलूंगा, मेरे को जो लाइफ एंजॉय करनी थी मैंने की यार। मैंने इतना पैसा, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इतना पैसा नहीं देखा था अपनी लाइफ, ना कभी सोचा था कि इतना ऐसे ये टाइम पे कमा पाऊंगा। झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा अचानक चालू हो गया। तुम समझ रहे हो कि 1 महीना में मेरे लिए
1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। एक महीना में 1-1.5 कमा रहा हूँ और अचानक अगले महीना ब्रो मेरे को टचवुड उससे बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत नया था ब्रो, समझ रहे हो? तो मेरे को जो मस्ती करनी थी भाई पैसे के साथ मैंने की यार, सच्ची बता रहा हूँ, सब किया मैंने, सब जो करना था किया, जो मेरे को लाइफ में एंजॉय करना था मैंने किया। जूते, घड़ी, गाड़ी, क्लबिंग, पार्टी, कपड़े, सब किया, शौक पूरे किए मैंने। अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर से कमाएंगे, फिर से करेंगे, बट रिग्रेट नहीं करता मैं, कुछ भी रिग्रेट नहीं करता कभी। आप ओपा के जगह ट्रैवल कर लेते, आप शौकीन हो क्या? नहीं यार, ट्रैवल भी शौकीन ही हूँ मैं, बट ओपा में मजा आता था तभी यार। अकाली का Q2 into Q3 onto कैनियन देखा, ऑसम मूव। Q2 into Q3 भाई मेरे को अकाली के स्किल्स ही नहीं मालूम। सेविंग्स 0, इन्वेस्ट कहाँ करना है पैसा? 0। What's your opinion on less brand deals in IGC? It's just the market is slow right now क्योंकि रिसेशन चल रहा है। अगले साल तक ठीक हो जाएगा, अगले साल तक, उसके पहले तो नहीं। रिसेशन चल रहा है मार्केट में, मार्केटिंग बजट्स ही नहीं है लोगों के पास, वो सीन है। आपको मेरी चैट दिख रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो? क्या लिखा है? ये कैसा गेम है? पहले बार देख रहा हूँ। मोबा है, गेम है मोबा। बाय द वे सोल की इंटरनेशनल अनाउंसमेंट का क्या सीन है? अरे मैं थोड़ी करता हूँ अनाउंसमेंट, ओनर्स करेंगी ना ब्रदर, ओनर्स। गवर्नमेंट को एंटर करना चाहिए नहीं आपको, और एजीसी के लिए नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को एंटर, खराब करेगा काम गवर्नमेंट मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट ने बस इतना कर देना चाहिए कि भाई बोल दो कि भाई हाँ ई स्पोर्ट्स इज जेन्युइन, कि ई स्पोर्ट्स इज नॉट गैम्बलिंग, ई स्पोर्ट्स इज नॉट एनीथिंग एल्स, ई स्पोर्ट्स इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, बस, और हट जाओ। गवर्नमेंट इन्वॉल्व होएगा। अबे क्योंकि जो नॉन ई स्पोर्ट्स वाले एंटर करेंगे उनको आइडिया नहीं होगी, कुछ भी करेंगे गवर्नमेंट वाले, और जो ई स्पोर्ट्स वाले एंटर करेंगे, मेरे को नहीं लगता ई स्पोर्ट्स इतना यंग इंडस्ट्री है कि कोई भी ऐसा बंदा है ई स्पोर्ट्स में जो नॉन बायस्ड है। हर बंदा बायस्ड है किसी ना किसी की तरफ। तो गवर्नमेंट एंटर नहीं करना चाहिए, बस बोल दो कि हाँ ई स्पोर्ट्स है, बस। गवर्नमेंट अपना टैक्स इसमें भी लगा देगा साला, इसमें भी फिर लगा दो ब्रो, चलेगा चलेगा। तुम बात समझो, जितना इसको मेन स्ट्रीम बनाएंगे ना उतना अच्छा है। अब तुम मेरे को बताओ कि अगर ये मेन स्ट्रीम हो गया कल उठ के, अगर मेरे को तुम बात बताओ, तुम रिलायंस में काम करते हो, ठीक है, रिलायंस उनको पगार देता है, कुछ पेपर वर्क होता होगा रिलायंस के साथ। अगर ब्रांड्स बढ़ेंगे वगैरह तो छोड़ दो, टैक्स तो अच्छा बात है, मैं बता दूं क्यों। इस चीज को जितना मेन स्ट्रीम करोगे उतना अच्छा। अगर तुमको रिलायंस ने 6 महीना पगार ही नहीं दिया, 7वें महीने में बोल रहे हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार, आ रहा है यार पैसा, आ रहा है, हम दे रहे हैं, बट नहीं दे, तुम लीगल एक्शन ले सकते हो नहीं ले सकते? लीगल एक्शन ले सकते हो नहीं ले सकते? रिलायंस ले सकते हो, तुम बोल सकते हो कि भाई, तो ये सब चीजें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी उसके बराबर से। वो इंप्रूव होगा बहुत उस चीज से कि मेन स्ट्रीम के मतलब जो ऑर्ग्स है, जो प्लेयर्स को अपना पैसा नहीं दे रहे, सैलरीज डिले करते हैं,
वो नहीं कर पाएंगे, प्राइज मनी नहीं देते है ना, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी, बच्चे लोग स्कैम होना बंद हो जाएंगे, जो अच्छे अपने प्लेयर्स हैं वो स्कैम होना बंद हो जाएंगे, मेन अब्यूज होना बंद हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट होना बंद हो जाएंगे, विच इज व्हाई आई वांट कि ये होना चाहिए, ठीक है। अब पब्लिशर नीड्स टू बी, पब्लिशर से तो मैं आई हैव गिवन अप विद द पब्लिशर ब्रो, like one of your most successful rosters of your game after winning so much prize money is not getting answers, is not getting paid, but that org is still allowed to play in your events is just incredible. मतलब If you took the nameplates off, I wouldn't believe you that this was Gen.G. यार मतलब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अगर फॉर एग्जांपल कौन है अभी चैट में, डेकू प्लेस, मेरे को फॉर एग्जांपल डेकू भाई के मेरे को 50 रुपए देने हैं, मैं डेकू भाई को 6 महीने से बोल रहा भाई मेरे पास नहीं है भाई 50 रुपए, भाई नहीं है, मैं नहीं दे सकता तुमको, बट फिर मैं स्टोरी डालता हूँ कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, क्लबिंग करने गया हूँ, तो चुतियापा है ना। या अगर समझो टाइगर भाई है कि मैंने इसको एडिटर हायर किया, टाइगर भाई को मैंने इसको पैसा नहीं दिया 4000 रुपया, उसको बोला अभी तू मेरे लिए काम नहीं करता, और फिर मैंने नया एडिटर हायर कर लिया और मैं उसको पे कर रहा हूँ, और टाइगर को बोल रहा मेरे पास है नहीं भाई तेरे ड्यूज क्लियर करने के लिए, थोड़ा टाइम दे दे, तो चुतियापा है ना, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें रुकेंगी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट डालेगा, तो उससे ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए गवर्नमेंट की, गांड लग जाएगी सीन की। rotating around the map. You could see it in that sequence. They knew exactly where they wanted to go. They moved as a unit. इस समय टाइगर भाई का प्राइस एक्सपोज, and they're showing style here at Worlds too. Faker was like, "Knight, I see you on the Apollo yesterday. I'm gonna do it as well." Like, important call is really there. We'll see again as we यार आज किसी को मिलने जाना है यार, तो बार बार वो मेरे को ना इन्फॉर्म करना पड़ रहा है गेम्स के बीच में कि कितने गेम हुए, बेस्ट ऑफ 5 में कितना क्या है। आया, बी राइट बैक। Is very good at macro, who calls a lot of the moves of Gen.G, generally the one to be out of position. A big discussion that we've had here backstage is, for me, there's a difference between ADCs in terms of Guma and Pays, in that I believe in Guma and in that bot lane, even from behind or from even, not just from ahead. And even though Pays has done things to dispel that in summer, right, Emily? Outside of the finals, I don't know, you know, when he's, and here he had an opportunity, right, if they scale further into that game, but then it's him who gets caught out again, and I don't want to put everything on him because the whole team lost that game, right? But it is these differences that you need to look to make. But I think that's the thing, it's like, pressure makes diamonds, right? And unfortunately, when we look at finals in LCK, Pays didn't step up. And then you look at the game against FlyQuest, it feels like, you know, Hanwha kind of found the issues in Gen.G. FlyQuest managed to crack it, and it feels like T1 are finally breaking those foundations here, where you're not getting the big performers. They're not finding Chovy these lane matchups where he can be super successful and take over in the mid to late game. You're not having your carries perform, and now T1 are saying, no, we're going to go to the style that's worked for us. We take over in the early game. We play through our side lanes well. We get these cheeky Baron sneaks when you're least expecting it. It feels like T1 are still playing to their identity on an international stage, whereas Gen.G feel like they've just lost themselves because those doubts have started to sink in. Yeah, and I want to pull up Gen.G's record over T1 in the LCK and internationals, because I think it makes T1's performance here so much more impressive, right? They are the 4th seed. They are one game against KT away from not making it, and here you see MSI 2023 highlighted. We had already set it up in one of our prior thing, I think it was you, Dagda, that said that, where they got the better of them at an international event at a very crucial moment, and now they're on match point once again, now at Worlds, defending their world title. It all hangs in the balance again for Chovy, you know. I wrote down under Gen.G in my preparation as a logline, if this team can't win Worlds, who can, right? But I feel like in the course of the tournament, we've seen other teams perhaps adapt better. And I think for me, that's what they're going to have to show. In the same vein, though, I'm not ready to write this one off, because we haven't seen a team break the red side
situation yet, right? So T1 would have to do it here. Yeah, I mean, if they can't, then T1 or BLG can. That's for sure. The adaptations are proactively being taken away by T1. Smolder, gone. The draft is already set up where T1 go, we know what you are like. We know Gen.G inside and out. We know what they're going to fall back to, and they're stopping them every step of the way. T1 are in their heads, and I don't know if Gen.G have a comeback here. And all year, we've been talking, or I mean, I know I've been talking about Knight versus Chovy, right? Like, we want to see this matchup. We saw it at MSI finally. This was going to be our destined world final, but in the way stands Faker, and this is a rerun of that Chovy quote where he, again, would know this more than anyone because he's had to deal with it domestically. Now he has to really step up, prove himself against Faker to make it to finals. Chovy has to step up. Gen.G as a whole has to step up, and we have seen it from Gen.G before. Spring this year, Game 4, it was the Kazakhs pick from Canyon that completely changed everything in that series. Gen.G are never counted out until that bell rings, and this is where they have to find that magic once more. Beautifully said. Let's head over to our casters. Thank you so much, Dagger. I think that's such a good point because I want to give everyone some faith that we could be going to a Game 5, right? Like, that's the main thing, and we're already straight into draft as the Callista and the Xayah are still going to be banned away, and I saw that little look on your face there, Chronicler. I'm also not that psyched about it. I want to see a little bit more adaptation. I don't know whether the Xayah is a necessary ban. And given Guma's performance and how comfortable he is on the champion, it makes sense, but I'm a big believer in when you see a champion just consistently be an issue, and in this case, it's the Ashe. Even in the games where Ashe wasn't able to actually get over the line, I feel like the pick has just felt so strong. It gives so much utility while also being a lane bully. Well, now they can first pick it. Now T1 is saying, hey, by the way, do you want to ban Aurora or do you want to ban Ashe? And because Gen.G is going to take one of them, the Aurora comes through, you imagine the Ashe is the first pick. T1 now have the choice around, do they want to grab themselves the Vi? It's proven to be very effective, but also what is their answer into it? Because the truth is, Guma hasn't really shown something like an Ezreal, right? This is not something that he goes to, which we've seen as a typical answer at Worlds. Jhin would be his likely response. Something like the Caitlyn would be his usual. Maybe a Draven could come through. But given the current meta, with all the presence of the lane swaps, I'm not sure how effective they are. And I was going to say that this is something that we've seen come out sparingly this Worlds. This was Gumayusi's best champion for a long time. His Varus steals Barons, steals hearts, it's incredible. As Ona just playing with ours just a little bit there with the hover of the Kindred. We'll see whether he does go back to that one. As he's hovering over quite a few options, the Skarner could be a great pick away, and he is going to lock that one in. Is this a, in case of emergency, pick Canyon Nidalee situation again? We saw it come up against FlyQuest. He's got a smile I'm on his seeing face. a very slight smile on that man's face, and this was the pick that brought Gen.G to Silver Scrapes. He single-handedly, and they're just running it back. They were here last week. Yep, we've got some tape of this one, you know? Let's see what the answer is going to be from T1 though, because of course they know exactly what to expect. I mean, Canyon's Nidalee. What else is there really to say? I mean, you're 100% right. Jax would be a great pick. It looks like that's going to be the lock-in for T1. Double 80 carry comps. Jax loves those. His E gets so much value out of it. He offers so much zone control. But, I mean, Game 4, backs against the wall. The Nidalee comes through. The ban of the Cassante is so crucial for Keen. I think that it's such a safe top lane pick, just in general, but in Keen's hands, it's also a devastating carry threat that you don't want to run the risk of him getting. Now, on the side of Gen.G, they can look to pinch the mid lane pool a little bit more. Maybe they remove the RE for themselves. No, they're actually targeting Carrier. They're really trying to limit the options that this bot lane has. Yeah, playmaking for Carrier, I think, is a great thing to target, especially when Carrier is coming off a win. Because when he has that mojo, when he's feeling it, it can be very scary to go up against this guy when he has confidence, as Braum is going to be taken away from really the hands. Good. And also from Carrier. I actually really like that ban there from T1. What feels most likely here is the R4 on Renata, trying to get a strong 2v2. क्या लगता है? But it does open up a Lance counter pick. What about a... That's something that I don't think they're Nidalee? going to go towards, and they're going to save Whoa. the counter pick, and this shouldn't come as a surprise. Nidalee? But do worry about the Ahri
भाई स्कारनर कितना इम्पोर्टेंट पिक हो गया है यार ये सब मैचेस में. I think that it makes it like this is a very Gen.G-esque comp in the side of T1. Meanwhile, Gen.G, the Poppy, I think offers a decent amount of value here, both into the Ari and into कुछ the ऐसा Jax. नया भयानक कुछ पिक करो ना, मजा आएगा देखने को. ना मजा अभी भी आ रहा है. 8-bit hashtag 1 लास्ट में 2 पॉइंट लीड जीत. क्या बात है, लेट्स गो. They need a Leona or a Rel right now. They need Let's some gauge to go. come through from Gen.G. कुछ ऐसा और भाई कमिंग अप विद $100 लो और कुर्ता लो दिवाली गिफ्ट के लिए अपने लिए आज बातें करके मजा है. नॉट गया है, बहुत दिनों बाद टाइम मिला फुल टीम देखने का. 30 की माँ की तो इस मोबाइल से ऐसी नहीं होती. भाई टीवी तो लैपटॉप को. थैंक यू पास भाई, अप्रिशिएटेड यार, अप्रिशिएटेड ब्रदर, थैंक यू सो मच, जेन्युइनली अप्रिशिएटेड. means a lot. 8-bit hat trick chicken. $100 for 8-bit also. मतलब $100 dedicated to 8-bit. Let's go. एक और बार बता, दो बार क्यों बचता है मेरे स्ट्रीम का हमेशा. Thank you यार पास भाई, genuinely appreciated, thank you. नया कुर्ता, अभी कुर्ता तो अभी क्या लूंगा, लेकिन अभी क्रिसमस ये वाला कभी क्या रुकना. अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर में आएगा. हाँ दिसंबर क्रिसमस शॉपिंग कर लूंगा. थैंक यू यार पार्थ भाई, अप्रिशिएट यार, अप्रिशिएट इट. थैंक यू. कब से पूछ रहा हूँ? कनाडा. हाँ कनाडा से है. When you're playing with Nidalee, you need that lane prior. We've seen Canyon succeed. तो पाइप उठाए क्या? Around the strength and push of his lanes to put pressure on. सांता क्लॉज आउटफिट ले लो इंस्टामार्ट से. It is the way in which old school Damwon thrives. मिलता है शायद इंस्टामार्ट में भाई. इंस्टामार्ट पे पपीज का भी कुर्ता मिलता है. मोगो पे बहुत अच्छी लीड थी, देन 8-bit कम से बड़ा गेम 2 पॉइंट्स लीड है, बस ये लास्ट मैच बचा है. लेट्स गो यार. ये लॉल में हाईएस्ट वॉचिंग आती है बट लाइक्स नहीं आते. 4 लाख पे 30 के लाइक्स. हाँ मतलब देखते हैं यार लोग. अभी लाइक वाइक नॉर्मली देखो, लाइक्स कोई भी स्पोर्ट्स चैनल पे लाइक्स नहीं आते. आपने नोटिस किया है कभी भी? रुको, ई स्पोर्ट्स के चैनल में व्यूज के हिसाब से लाइक्स नहीं आते बाबा. रुको मैं कंफर्म करता हूँ, फिर बाद में बोलोगे चुतिया बना रहा है. 1 सेकंड. क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स पे मैप स्ट्रीम छोड़ो, हिंदी कहाँ है? हिंदी ग्रैंड फाइनल देखो, 6 मिलियन व्यूज पे 200 के लाइक्स ही है. मतलब व्यूज देखो, व्यूज तो लाइक्स इतना कोई करता नहीं नॉर्मली ई स्पोर्ट्स चैनल्स पे. नोबडी इतना रियली गिव्स अ फक. कैसा है देखना है ना, लाइक कोई बोलता नहीं है ना बार बार इस पे लाइक करो सब्सक्राइब करो वैसा. भाई ये मैच Gen.G जीत जाए या T1 जीत जाए, पता नहीं, देखते कौन जीतेगा. आपके और अधिक कंट्रोल क्या हो, लंबा चलेगा ब्रो, लंबा चलेगा. यार पुरानी वाली निडली किसको याद है? क्या थी बे निडली, वन शॉट करती है. ओ एक और है. जस्ट गोना से कैरी वाली रिएक्शन स्ट्रीम के व्यूज आपके उस चैनल के सबसे ज्यादा आए. फर्स्ट टाइम किसी वाईटी वीडियो पे देखा ऐसा. कीप डूइंग द गुड वर्क. मुझे बस देखना था कि कम सीडी पे ऐसी म्यूजिक क्या बजता है. चचिंग बजता है, कैशियर वाला चचिंग. और थोड़े आई थिंक 20 से $40 के ऊपर क्या तो वो ढंकू ढंकू बजते हैं, सेलिब्रेशन बजते हैं. कैरी वाले वीडियो पे तो आने ही थे व्यूज यार, मेरे को पता ही था उस पे व्यूज आएंगे, मेरे को पता ही था. मैंने इसके लिए वो स्ट्रीम हिडन कर दी थी. देयर वाज अ रीजन यार, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी. वो चैनल पे जितना ज्यादा मेरे एडिटर्स कमाते हैं उतना ज्यादा मैं कमाता हूँ, जितना ज्यादा मैं कमाता हूँ उतना ज्यादा वो लोग कमाते हैं. देयर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट गेटिंग 100% फिक्स्ड पेमेंट. तो मैंने इसके लिए वो स्ट्रीम प्राइवेट की थी, और इसके लिए मैं सारे रिएक्शन स्ट्रीम्स अभी से प्राइवेट करूंगा, ताकि जो देख रहे लाइव वो देख रहे हैं. उसके बाद जिसको वो देखना है देख लो मेरे चैनल पे जाके यार. मतलब वो लोग भी पैसा कमाए, अच्छा लगता है यार. बच्चे लोग हैं, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जब बच्चे लोग थोड़ा पैसा कमाए,
है ना, थोड़ा सा उनको एक बूस्ट भी मिले इंडस्ट्री में घुसने का, कि आगे जाके कुछ काम कर पाए, कॉलेज वॉलेज में हेल्प हो जाए, थोड़ी पॉकेट मनी टाइप पैसे मिले, वैसा बस, और कुछ नहीं। 2 फ्लैश बन हो गए बॉट के, रिएक्शन वाज ऑन पर ऑन टाइम। हाँ मतलब मेरे को पता था उस पे व्यूज तो आने। अभी R2H पे करूंगा नेक्स्ट रिएक्शन से, क्योंकि अभी गाली खाई है ये अगर R2H के ऑडियंस से कि मेरे को पता नहीं था करके, तो व्यूज भी खा ही सकते हैं। पहली बार देख भाई पार्थ भाई, वो चैनल पे एक बार पॉपुलर से सॉर्ट करके देखो, आपकी गांड फट जाएगी। वो चैनल पे मेरे को एक टाइम पे क्या व्यूज आते थे एक बार देखो, सीड रिएक्ट्स पे। आई थिंक सबसे पॉपुलर वो है बिंग्स वाली वीडियो, उसमें पॉपुलर से सॉर्ट करके देखो। स्नैक्स वाले पे 1.1 मिलियन व्यूज है। मीम्स आपको याद ही थे उनके वाले। हाँ मतलब मेरे मीम्स, उनके मीम्स तो मैंने ऑब्वियसली सुने हैं, बट उनकी वीडियो नहीं देखी थी मैंने कभी। तो अभी वो देखूंगा स्ट्रीम पर, डायरेक्ट देखूंगा, पहले नहीं देखूंगा कुछ भी अलग से। क्या सीन डाइव हो रहेगा क्या? नहीं डाइव नहीं होगा शायद। हाँ दिख गया। Yeah, Carrier moving on over, was hit by one of the traps there, so information was given as to his whereabouts, and they will just back away. If that back completes, that Change हो गया? is not surviving. So momentum-wise, you क्या feel change like हो गया? everything's going the way of T1. The bot lane 2 versus 2 is winning out on the skirmishes. They got both the flashes in the mid lane. मैं तो कुछ नहीं बजा सकता भाई, पर जिस दिन कमाऊंगा उस दिन पक्का आपको। अरे कोई टेंशन नहीं है यार, कमा के पहले तुम घर वालों को कुछ दो सामान, वो ठीक है, मतलब इट्स ओके। जब एक्स्ट्रा पैसा होगा, मन किया देने का दे देना। जिस दिन कमाओगे सबसे पहले अपने घर वालों को लेके, माँ बाप को लेके दो भाई, बहुत मस्त लगता है। पेरेंट्स को कुछ लेके दोगे ना पहले कमाई से, अलग ही फीलिंग है बे, बहुत मजा आता है। मतलब एक प्राइड वाली फीलिंग आती है एकदम, वो करो पहले। फिर एक्स्ट्रा बच गया कि भाई देखो, यूट्यूबर्स को ऐसे अमाउंट सुपर चैट करो मेरे हिसाब से जो आपको अफेक्ट नहीं करते। कि अगर मैंने इसको दे दिया 5,000 रुपए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा वैसा, नहीं तो मत करो। कमा लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, वो टेंशन नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। Yeah, I like that. Just continuing to walk. It's the continue to walk strategy, one that we haven't seen for quite a while. No jukes abound. पाइक मेरे को बहुत अनोइंग लगता है यार लेन करने के लिए। पाइक के सामने हो नहीं पाती लेनिंग, हो नहीं पाती बिल्कुल भी। अगर लास्ट मैच गया तो LCK में 1 मिल लाइव, लास्ट मैच गया तो फिर तो मजा आएगा, और लास्ट मैच जाना भी चाहिए। ये मैच डिजर्विंग है ब्रो लास्ट मैच जाने के, मतलब लास्ट मैच जाना ही चाहिए। इन शॉट अगर अंधा पैसा है तो सुपर इन शॉट। मैंने एक कोट पढ़ा था कि कोई चीज खरीदने के पहले अगर तुमको सोचना पड़ता है ना कि कैन आई अफोर्ड दिस, तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट। और मेरे को बहुत रियल लगा वो कोट, मेरे को एकदम सेक्सी लगा वो कोट, कि अगर तुमको गाड़ी लेने के पहले सोचना पड़ रहा है 10 बार कि गाड़ी लूं नहीं लूं, मेरे फाइनेंसेस कैसे होंगे, तो इसका मतलब है यार तुम शायद नहीं अफोर्ड कर सकते हो गाड़ी को, अभी रुक जाओ। तो $500 का सुपर चैट करने के पहले अगर तुमको सोचना पड़ रहा है करूँ क्या, फिर क्या करूंगा रेस्ट ऑफ द मंथ, तो मत करो वैसा। T1 लेट्स गो भाई। मैं सेम लाइन बोला, हाँ मतलब मैंने वो रील में देखा, मेरे को बहुत रियल लगी वो लाइन, बहुत मस्त लगी मेरे को लाइन। इट्स लाइक दैट। ओए 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 फेकर फेकर। ऑब्वियसली पार्थ भाई अगर भेज रहे इतना रेगुलरली, और मैंने उनको दूसरे मतलब बिंग्स के भी चैनल पे उस दिन देखा था, तो आई एम श्योर ही कैन अफोर्ड इट। इट शुडंट मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ इज व्हाट आई एम सेइंग। कि राइट नाउ टुडे इफ आई स्पेंड 100 रुपीस और इवन 1000 रुपीस, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू माय लाइफ। जैसे मैं कैब वैब जब भी पकड़ता हूँ, मैं ऑलमोस्ट हमेशा ज्यादा पे करता हूँ, क्योंकि 50-100 रुपए मेरे लिए ऐसा कुछ लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं, उनके लिए हो सकती है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ तो फिर आपको आधी पे ली।
on a champion that he's been synonymous with for a very long time. There's quite a few भाई ये codes, फिफ्थ of गेम नहीं course. जा रहा लग रहा है मेरे को. Ariana, Azir, Rise, like But there's this one has a plenty. special Zed is a pretty good one. लग This one तो does नहीं have a रहा कि ये special फिफ्थ skin. गेम जा रहा है. Also has a special skin, and the win rates for both his LeBlanc लग and तो his नहीं Ari रहा. are about equally ridiculous. So World Skin aren't special anymore? Yeah, I mean they're all special. I was just saying that. Plan the Liars bar with Buzzard Squad. I will again. Special, you have to sort of But it will be once in a while ही होगा Liars Squad. बार-बार नहीं होगा. वो बहनचोद मैंने एक स्क्वाड सोच ली बे Liars bar के लिए. मैं अमन वाइपर जेरेफ. Oh fuck. It's an Crazy. aftershock that ends up picking up the kill as Zeus is pushing on the bottom side of the map. Holy 3 kills shit. for T1. And we talked about the momentum earlier, but it feels like ये तो this 3-1 लग रहा है train मेरे just को. continues to ride in the way of T1's victory. And Lahens अमन वाइपर को उसके लिए सिलेक्ट किया नहीं वो तो अलग चीज के लिए सिलेक्ट किया था. trying to punish Carrier, but we have seen this. I think with a lot of the 1 नवंबर आ रहा है. you learn the lesson क्या होता है 1 नवंबर को? Enemy champion मेरे has को a नहीं पता. dash. Do not just W in. Did it there, gets very, very heavily punished, and now we already have a 1.5K gold lead here for T1, only 8.5 minutes in. Already gold lead है T1 के पास. Watching this series, that Gen.G have been the father of T1 for so long in their domestic history. Gen.G have been the father बोला इसने. T1 is just a different beast. They are the only team in the world where the plot line truly seems to be unbreakable. But once in a while, this I feel like a problem in national streams. जो games audience सबसे ज़्यादा enjoy करती है वो सबसे कम stream करते हैं. I'm not saying every day, but 1-2 in a week at least. Once in a week, yes. Once in a week is once in a week is once in a while only. यार क्योंकि मैं कैसे समझाऊँ वो वाला गेम स्ट्रीमर्स भी बोर हो जाएंगे बार-बार खेल के. और जब स्ट्रीमर्स बोर होंगे ना तब आप लोग भी एंजॉय नहीं करोगे. वो गेम ऐसा है नहीं कि रोज खेल सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल उनो आप लोग को इसलिए मजा आता है खेलने को क्योंकि आप लोग उसको 2 महीने में एक बार खेलते हो. बात समझे मेरी. ऊनो या बिजनेस या मोनोपोली इसलिए मजा आता है क्योंकि तुम फेस्टिव सीजन में फैमिली के साथ जब बैठते हो तब खेलते हो. अगर तुम उसको रोज खेलने लगे तुम बोर हो जाओगे वो गेम से. तुम खुद एंजॉय नहीं करोगे वो गेम को. तो लायर्स बार ऐसा गेम है नहीं जो हम लोग रोज खेल सकते हैं. और वो हम बोर हो जाएंगे और हम बोर हो गए तो तुम भी बोर होने लग गए. इमेजिन करो कल उठ के अगर रहेगा बोर हो गया आरपी से. कि अब उसको आरपी करने में मजा नहीं आ रहा. अभी उसको एक टास्क लग रहा है वो कि जस्ट ऑडियंस चाहती है करके मैं आरपी करूं बट मेरे को मजा नहीं आ रहा. तो तुमको क्या लगता है तुम नहीं एंजॉय करोगे उस चीज को. तुम्हारा भी माइंड फक हो जाएगा क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होगा वो स्ट्रीमर के नॉन इंटरेस्ट से तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट होगा कि अरे ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो हमको भी मजा नहीं आ रहा. वैसा सीन है. मैंने आरपी क्यों छोड़ा क्योंकि एट वन पॉइंट मैं एंजॉय करना बंद कर दिया आरपी को. अब मैं तुम्हारे लिए जबरदस्ती करता कितना ही टाइम खींच लेता उस चीज को. नहीं खींच पाता. बट वीक में एक बार तो आई थिंक होगा. वीक में एक बार तो हम लोग करेंगे. यस. सो एसएडएल फेस्ट एनी अपडेट नॉट हैपनिंग दिस ईयर. देयर इज सम things wrong. See, yes, I'm a Gujarati man raised in Baroda and in Canada. Of course, मतलब if you are in Canada, you are either from Gujarat or Punjab. So like 50-50 था. मतलब वो पूछने का जरूरत ही नहीं था. और पार्थ नाम देख के तो I would have guessed गुजरात only. पंजाब का तो नहीं हो सकता पार्थ. फर्स्ट नवंबर को आपने वो वाला स्ट्रीम बोला था. He's working with Chovy to clear out some vision. Nice spear connects. We're going to be saying that a lot this game, I feel. Yep. We'll see how impactful those spears end up being. कौन सा स्ट्रीम बोला था मैंने? फर्स्ट नवंबर को. Fall away from the rift. We turn back to a neutral game state, and these teams turn their attention towards the remaining plates. 2.5 minutes remaining until those fall off completely. I remember आपने जियो गेसर की एक स्ट्रीम की थी. ऑडियंस एंजॉयड एंड देन वी नेवर सॉ इट अगेन. अरे वैसे तो मैंने बहुत स्ट्रीम की है. मैंने वैसे तो बहुत स्ट्रीम की. याद है मैंने एक बार लाइज ऑफ पी किया था
ऑडियंस एंजॉयड इट देन यू नेवर सॉ इट अगेन। याद है मैंने एक और वो गेम खेला था वो लड़की वाला वो नेवर प्लेड इट अगेन। यार वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है यार, मत जज करे यार। You know, say Owner gets an amazing ultimate and then gets just poppy ulted away, and then, you know, if it's a 3-man ulti, he just that could be kind of funny. Certainly some interactions that could work out there, but it really does change the tide of how this game is going to work. There's also a lot of Listen, all I can tell you is Wukong तो भाई मेरे पीसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ यार। Wukong तो पीसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ, वो तो मैं कुछ नहीं किया। Lies of P I loved it, आपने गलत किया यार। The fact that the Maoka, even with Lahens having a really rough performance so far, in team fights in theory, देखो मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे को भी ज़्यादा मेरे प्लान्स नहीं बताने, बट अगर आप लोग ने नोटिस किया है दोस्तों तो एक बार गिनते हैं, रुको गिनते हैं, ठीक है? अक्टूबर मंथ गिनते हैं, ओके? रुको एक सेकंड, मेरे लाइव स्ट्रीम्स गिनते हैं अक्टूबर मंथ, ठीक है? वीडियोस छोड़ो, वीडियोस हाइलाइट्स वगैरह जाने दो। अक्टूबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Members are resetting. 29 Vision needs to be replenished. Gold needs to be spent. Gen.G gonna push out 30 these 31 waves. We'll give them initial 32 access 32 to the स्ट्रीम्स है मेरे topside अक्टूबर river, में। but it means that they तो haven't had that opportunity to base, spend some gold, and I look at am those items between the two AD improving, carries. No and Blade of the Ruin King I to have get the pays. some plans regarding the things that you are saying in the chat right now, We'll see what and I will direction implement goes it. as, I will, I promise you. But I don't want to tell you what I'm going to implement. I just will not talk about it. But I will. You will see changes. In terms of Soul, आप लोग ने changes देख लिए. In terms of their content and their approach, तो आपको सब चीजों में changes दिखेंगे. Don't worry. But I will not talk about it. I don't want to talk about it. I will just do it. This feels like a Hail Mary here for Gen.G. If they lose can't this start a fight, Baron though, because Gumiushi's on Varus, like we were talking about. You can't do that. We're talking about plot armor. I mean, that's to bridge too far. As now Owner is just trying to bully them out of the area. Rift Baker's Herald actually gone back to base. He does have the Food TP sim. available. He's going to commit it now to the top tower. Might even be able to grab an outer before he makes that flank happen. this is it. She'll be able to lock it in as Keen gets in there before the arrow does come तो down. ये अगर fight ये लोग हारे, But yeah, Keen was already softened up. And you can see Zeus makes his way into the mid lane. They are taking control of the lanes as Gen.G are committing अरे onto this Rift Herald. भाई कितना भाई गांडी भाई भाई मरी गया वो। He's able to dance his way out. Carrier, he's burning, but he should be absolutely fine. Regens that health because he's out of vision. And Chovy कुकिंग वाला वीडियो में आपके पास एकदम से थैंक यू यार। out a turret at the same time. They take the Rift Herald, but at what cost? Way too much. Bring back story mode. यार story mode even I have to enjoy यार, to actually play it in front of you. पता नहीं बहुत गेम्स है जो मेरे को मजा नहीं आता। मैं स्टोरी मोड मतलब बंदा ही नहीं हूँ। सिट भाई तुम जो लॉल की सिम होती तब चैट बहुत अच्छी रहती है। चलो भाई नाइट शिफ्ट करके आए फिर से नाइट शिफ्ट। गुड नाइट पार्थ भाई, गुड नाइट, हैव फन, हैप्पी दिवाली टू यू ब्रदर। एंजॉय कनाडा में, एंजॉय एंजॉय, सी यू टुमारो। भाई ये तो 3-1 लग रहा है, 10-3-1 लग रहा है ना? T1 was a little greedy even trying to contest that because they committed both top and mid to securing those outer towers. They got level 11 and then I thought they were trying to collapse. But of course, getting a pick is still worth it after securing those objectives. T1 अचानक से, हाँ बे T1 का क्या बफ है बे वर्ल्ड्स पे? 4th goal difference is the most crucial thing. सीडेड टीम है ये। Same to you brother, happy Diwali, happy new year, happy new year, happy Diwali. See you soon, best of luck at work. Kill it, make fuckload of money. Trying Mumbai food to SATL ऐसा कुछ करो। मेरे को हर चीज में SATL नहीं करना मेरे को। अबे थोड़ा सा एक इंडिविजुअलिटी भी बनाना है हर चीज में। अगर मेरे को व्यूज SATL के वजह से आएगा तो भाई फिर तो क्या है मतलब, थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंस बनाना है यार। You know,
when T1 tried their hand नहीं at the ऐसा double नहीं AD कि carry into सभी the अकेले jungle. करना है The बट हर presence चीज that Zeus is going to be providing in these fights is going to कल make it उठ के very अगर difficult for नहीं Chovy होंगे and वो लोग Pace to वीडियो play बनाने के लिए तो optimally. क्या फिर मेरे को फिर मैं छोड़ ही दूं क्या मेरे को व्यूज ही नहीं आएंगे फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना Faker going to claim credit for that one on his Ari, now looking for a back angle. Is he going स्नैक्स और जोकर जैसा कुछ मतलब वैसा टाइप का कुछ करना है और वो लोग अच्छा करते हैं वो हिसाब से कि जो करना चाहिए वो लोग साथ में करते हैं जो अकेले करते हैं उसमें भी उनको अच्छे खासे व्यूज आते हैं वैसा कुछ करना है मतलब वैसा कुछ मेरे को करना है फ्री फायर खेलोगे पैसा बहुत लगेगा फ्री फायर भाई 5000 लीड है यार T1 के पास किधर गया भाई वो 6 लेवल का है 0-7 in the last game, 0-4 in this one. Just not able to be where he needs to be, but I want to hone in on T1's performance. क्या कर रहा है Gen.G? Was and if you experienced it, you'll know, but the team that played against KT could not be further away. Faker And I के know पास they do it Legion every है year, but that आरी पे Legion doesn't बनाते take हैं away from the fact that it is such a transformation because it wasn't just the meta, right? It was also the cohesion of the members. बट पाइक के सामने खेलना बहुत अनोइंग है यार लेन में एक अच्छा पाइक तुमको लेन में खेलने ही नहीं देता ब्रो बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट लगता है मेरे को अच्छा पाइक तुमको लेन में खेलने ही नहीं देगा हाँ इट्स बिलीबिली वर्सेस T2 T1 T2 T1 T2 क्या बोल रहे हैं हाँ बिलीबिली लग रहा है आई मीन सॉरी T1 ही लग रहा है ये गेम से तो ना हो पाए कमबैक It's 2 4th seeds from the LCK winning in the last 3 years. That's kind of insane. But that's even a thing we can talk about. You guys need to stop. We are getting a bit ahead of ourselves. We are definitely getting ahead of ourselves. T1 fans are definitely getting nervous. I apologize. आज मोबाइल स्पोर्ट फाइनल में 9 के अप्रोक्स लाइव वाचिंग आ रही थी मोबाइल कब आएगा The reality is that the मोबाइल कब आएगा मतलब is already in and of itself ridiculous considering the path that they took to get here, which is why their performance right now should be reveled given how well they've been able to level up. Now, as you rightly said, 5-0 is the score, the lead that they have, 5k is the gold lead, Baron spawns in 50 seconds, Dragon in a minute 50, Gen.G still have elements, they still have tools to turn the game around, spawns in 50 seconds, 7-0 is the score, the lead that they have, 5k is the gold lead, Baron spawns in 50 seconds, Dragon in a minute 50. वार्ड पे भी पॉप होता है क्या वो मेरे को पता नहीं है Elements, they still have tools to turn the game around. It all comes down क्या to ये whether or एज not ऑफ they नाइट can नाम है punish ना इसका T1 नहीं for their mistakes, and if they can find a good angle to turn these fights in their क्या favor. नाम है इसका मैं भूल गया Gen.G have been pushed many times this year. TES brought them to 5 games at MSI after a 2-0 lead. They were able to persevere. Oh, Faker looking for the charm, doesn't get it. On to Canyon there, but gets the true damage on that Orbit Deception. As Lahan's allowed to drive once again. I don't know about it as he gets pulled back immediately, but he's able to absorb a lot of it still. डैमेज ही नहीं है बे Gen.G के पास डैमेज ही नहीं है डैमेज कौन दे रहा है डैमेज कहाँ है Gen.G, I mean, it was dangerous, but they get out of there after the charge, just not earning that much. A very tense back and forth as T1 is able to protect their mid-tier 1. Gen.G, the idea was pretty promising there. अरे हाँ वो लैग होता है थोड़ा See my question था by any chance if Free Fire India launches do you think yeah there will be a STL lineup यार I have said this multiple times We'll see if it's going to be a fair bit of damage onto this one. Spirit's going to be coming out perfectly. There's a twisted advantage. Tom goes wide, Faker's dead. That's going to be the hero. He catches Canyon with the counter-strike stun, and he's under the wrong turret. oh no एक के लिए बहुत मर गए भाई But this is what he does. He baits them into death. खत्म लग रहा है इसके लिए यार लैग होता है यार रुको T1 Fena seen this one before. You think you catch Faker in the side lane, and Gen.G they know they can't contest this Baron. They're just TPing to mid to try and get something in return. Gen.G just wanted the tower. Faker TP's in. They sit there and say to themselves, this should be an easy pick. His ulti wasn't off cooldown, but the collapse was crucial. Gen.G, I don't think you can do this Dragon. ड्रैगन तो नहीं मिलेगा तुम लोग को भाइयों But the collapse is coming through. Faker's back out onto the map. Zeus as well. All right. Gen.G do manage to make their way back out. Chalo. Also trying to get back, but man, this is only the start of the devastation. We've got 2.5 minutes of T1 with Baron. They're going to start by trying to take down this Dragon with the resets coming through from Gen.G. There's not going to be an opportunity
Gumayusi coming on over will start to make short work of it. 2 items for this lethality Varus. T1 really just have Gen.G exactly where they want them. This is such a change from what we saw. शिवा रिएक्ट चैनल के लिए कैसे काम कर सकते हैं? अभी है मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ ब्रो आदित्य भाई. कल अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो जरूर I'll get in touch. But अभी फिलहाल I have people and I have very good people working for the channel, so I don't want to change anything right now. Gen.G with opportunities to try and create शिवा miracles. बेट्यू जी के साथ कोई प्लान है दिवाली पे? They want to make their way back into this one. Only a 4,000 gold lead. Still looking pretty rough. I mean, worlds aside, the fact that T1 is even getting revenge for a rivalry that has been so Gen.G favored domestically in and of itself is impressive. As we look back at the dive, the idea, I mean, it makes so much sense from Gen.G. Dive onto Faker. He's an easy pick. Even if the TP comes through, we can turn it. But they don't expect Ona to collapse this quickly as well. Beautiful flash from Zeus to get that stun for Canyon. He leaves the tower to finish off the kill. And they convert it onto क्या फटाफट आई है बे? Canyon actually, I think, got aggro because of the Leandries. So because he hit the perfect spear to set up the थोड़े थंबनेल्स लैकलस्टर लग रहे हैं इसलिए पूछा. नहीं ठीक है, मेरे को पता है उसके थंबनेल्स एकदम प्रोफेशनल टाइप के नहीं है, बट वो लोग नए लोग हैं, पूरा चैनल खुद से चला रहे हैं और उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती, वो उनको एक परसेंटेज मिलता है चैनल के रेवेन्यू का. तो मैं किसी को वो चैनल के लिए हायर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, और अभी एट दिस पॉइंट में और ये भी नहीं दे सकता और रेवेन्यू भी नहीं दे सकता. वो मर गया, मिल गया 1 किल. अरे उई पॉपी बेंचो. अरे अरे डिसेंट फाइट था बे ये तो. Actually diving in there, denied the ultimate from Carrier. Otherwise Carrier maybe could have gotten the resets, but because Keen jumped to his death, no resets for Carrier. He ends up getting focus going down. Fuck. It's not enough, but think back to that previous game where Gen.G held on tenuous. वैसे झंडू नहीं अभी काम करता. झंडू पढ़ाई कर रहा है वापस. Shown tendencies at this World Championship to overforce. They throw the ultimate out. A beautiful response from very Keen decent fight to यार create a numbers G2 के लिए. advantage. They have the confidence then to turn Keen it में back जो as they get अंदर a kill onto क्या Zeus. गया And है. you'll see here this play. Nicely done from Keen to avoid the reset from Carrier. Turn it back as they get a kill onto Keen. Spike के साथ क्या किया पॉपी ने? एक सेकंड देखने दो. Then to turn it back as they get a kill onto Zeus. And you'll see here this play. Nicely done from Keen to avoid the resets from Carrier. He knows how dangerous that could have been. And sighs of relief as Gen.G stay fighting. अरे क्या? अरे इसकी भी He's stressed at this point in time. I'm sure he'll be back as this game does go on, but there was a little bit of a grin on Mata's face. Coach Kim as well, not looking all doom and gloom. They are still in this. We'll see. T1, Baron has worn off. 2.5 minutes until that one's back up once again. Still a 4,000 gold lead, 5,000, something like that. Not in the world, but 2 items now onto Chovy. 2.5 on Pays. 1-0-1 now, actually picking up a lot of that money in the last fight. Could be huge here for Gen.G. That got done here for Faker. He's pretty strong. He is very strong. I would argue also just now the transformation for Guma. So T1 do have an opportunity. If one wants to join us, it'll have can they can't. If you have to ask the question, you can't. Difference maker for Gen.G means that they probably should be able to get it to free. Initial the ghost of Akira Nike shoes Issues देखता don't stop there though because Zeus on this Jax in a wonderful position is रुको building. एक सेकंड पॉज करना पड़ेगा क्योंकि 2x के बाद हमेशा लैग होता है वो. allowing him to play very far into the back line. The problem I see for Gen.G is this poke is a problem. And Keen, I think he's going to be fine. Extremely tanky. Yeah, but the poke is a problem, and not only is it a problem, like, they don't have the best engaged tools. T1 have a lot of ways to just run away from a fight. Ola. What? I don't think T1 need to be forcing this hard. Like, Cleanse मारा क्या वेरस ने? भाई अच्छा खासा दे रहा है बे. एक रेड बुल अलग फ्लेवर का. बोरिंग हो रहा था, हल्का सा इंटरेस्टिंग कर दिया T1 ने. भाई Gen.G ने इंटरेस्टिंग कर दिया है. Gen.G अच्छा फाइट्स ले रहा है अभी. Is there any chance I get in touch with the team? I want to learn how things work. Don't want any payments. Aditya bhai, the thing is, the team that is working for my CDX channel right now are themselves learning. They are very young. So I cannot. You want to get in touch with them? You can get in touch with Monali ji. She'll get you in touch with the boys. But वो खुद चीजें learn कर रहे हैं. बहुत हकते हैं.
बट सीखते हैं और चीजों को फिक्स करते हैं. एक का नाम स्नूप है, दूसरे का नाम टायरोन है. टायरोन आई थिंक एक कोई शाशु इधर फ्रिज में एक रेड बुल है, मैं क्या प्ले ऑन देना प्लीज. तो वो खुद भी सीख रहे, तो मैं आपको उनसे कैसे सीखने के लिए करूँ, मतलब समझ रहे हो, खुद भी बेचारे सीख रहे. And it looks like they are not giving over soul point for free. Well, Carrier is going to walk into Lehens here. Hike so incredibly squishy. There's the teleport. भाई भगवान करे Gen.G जीत जाए 5. प्लीज Gen.G, प्लीज. Gen.G, please. But he's going to throw his life away for a good position in a team fight. Carrier on a flank angle. It is going to be Ona taking soul point. But can they win the fight? That's a phenomenal ultimate from Keen. And Pays is untouched. Oh my god! What was this Korea? Holy fuck! भाई ये फाइनल्स है बे, मैं बोल रहा था ये फाइनल्स है. Oh fuck! Gen.G say we will not go down without a fight. You might kill Lehens 5 times without getting punished, but that's 6-1. He's got you right where he wants you. As the Baron Holy greatest throw ever. See, this is where I think sometimes the audience is a little wrong. I feel like why are you not saying that Gen.G played this fucking well? Why do you have to say SKD threw here? I don't think SKD ने कुछ ऐसा hard throw किया है यहाँ पे. Gen.G is just playing better than SKD right now. SKD played better than Gen.G for the first 10-15 minutes. और अभी Gen.G is playing fight. देखो बहनचोद क्या निकाला है Gen.G ने. तो fuck. A reset doesn't come through. Faker, he's only got, well, he does get 2 charges off. He tries to collapse on a Chovy to get the reset, but then a nice flash away from Chovy. It was simply a matter of मेरे को तो 5वां गेम देखने मिल रहा है, मेरे को उसी में इंटरेस्ट है भाई, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. कोई भी जीते. कौन सा फ्लेवर है? कोकोनट ब्लूबेरी फ्लेवर. रेड बुल. एक्चुअली यार स्टीवन थ्रू दैट फाइट वाज वेरी स्प्लिट. टाइम आउट दे रहा हूं अक्षत को 5 मिनट का 10 सेकंड का. इनका लोड़ा अग्री करना मेरा ना, हाँ अग्री करना मेरे साथ. मैं कुछ बोल रहा हूँ तो. But all that matters right now is that Canyon's level 16. That's a 3-item Nidalee, ladies and gentlemen. And now it's भाई मैंने गलती से हाइड कर दिया क्या इसको 1 सेकंड. The poke from them. We talked about Gumayushi's poke. ये मैंने गलती से हाइड कर दिया. Turn to get a bit of revenge. हो गया नाइट हो गया. मॉड्स मत करो यार, मत करो अक्षत. क्या यार दोस्ती है वो मेरा. Maybe it was just a game delayed. You were right. Just a मत little करो bit बे. early. Gen.G haven't done it yet though, because all this has done is equalize the game, right? अक्षय भाई वो शायद वो मॉड ने वो कुछ नाइट बॉट ने कुछ. अक्षय भाई एक बार टाइप करके देखो जरा. All right, Boneskewer going to connect, but the spear does too. That is a decent impale, only onto one there as Lehens able to eat some turret shots, and he'll be okay. Man, that primal surge almost gave him his whole health bar back. And the siege will continue here as Chovy getting more. अरे अक्षत भाई लिखो कुछ भाई, हाइड ही हो गया क्या ये बंदा? One after the other. Faker, he wants out. He's going to kill that siege minion, and they will back away. Carrier. अरे अक्षत कुछ लिख ले यार, मैं तो ऐसे जोकिंग्स कर रहा था यार. अप्रूव्ड यूजर में अलग से डाल के देखो क्या इसको. T1's base is beginning to fall apart. They still have some towers remaining, but as you rightly said, Chronicle, return to an even state, and the Dragon Soul is on the horizon. Big thing here for T1, they didn't lose any inhibitors. So this brought Gen.G back in the game, but T1 still will get the opportunity to get a straight up 5v5 for this Dragon. And they can even afford to give it up. I don't think they will, given how this series has played out. आ गया अक्षत का मैसेज आ गया. Until it's available. ठीक है. As an elixir of iron, thank you for pointing it out, Vedi. Gen.G is coming back, baby. PP कितना है सीट भाई? आदित्य भाई, you know that is the best part about League of Legends. Worlds है, इतना hype है, मैचेस इतने सेक्सी चल रहे हैं, स्टेज का साइज देखो कुछ भी. एक भी बार आपने देखा है ये लोग ने अपना प्राइस पूल अनाउंस किया है? किसी ने बोला है कि फर्स्ट वाला इतना जीतने वाला है? क्योंकि ब्रो वो प्राइस पूल मैटर ही नहीं करता. लीग का ई स्पोर्ट सीन इतना आगे चला गया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कि इसका प्राइस मनी
is irrelevant. And there is a number of glaive here for Carrier. They have ways Irrelevant, to मतलब vision in this game. कभी भी वो लोग मार्केट नहीं करते उस चीज को और इतना बड़ा प्राइस नहीं कभी भी मतलब नहीं दिखेगा आपको लिक्विडिया पे जाओगे तो दिखेगा बट मार्केट नहीं करते देखो कभी हाँ मतलब ज्यादा नहीं होगा 1-2 मिलियन प्राइस पूल होगा पूरा वही 2.25 बोल रहा है ना कोई तो ज्यादा मतलब ऐसा प्राइस पूल उतना ही होगा बट ये लोग नहीं मार्केट करते इररिलेवेंट होता है प्राइस मनी अब औकात की बात है पीपी की नहीं अरे मतलब आईपीएल में भी देखो ना कभी वो लोग पीपी की बात थोड़ी करते हैं आईपीएल विनर इज आईपीएल विनर वो लोग थोड़ी बोलते हैं विनिंग टीम को मतलब मार्केट नहीं होती वो चीज कि विनिंग टीम को 50 करोड़ मिलेगा नहीं वो इररिलेवेंट अमाउंट है क्योंकि वो ओए भाई साहब जेन.G ओह माय गॉड गेम नंबर Gen.G trying to get the fight, but the Death Divers are too long. Oh, it's only Canyon versus the world here as T1 are taking down their first inhibitor of the game. They are not done yet. Nexus turrets stand between them and another final. He goes golden. He's holding onto the wave. He wants to take it down. He does. But another one is Conga lining in. Lahens, he knows he just has to move it away from these Nexus turrets. And he is able to stall it out. Another teleport. Baker does come back. And they'll now get their time. It is Guma that's able to melt these turrets. And Gen.G for the last 2 years have been the kings of Korea. But we know the world is T1's home ground. What an incredible final game! At the brink of a comeback, Gen.G's final fight is shut down. And in such poetic fashion, they catch Faker. He was the first to fall, but then the rest of T1 rose to the occasion and turned the fight around. दिखाता हूँ ये गेम देख ठीक है रुक आओ दिखाता हूँ तेरे हाँ मैं तेरे को गेम दिखाता हूँ यहाँ पे T1 तोड़ रही थी ये देख T1 Gen.G को तोड़ रही थी उसके बाद अचानक Gen.G जीतने लग गई Gen.G ने पूरा इक्वलाइज कर दिया गेम को ये देख Gen.G आगे चली गई अभी लास्ट फाइट देख हाँ लास्ट फाइट देख Gen.G ने एंगेज किया फेकर डेड डेड तो इधर में चिल्ला गेम फाइट खत्म नहीं BLG बिलबिली बिलबिली रो व्हाट अ गेम The reigning world champion will return to defend their title. भाई ये लोग फिर से फाइनल पहुंच गए यार क्या है बे Unfortunately, Gen.G's exit later, but I do want to first take a look at something that was crucial. He's on screen right now. कोमा अभी भी है ये लोग के साथ एक सेकंड वो बैंचूत ये कोमा को निकाल लिया था ना वो लोग ने क्या बात कर रहे हो You were talking about you need a difference maker in a moment like this, and how many times has Carrier been that? And that's the thing, you thought it might have been Canyon on the Nidalee, but it was this hype pick, constantly catching out Gen.G, playing spectacularly in the early stages. कोमा वापस आया क्या? And I'm shocked he had this performance, because I looked at that man as he stood up from his seat, shaking. भाई क्या गेम निकाला है कहाँ निकाला था ब्रो 100% कोमा सेपरेट हुआ था 100% में बैट लगा सकता हूँ कोई फॉलो कर रहा है वो टाइम से तो बताओ यार कंफर्म करो कोमा सेपरेट हुआ था ये लोग से 100% Sit by the roster has been same for 3 years
अरे but I'm telling you he had left or he was removed. अरे कोमा separate हुआ है bro. Such an emotional moment for these guys. They've been through so much. मैं बता रहा हूँ नहीं था बीच में SKT के साथ. He had left in between. Yeah, I'm telling you he left. नहीं था वो बीच में SKT के साथ. You could just see the entire coaching staff coming out, all of the emotion behind. देखो बीच में गया था वीची 2019 में वीची डामॉन DWG फिर वापस आया 20 अभी तो वापस आया लास्ट ईयर ही वापस आया नवंबर 23 में वापस आया घूमा है अरे भाई मेरा इतना नॉलेज टेस्ट मत करो कोमा लास्ट ईयर ही वापस आया मैं बोल रहा हूँ वो बीच में नहीं था कोमा नहीं था टीम के साथ कोमा लेजेंडरी है भाई बट वो न्यूज़ मेरे को याद है जब मैंने पढ़ी थी कि कोमा इज नाउ सेपरेटेड कि नहीं है अच्छा ठीक है चलो इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो बट मेरे को याद है कि कोमा नहीं था बीच में You don't even make it to finals. Everyone is thinking this is the year T1 fumble, and we've got to look at a team like Gen.G to step up and take the mantle. A team like Hanwha who were coming fresh off the heels of a first place in the LCK. But no matter what, it feels like once you get to internationals, it is T1 cool. I think finals represent the LCK and always be the team you have to take. अगर फेकर जीता नहीं जीतना ही चाहिए मैं तो ऐसा मैं कुछ इसका डाउट नहीं कर रहा जीत भी सकता है फाइनल्स भी करना मैंने बोल दिया था तीनों गेम करूंगा मैं सेमीज और फाइनल्स तीनों गेम करूंगा फाइनल्स भी आगे मजा आया बे बट मैचेस अच्छे थे बे मजा आया मेरे को थे मैचेस तो थे मजा तो आया मेरे को कूल गुड नाइट्स बेबीज बेबीज क्यों बोला मैंने बेबीज बोला कुछ गलत नहीं था गुड नाइट ब्रदर्स I will see you tomorrow. I'm not in for the group games because I have to go out Diwali. I have to go because it's Diwali and I have to go out with my pataka. So I will see you tomorrow. Yeah, tomorrow I will see you. Good night, brothers. Take care. Just wondering YouTube पे फिर आपके से कमा लिए. हाँ अभी क्या ही कर सकते हैं ठीक है. Good night. Take care.